So today we will be talking about applications of remote sensing and GIS for disaster management. Now for this presentation, I have divided into 4 parts. First, introductory remote sensing, then introductory GIS, then introductory disaster management, and then the applications of remote sensing and GIS in disaster management. How remote sensing and GIS is useful in disaster management. So first, coming to introductory remote sensing. So first we'll define what is remote sensing. So remote sensing is a science and art of acquiring information about material objects, area or phenomena without coming into physical contact with the object or area or phenomena under investigation. In remote sensing, information transfer is accomplished by use of electromagnetic radiation. Now see, remote sensing means when you want to acquire some information about any object without coming into physical contact with it. Right now you are seeing me, that is also a sort of remote sensing. Okay. Similarly, we use satellites, cameras for obtaining information about Earth, about its various phenomena. So this is known as remote sensing. Without coming in direct contact with the object, we are trying to study it. Now to achieve this information, the EMR, that is electromagnetic radiation, of which sunlight is also a part of it, so that is used for acquiring the information. Now these are the 6 stages of remote sensing. So starting from here, this is the source of energy, sun. From here the EMR comes. So it interacts with the atmosphere first, then it reaches the objects, like these are the buildings, road, soil, grass. So it will trees, it will interact with it, and that energy would be reflected back. Now this reflected energy, you know, we can see objects only when energy is reflected back from them. Okay. Similarly, we can have the remote sensing only when this energy is reflected back to it. Now this energy is reflected back and it is captured by the satellites or some sensors, and this energy, when it is captured by it, then it is directly sent to the service station, or it is sent to some other satellite through which it is sent to the service station. Then this service station, it sends this to a processing unit or the department which is processing it. Now that department, it will process the information, convert it into JPG format or any other format, and then it will be available for the common public or for scientists or for scholars for analysis. Now these are the 6 stages of remote sensing, and these have been stated as emission of electromagnetic radiation from sun or from some other source, then transmission of energy from the surface to the source, to the surface of the earth, as well as absorption and scattering. Now all of you know that when the sunlight, it comes through the atmosphere,
there are many phenomena which take place. Like some energy is absorbed, some is reflected, some is scattered, and due to scattering, scattering is also various types. Some colors are more scattered, some are less scattered. Like you see the color of sky orange at dawn, that is also because of scattering. Then you see the color of sky as blue, that is also because of scattering. So all these phenomena take place when the energy it comes from the sun to the earth. Then there is interaction of this energy with the earth surface, and whether it is reflected or it is emitted. Then transmission of energy from the surface to the remote sensor. Again, this energy, when it goes back, it has to again pass to the same. It will be, some of it will be absorbed, some will be scattered. Okay. Now, then that sensor, it captures it, and then it is sent to the other process. Then this data transmission is processed and analyzed. Now, these are the 6 stages of remote sensing. This is how, in nutshell, this is what is remote sensing. Now, there are 2 types of sensors. So, we were talking about sensors. There are 2 types of sensors. One are active sensor which have their own source of energy. Okay, like this you can see. They have their own source of energy. The simple example which we can take is the camera which has a flash with it. So, that is, it has its own source. If there is a flash, you can take the photographs even in night. Otherwise, if there is no flash, then it would be difficult for you to take the photographs in the night. Then another is passive sensor. Passive sensor which uses the energy produced by some other thing. Okay, like in this case, we are using the energy by sun. So it is passive energy. It is not having its own energy. It is using the reflected energy which is coming from some other source. Now these sensors, they collect and store data about the reflected energy from the natural objects and features, and this reflected energy is known as spectral reflectance. Now this is a specific term which is used for this reflected energy, and this spectral reflectance can be quantified on an electromagnetic spectrum. Now 3 types of things I have told you earlier happen in case of the energy which is coming from it. So this is the incident energy. Either it would be reflected back, or it would be transmitted, or it would be absorbed. Now in case of remote sensing, we are more concerned about this reflected energy. These 2 energies, transmitted or absorbed, they are of no use to the remote to the field of remote sensing. Okay, since this energy will not reach back to the sensor, therefore it is of no use. Only that energy which is reflected back, that will reach the sensor, and this energy will be captured for producing the information. Now, there are various platforms through which this energy is being collected. Number 1 is ground observation. Ground observation means you have the, like if you can see on this also, a truck with a ladder on it. You can use this as ground observation because you are not leaving the ground. So this is one type of platform. Another is low altitude data. Low altitude means when you are flying the aircrafts which do not go much above in altitude. Then high altitude data. And then last is satellite data. Now the height of the platforms, they varies from 1 meter to 3600 kilometers. Okay. So these platforms, they are placed from 1 meter to 36,000 kilometers. Now depending upon the use and the application, we take the platform which is most suitable for that kind of study. Now there are 3 types of platforms: ground-based platforms, airborne platforms, and spaceborne platforms. Now the ground-based remote sensing systems for Earth resource studies are mainly used for collecting the ground truth or for laboratory simulation studies. Ground-based means that you have collected some aerial photographs, okay, or satellite imagery. Now you want to see whether that phenomena which is there, is it there on the ground or it is not, or there is some technical difficulty which has been captured by the satellite. So for doing the ground truthing or for field verification, we use the ground-based platforms. Then next are airborne platforms. Aircrafts are generally used to acquire aerial photographs for photo interpretation and photogrammetry purposes. Then third are spaceborne platforms. Now these platforms are freely moving in their orbits around the Earth, and entire Earth or any part of the Earth can be covered at specified intervals. The coverage mainly depends on the orbit of the
satellite. Now you can see here also there are two types of satellites. One are polar orbiting and another are geostationary satellites. Now the polar orbiting satellites, these are quite near to the Earth and their orbit is from pole to pole. They move from North Pole to South Pole and then again this is their altitude. Now the geostationary satellites, they are placed at a distance of about 36,000 kilometers from the equator. Now these geostationary satellites, they are also moving satellites, but they appear to be stationary. How? They are fixed on one portion of the Earth. Okay, they move with the speed of the Earth. And your polar satellites, they are used for remote sensing, whereas your geostationary satellites, they are used for meteorological purposes and telecommunication. Now these are some of the remote sensing satellites which have been sent by India, and these are named as Indian remote sensing satellites. Now starting from the latest one to the first in this case, from the last to first. So the latest is Saral. This was launched somewhere in last year. Then Reset-1 and Megatropics. All these three satellites, they were launched on same platform. Okay. Then we have ResourceSat, Cartosat, OceanSat, VSat. All these are main satellites of the Indian remote sensing satellites, and their quality is as good as any other satellite product from any part of the world. Now these are some of the remote sensing satellites of other countries like Landsat. Landsat is the first satellite which was used for remote sensing. So Landsat, Landsat 2, then GOES, Meteosat, Landsat 3. Then there are various other like Spot, then Iconos, QuickBird. All these are satellites which are used for remote sensing. Now this is a satellite imagery of Chandigarh. You can see the distinct feature. This is a Sukna Lake. Now these are the sectors. If you can see clearly, these are the sectors within this. So this is the imagery of Chandigarh. This is taken by an Indian remote sensing satellite, and the name of the sensor is LIS-3. Now we come to what is GIS. Now GIS is a geographic information system. It is a computer-based system including software, hardware, people and geographic information. A GIS can create, edit, query, analyze and display map information on the computer. Now this is a formal definition of GIS. A system for capturing, storing, checking, integrating, manipulating, analyzing and displaying data which are spatially referenced to the Earth. This is normally considered to involve a spatially referenced computer database and appropriate applications software. Now here we are talking about a system for capturing data capture. Now in case of GIS we are talking about spatial data capture. Spatial means the data which is concerned with space. Okay. Now in GIS also there are two types of data. All of you know about attribute data which can be put into the computer. It can be put either in the Word format or in the Excel format. So attribute data and spatial data. Now for spatial data, for capturing means when you have to put the data into the system. Now this can be done by various techniques. One is digitization and another is by scanning. Then storing, you have to store the captured data, you have to store. Then check it, whether this data which you have captured, is it true or not? Is it showing the same characteristics what it was showing earlier or it has changed? Then integrating means it can integrate various types of data. Manipulating, you can manipulate that data. Analyzing and displaying data which are spatially referenced to the Earth. Spatially referenced. Now important here is spatially referenced. What is spatially referenced? Spatially referenced means your Earth, it has been divided into various latitudes and longitudes. Okay. Now when you take your map and you project it onto this projection system, some projection system of latitude and longitude, that is known as spatially referenced. When you have referenced that data according to the Earth. So that is known as spatial referencing. Now what is so unique about GIS? First thing, it handles spatial data, information which is referenced by its own location in space. So you might have seen various maps.
on maps you might have seen there are some latitude and longitude given on the side. Now that latitude and longitude means that this map is, whatever it is portraying, it is showing a part of the earth from this latitude to this latitude, from this longitude to this longitude. Similarly, in GIS also, we give this reference system to the map. Then GIS makes connections between activities based on spatial proximity. Now he is Dr. Roger Tomlinson. He is considered the father of GIS. He is known as a visionary geographer who conceived and developed GIS for use by the Canada Land Inventory. Now the first GIS which was used in the world, that was the Canadian Land Use, Canadian GIS. Okay, it was used for inventorying of land. All of you know that majority of the Canada, it has wilderness or wild areas under it. So at that time, it is about 1960s, when the Canadian government, they thought that how much area do we have? We want to make a list. What type of resources are there? So they developed a system and they hired Roger Tomlinson for making a system through which they can keep a track on the land resources of Canada. So this is the first Canadian system which was developed. First GIS which was developed. Now GIS is not a single discipline. It is what do you call? It is a combination of various subjects or disciplines. Like you have digital mapping in it, photogrammetry, then surveying, remote sensing, databases, computer aided design. When all these combine, they make your GIS. Now modeling the real world. This is the real world. How do we model it in GIS? This is how you convert it into a map. When you have to make a map, you convert this information into this. Now you will see that while making a map, we use only three things: point, lines, and polygons, or area. Polygon is used in GIS. So point, line, and area. With these three things, you can portray anything of the world onto the map. But in GIS, these things, this modeling is done by two methods. So one is, this is vector method, vectorization. In vectorization, what you do? You make the point, lines, and polygons. Okay. So these X marks which have come now, they show the X coordinates and Y coordinates on your reference system. Then this is rasterization. In rasterization, what we do? All your digital data that is in raster format. Okay. The smallest thing in a digital data is a pixel. In a photograph also, which you take through your cameras or mobile phones, you will see, if you zoom it many times, you will see smaller pixels thing like this. So in raster, the information is stored in individual pixels. Now these pixels, they are also referenced to X and Y coordinates. Now this is how the vector data is stored, and this is how the raster data is stored in the computer. Okay. So this is how it is displayed. So the above is vectorization and the below is rasterization. Now this is how the vector data it will be represented. You will see clear cut boundaries here. In vector, we use vector to show clear cut boundaries. Like these are land use parcels. These are houses. Now this is a playground. Now this is a lake which is in the playground. Now these are your commercial areas. Okay. Now all these different colors, they are denoting different things. So this is how a vector diagram will show the real earth. Now we come to raster. In raster, you won't see any boundaries because it is just a representation of the earth. It is just the photograph. You can, in other words, it is just a photograph. Okay. You won't see any boundaries here. Vector is used for showing discrete objects which have well-defined boundaries. Raster, when no boundaries are required. Now see, this is another method of showing the data in GIS. This is your original landscape. This is how it will be represented in vector, and this is how it will be represented in raster. Now both these techniques, they are quite useful. It is not that
Vector, if you see raster, it is not very beautiful to look. It doesn't have any aesthetic sense. But these maps, they are quite clear. But they have their own applications. Both of these have their own applications. Vector we use when we have to show the discrete objects. Then when you have to use various functions in GIS, like neighborhood analysis, proximity analysis, then we use raster data, not the vector data. Now this is another type of representation of the data into various formats. Now see, all this is, you see on the bottom, this is the real world. Then this information is stored in various layers. It is not stored as one thing. You will see this is showing your land usage. The first one is showing land usage. Another is showing elevation. Next it is showing parcels. Next it is showing streets, and at last stage it is showing customers. Now all this information is stored in various layers. And while we do vectorization, we store the information in various layers, not in the single layer. Okay. Now in some cases we only need a single layer. Like we want to know the streets where the land parcels are bigger in size, then we will need only these two layers. Okay, with the help of query we can identify those areas. So we will be using only two layers. The rest of these layers will not be used. Similarly, you see all these are stored in various layers. Now we come to introductory disaster management. Natural disasters, they are inevitable, and Indian subcontinent is prone to all types of natural disasters, whether it is flood, drought, cyclone, earthquakes, or forest fire. Okay. Now, in this season itself, you will see in some areas of India there are floods, and in some there is drought. Okay. See how the country is affected by various disasters. At some place there are floods, at some there are droughts. Flood is when you have more water, and drought is when you don't have water. Now disasters can be classified in several ways. Basically there are three types of disasters. One are natural disasters, second human made disasters, and third are human induced disasters. Natural disasters, floods, earthquakes, all these are natural disasters. Human made disasters, when you do mining at the place which has various these faults, okay, and joints, when you do mining there, you are making the area vulnerable for landslide. So that is human made disaster. Like accidents which occur on the road, that are also human made disaster. Then human induced disaster. Human induced are like that Bhopal gas tragedy. That was a human induced disaster. Due to some fault of some person, that gas was leaked into the pipes, which led to such disaster. So that is human induced disaster. Now according to the available statistics, 60% of the total area of Indian subcontinent is vulnerable to seismic activity of varying intensities. 16% of the country's total area is drought prone. 68% of total sown area is drought prone. Coastal areas of India is exposed to tropical cyclones, and river floods are most frequent and devastating. Now this is disaster management cycle. You will see there are various stages in this: preparedness, disaster, relief, rehabilitation, reconstruction, and mitigation. Okay, preparedness, when you prepare yourself before the disaster event, when you prepare the society that see if such type of a disaster comes, you have to do these type of things. Okay, in various these NCERT books, now there is a chapter, I think there are complete books on disaster, where they tell in case of earthquake what you have to do, where you have to take the shelter. Okay, so this is preparedness stage, when you are preparing the people that in case of a disaster you have to do all these things. Okay, then there is a disaster event, then the disaster occurs. After that
You cannot do anything about disaster. It has to come. Whatever technology you have, you cannot stop it. If a disaster comes, then the first stage is to provide relief to the affected people. Then, after you do the relief, this relief period is just 1 week from the event. Okay. After that, you have to rehabilitate those people. Then, you have to reconstruct not only their houses but also their livelihoods. Then mitigation. Mitigation means after reconstruction you have to prepare them, that in case there are some disasters, how to mitigate them, and then there is preparedness. By mitigation you prepare the person that in future if a disaster comes, whatever steps you have to take. Okay, so this is the disaster cycle. Ultimately what will happen when you follow this cycle for a long period of time, you will have a resilient community. Resilient community means which will not be affected by the disaster. Okay, the loss of life would be minimum. All of you know that Japan is a country which faces large number of earthquakes. Okay, in the year it is the only country which faces large number of earthquakes. This is also recorded in the Guinness Book of World Records also. But you will see that the loss of life there is very less. Why? Because they have prepared themselves that in case of a disaster what they have to do. So that is the concept of resilient community. Okay. In case of tsunami also, the loss of life in Japan during Japan tsunami was very less. Why? Because they had foreseen. Earlier they had foreseen that in case of a disaster, tsunami, what you have to do? They have prepared high-rise, these safe houses where the people they can go and they can be saved from the coming waters of tsunami. Okay. I don't know whether you have seen, there was a short documentary on Discovery on this, I think it is called 30 Disasters or something. There was a series on National Geographic or Discovery. I'm not remembering it. There they had shown the Japan, this tsunami, and the person who was making this video, they have shown the videos prepared by various people on their mobiles or on their cameras. So the person who was shooting this video, he was standing on a platform, and from there he had shot what was happening beneath him. So he was at a safer ground, and that spot was built by the Japanese government. So that is a resilient community which knows in case of a disaster what they have to do. So when we follow all these cycles religiously, assiduously, then we come to a resilient society in which the loss of property and life would be very less. In case of India nowadays, the loss of life and property is very high. You will be amazed to know that when a fund was created for tackling with disasters, the fund was only about, I think, 80 million, something like this, and the demand for such fund from the states was up to the tune of 320 millions. The states, they had said we need 320 millions to tackle the disaster. And it is estimated that 10% of the entire of the GDP of India is lost in disaster. Now in India, this disaster management, it was started way, it was a very recent phenomenon. Disaster Management Act 2005 was passed in the Parliament on 23rd December 2005. So all the disaster management activities, they started after 2005. Then National Policy on Disaster Management 2009 was approved by the Union Cabinet on 22nd October 2009. So there was a delay of 4 years in the coming of the Act and the policy. And there is a difference between Act and the policy. In the Act, you have the various guidelines or rules which are stated there. Policy is how to implement those rules. Okay. So the Act came in 2005 and the policy came in 2009. Now what has happened after this? A paradigm shift has taken place at the national level from the relief-centric syndrome to holistic and integrated approach with emphasis on prevention, mitigation and preparedness. These efforts are aimed to conserve developmental gains as also minimize losses to lives, livelihood and property.
So earlier, it is not that before this act there were no disasters coming in India and they were not managed. Okay, but earlier the approach was relief centric. There is a disaster, okay, provide relief. But now it has changed. Now it is holistic approach, integrated approach. Prepare the people beforehand so that their lives and properties can be saved. Now this is the approach to disaster management. This is a typical disaster management continuum. There are 3 stages. Basically, there are 2 phases and 6 stages in disaster. So first is pre-disaster phase and another is post-disaster phase. In pre-disaster, we have prevention, mitigation, and preparedness. In post-disaster, we have response, rehabilitation, and reconstruction. Now we come to the more interesting part of this lecture, that is the application of remote sensing and GIS in disaster management. Okay, all right with remote sensing, GIS, but how it is used in disaster management? Now the space technology and disaster mitigation communities work together in developing effective and accurate methods for prevention, preparedness, and relief measures. Disaster prevention is a long-term phenomena which can best be studied with the help of satellite monitoring of various relevant factors such as changing land use. Disaster preparedness focuses on warnings and forecasts of impending disasters and often entails processes which are quite dynamic and result in rapid onset disasters. Now see, the space technology and the disaster mitigation communities, they work together. At one level you have the space technology and another you have the disaster mitigation community. These are 2 different bodies where they have to work together in order to produce effective disaster management. Now disaster prevention is a long-term phenomena, okay, but it can be studied with the help of satellites. With the satellites, I told you earlier, you can monitor the changes on the earth without coming into direct contact with it. Okay, so in case there is a disaster, like there are floods, but in case of floods, your surveying team cannot go there. Even your aircrafts, they cannot go there, because in case of heavy rain, the aircrafts, they don't take off. They don't go to those areas. Now, the only option available to you is satellites. In satellites also, the optical satellites which are using the sun's energy, they are also useless. Okay, when there is cloud cover. Then we use microwaves. The same microwaves which is used for cooking food in your homes, the same microwaves which are used for telecommunication in your mobiles, the same microwaves are used for getting the information. Okay, because the microwaves, they can penetrate the clouds and they can reach the earth. They not only can they penetrate the clouds, they can also penetrate the vegetative cover. If there are some trees above it, they can also penetrate it, and you can get the actual ground information. I'll show you some images in the later part of this presentation where you will see the bare earth on the due to these microwaves. So the microwaves, they are used for monitoring how much area has been inundated in case of floods. Inundated means how much area has been covered by water. Okay. Then you can also use remote sensing or GIS for warning and forecasting of disasters. Okay. Now there is a cyclone warning dissemination system, which is a well-developed system of Indian government. It is placed on both the east and west coast of the India, and they can provide accurate tropical cyclones, this forecast beforehand. 3 or 4 days before, they can tell what is the path of the cyclone and where it will come or where it will fall. See, there is a term known as landfall. So where that landfall means where that cyclone will strike. Now, an important aspect in terms of satellite monitoring involves assessment of the damage incurred during the disaster. Okay, you have got the imagery, this much area is inundated, but then what to do?
How will it help you? Okay. Now what happens? After every disaster, you will see that the governments, state governments, they ask the central government that so much area has been covered, this much amount of crop has been destroyed, these many houses are destroyed, and you provide us with relief. Okay. Now the government, they have remote sensing through which they can accurately assess what is the amount of damage. Okay. Usually what happened, people who had 1 acre of land, they said we have 10 acres of land and so much crop has been destroyed. Now that type of things cannot be done with the use of remote sensing. Then satellite technology can also help in identifying escape routes and locations for storage of temporary housing. Okay, now to identify escape routes, in case there is a disaster, which routes you should take. So that can be done with the help of remote sensing and GIS. And it can also identify locations for storage of temporary housing. In case of a disaster, you will see after a disaster, the people, they are made to stay in camps, and those camps, they are made up of tents. Now those tents, they have to be kept at some place. Number one is to identify the places where you have to make those camps, and number two, where to store those equipment. Okay, so these can be done with the help of remote sensing. Now remote sensing and GIS are among many tools available to disaster management professionals. Now whatever satellites we have, they are not designed for purpose of observing natural hazards. Okay, there is no particular satellite which is typically devoted to disaster management. Okay, so but the various spectral bands in which the information is collected by various satellites, these can be used for disaster management. So first is your visible band, then near infrared, infrared, shortwave infrared, thermal infrared, and synthetic aperture radar, which provide adequate spectral coverage and allow computer enhancement of the data for this purpose. Now repetitive or multi-temporal coverage is needed to study various dynamic phenomena whose changes can be identified over time. These include natural hazard events, changing land use patterns, and hydrological and geological characteristics of the region. Now one of the major one of the major highlights of the remote sensing satellites is that they come to the initial stage. Your satellites, they are moving from north to south. Okay, they are just moving like this. Within this, the earth is moving. All of you know that the earth is moving. Okay, so what will the satellite do? It will come like this and go. Earth will move again, it will come. So after some days, the satellite will reach at the first spot from where it had started. So this is called repetitive or multi-temporal coverage. Okay, now this repetitive time, it varies from 5 to 21 days. In some satellites, the earth comes to the same position in 5 days. In case of other satellites, after 21 days, the earth comes to the same position. Now this is the most important phenomena of remote sensing. Now how it will help us in disaster management? Now see, in case of floods, what happens? In case of floods, the water, it will come and it will inundate some of the areas, but after some time that water will recede. Okay, now you want to know how much area was covered and how much area is affected, how many residential areas were affected, how many agriculture areas is affected, or how many roads were destroyed. So all these can be studied once the satellite once the water has receded. Now after 21 days, when the satellite again comes to that spot, it will record the picture. Okay, so it will record the picture of the earth. Now you can see by comparing both the
photographs or the imagery that how much change has occurred. Okay. Now this repetitive, this is also used for changing land use. Okay, like if you are going to study urban sprawl, how much area, how much urban areas have expanded, okay, or where it is expanding. Then for that you also use need multi-temporal data of 10 years before and data of today. So imagery of 10 years before and imagery of today, so that you can see how much change has occurred. Now these also include your natural events, changing land use patterns, hydrologic and geologic characteristics of the region. Now in disaster management, the aim of the experts has been to monitor the situation, simulate the complicated natural phenomena as accurately as possible so as to come up with better prediction models, and suggest appropriate contingency plans and prepare spatial databases. So in disaster management, what are the aims of the experts? Number one is monitor the situation. Whatever the situation is, you would be able to monitor it with the help of remote sense. Okay. Then simulate the complicated natural phenomena as accurately as possible so as to come up with better prediction models. Now in GIS, you can simulate the various models. There is a software known as ArcGIS in which we can see that how much area would be covered underwater if we prepare a dam at this place. Okay. So it will, with the help of animation, it will show that this much area would be covered. So all these can be done with in disaster management. Okay. Then you have monitored the situation, you have simulated what the natural phenomena can do. Then what next? Then you suggest appropriate contingency plans. Appropriate contingency plans, that in case of a earthquake, what you have to do. In case of flood, which routes you have to take. Okay. So all these can be done with by making appropriate contingency plans and prepare spatial databases. Spatial databases, there is the Atlas on natural disasters which has been prepared by NIDM, and it is available at the NIDM website, where they have shown how much area of India is covered by floods, how much is affected by earthquakes, about all the various disasters. They have prepared maps. Okay, so all these can be done. This is at the national level. At state level also, in the disaster management plans, they are making spatial or maps for showing how much areas are covered, are affected by floods, how much by drought, how much by different disasters. So all these works, they have been done. Now from the inherent characteristics, namely spatial continuity, uniform accuracy and precision, multi-temporal coverage and complete coverage, regardless of site location, the remotely sensed data can be used very effectively for quickly assessing severity and impact of damage due to flooding, earthquakes, oil spills, and other disasters. Planning efficient escape routes from coastal areas during hurricane season, charting quickest routes for ambulances to reach victims, and locating places for shelter for victims or refugees. So all these can be done with the help of remote sensing. Then calculating population density in disaster prone areas, rapidly identifying hardest hit disaster areas in order to provide early warning of potential disasters, pre-disaster assessments to facilitate planning for timely evacuation and recovery operations during a crisis, monitoring reconstruction or rehabilitation after a major disaster, and developing, maintaining or updating accurate base maps. Now in case of GIS, you can constantly update the maps. Okay. While making paper maps, what you have to do, you have made a map, then after some time there are some changes, then you have to again prepare the same map. In GIS, all you have to do is just mark those changes which have occurred, nothing else. You don't have to prepare the entire map. Okay. Once you have prepared a map, then all you have to do is just
make the appropriate changes into. Now, coming to disaster scape of India, or what India is affected by which disaster? Earthquake, tsunami, cyclone, landslide, floods, fire. Now, these are the major disasters with which India is affected. There are many other smaller disasters also. Now, earthquake. See, with the use of remote sensing or even with the use of GIS, you cannot predict earthquake. This is, keep in mind that nobody can predict earthquake. There are some traditional methods which they say with which you can predict whether earthquake is coming or not. But there are no short scientific techniques with which you can tell when the earthquake will come. In case of India also, people have been speculating that earthquake of very high intensity will occur either along Dehradun or your this Rangada, along this belt. The earthquake will come, but when, nobody is able to tell. Either today it can come within 10 minutes, or for 10 years nobody can tell when it will come. So by using remote sensing or GIS, although we can tell, we can see some of the signs for earthquake, but nobody can predict the earthquake. Now, with the help of remote sensing, we can have the information about the seismic techniques. Then generally the faults associated with earthquakes can be identified on good resolution satellite imagery. Now, faults, all of you know that there are some things known as joints, faults, and fold, faults, and joints. Okay, so these are three geological characteristics which are on the earth. Faults, when there is some irregularity between two things, so that is known as a fault. Now, for this purpose, land use and geological maps can give vital pointers towards potential earthquake zones. And it is said that the earthquakes will occur only along the faults. Since faults, they are the weaker zones on the surface of the earth, so therefore they are the areas through which the earthquake can come. Then satellite sensors that are active in the visible and near infrared spectral band, they are used for making fault maps. Now, this is the imagery of Bhuj, which was captured by the ICONO satellite on 2nd February 2001. You can see how much area is affected in Bhuj due to the earthquake. Now, this is the earthquake map of India. This map I was talking about, this is prepared by the Disaster Management Authority of India. You see these red spots. These are the areas which are highly vulnerable for disasters, and they have been kept in zone 5. So these are in zone 5. Then there are different shades of pinks. Okay, so these, depending upon the intensity of the earthquake, these have been identified. Now, this is the fault map of India on the right side. Now, these are the three major faults which are there. One is MBT, another is MCT, and another is HFT. Now, these are the same faults on your Google Earth map. Now, this is a ground picture of MBT near Dehradun. You see there are two different types of layers here, this and this. So this is a fault zone. Now, these faults, these are in Gujarat. This is the Allahabad fault. In 1819, there was a earthquake at this place. Then this is Kutch mainland fault. In 2001, there was Bhuj earthquake. And this is, with the help of satellite imageries, we have seen that a new island has developed in Pakistan on September 24, 2013. So this is a new island which has developed in Pakistan after the earthquake. Then tsunami, all of you know, tsunami is a big wave. Okay, this is a map of the
In this map, all the major tsunami events, they have been recorded here. Okay, like this is showing that when this came, the intensity was 5 and the height of the wave was 6 meters. Now these are some of the quick bird images of Asian tsunami. You see, this is before and this is what happened after the tsunami. How much area is lost. You can see how much land is inundated under water. This is again, this is of Japan. See what is left after tsunami. This is again of tsunami. Now we come to cyclone. All of you know what are the cyclones. They are the nature's fury. They are it is normally wind. Okay, it is just wind which has started from the sea and is coming towards the land. Now this disaster warning system, it is based on the Indian national satellites, and there is a cyclone warning dissemination system. See, these were the CWDS which I was talking about earlier. See, on the east coast and on the west coast, these are the Doppler radars which have been installed, which can predict disaster, which can predict the cyclones. Now this is the cyclone of 1998 during its initial ages to the date it struck. So on 5th June you had identified that the cyclone is coming. On 7th June it has moved upward. On 8th it was nearing the landfall, and on 9th it actually hit, and after that it dissipated. Now this is a national cyclone risk mitigation project in Odisha. They have identified a route from the main road to the cyclone shelter. So this is a cyclone shelter here. It is a blown up of this, and they have identified the route from the main road with the help of satellite imagery. And this is a embankment which has been prepared, and with the help of GIS it is telling that this much area has been saved from the water. Then landslides. Landslides are nothing when the earth, it moves under the effect of gravity when there is some lubricant which is through water. Now you might have seen that the landslides occur only during the rainy season. Okay, why? Because rainwater, it provides a lubrication to the earth to move down. Now these are on this side, this is the satellite imagery, and this is the ground image. You see, in case of a landslide, it will appear like this on the satellite imagery, and this is how it will appear on the ground. Now this is again imagery of satellite view and the earth view or the ground view. Now floods. I'll just come to the images. Now these are the images which have been taken by the radar sat by the use of microwaves. So, microwaves are used with the help of radar. Now see, this is Ghagra river and this is Rapti river. This is before the disaster, and this is what happened during disaster. How much area is inundated? All these black areas, this is inundated by water. Again we are talking about the floods in Assam. This is Brahmaputra river. This is Kokli river. It is just not visible in this. But see, after the event, the size of this river, how much it has increased, and how much area has been covered by Brahmaputra. This is of the same Assam, but of Kaziranga National Park. Now we come to the fire. Now see, the fire, it can be detected by the satellite. Some of the sensors on the satellite, they can identify the actual fire spots. Now these are some of the satellite images. You see this red light, it is showing the fire, this red here, and these white, these are the plumes of smoke. Okay, or these are the fumes of smoke. Similarly, this is another satellite imagery which is showing fire. You see, this is the fire. All these are fire affected, and these are also the same fire incident, and this is the smoke which is being detected with the use of satellites. So with this I come to the end of my presentation.
So if you have any queries or anything, you can ask me about it. Uh, any questions from the centers? Any questions from Unnao? Okay, then thank you very much. So thank you, Dr. Klotra, very much, and I'm sure that you have benefited in the sense that how the technology is useful in prediction of some of the disasters. If we know them well in advance, so we can take necessary action, we will be better prepared of. But in order to take action, we need to have some kind of preparedness as well. Many of the type of disasters like earthquake, etc., they will give us very little time, to the response mechanism. But some kind of disasters like cyclones, they, as I was seeing the presentation, they give you enough time. So if you have the prediction made well in time, so you can save lot of damage of, we can't, do saving to the damage to the property, but we can save the human lives and cattle life as well. And in fact, in many of the cases, about last year there was a warnings, in the for the disasters in the cyclonic disasters in Andhra Pradesh and Odisha side. So they evacuated more than 80,000 of the people from that area. So this way, these are very very helpful. And now we have a tea break. Thank you so much. And after we will reassemble after 10 to 15 minutes, where we will have some good presentation about how the people who get affected in case of any kind of accident or disasters, how they can be saved, or what kind of first aid can be given before they are being taken to the regular medical care. So we'll break for 10-15 minutes and then join. Thank you.
Honestly, फर्स्ट एड फर्स्ट this one, ये वाला फर्स्ट एड नीचे नीचे वाला नीचे this one, दिस ऊपर वाला ये सर हाँ ये सही पीपीटी बनेगी है, नहीं यार ये तो डॉक्यूमेंट फाइल है यस इसमें ये देखो ये बैक करना पड़ेगा इसको
First, ये देखा ये खोला, ये खोला। टॉप पे टॉप ये फर्स्ट है या फर्स्ट है फर्स्ट कंट्रैक्ट इसमें ओके देख अंदर बैठ देख देख यहाँ था तो फर्स्ट स्टार्टिंग में देख ये फर्स्ट है ना इसमें है इसमें इसके अंदर है फर्स्ट है इसके अंदर फर्स्ट एड वाले इसमें फर्स्ट एड के नाम से पेन ड्राइव में देखते हैं पेन ड्राइव ये फर्स्ट एड अभी तो मैं बाहर बैठे हूँ ये देख ये तो सर डॉक्टर ने लिखा है फिर फर्स्ट शुरू से स्टार्टिंग ये वाले में देख रहा है आगे इसमें शेयर यहाँ से फर्स्ट आ रहा फर्स्ट टाइप में आया ये वाला ये सर देखा था इसमें फर्स्ट है ये तो नहीं ना अच्छा जो दिखाने वाली चीज़ें डिटेल ये इंडक्शन ट्रेनिंग हाँ और बहुत ज़्यादा करना ये बस नीचे कर फिर आपके सेंटर मैं अभी ना लैपटॉप पे लगा के देख रहा था इस वाले फर्स्ट एड में सारा खुल गया फर्स्ट एड फिर मैं वो वाला लैपटॉप पे देखना ही
is elastomers. Elastomers are kind of compounds which will simply absorb the vibrations. So taking cue from that, the techniques have been devised to protect the buildings also from the forces which are coming from earthquake rays. Now important thing is, often the question we ask is whether we want to save life or property. Aapka ready hai sir? Okay. So we can save life. Life is more important, but to save life we need to save the property. You know, for me, for example, this building is not that important as the people inside the building. But you can be saved only when I save the building. So that is why to save life it is important to save the property which is being there. Now these techniques, what we do is that this is a schematic diagram of a building. So when the forces are generated, the building will shake. Now if you allow the building to move safely, so this is a fixed building. So bottom is fixed, the top will sway against the bottom. So here the cracks will develop and it is behaving as a rigid building and it is very likely to fall. Now if you provide a roller at the base, theoretically let's say, so the top building can move against the roller without getting damaged. The only thing is you need to provide space so that it doesn't hit against during the movement. So you provide a safe space and you just simply allow the movement to take place. So that is the conceptual framework of saving the building, that you allow the movement to take place. That is one thing. So what will happen, that it is isolating the foundation with the superstructure through the what we say is a bearing or a roller. The other technique which I was saying is the elastomeric bearings. As you know, the elastomeric bearings are, again, you have different type of forces, maybe compression forces, tension forces, moments. So elastomer are the material that which can take the shape, just like elastic material. They will take the shape as per the force applied to that, and when the force is removed, they will rebound back to the original shape. So these are very high quality materials called elastomers, and it is as simple as that, providing them at the top of the foundation and before you start construction of the superstructure. So you can see here that this is a similar type of elastomer, and you have elastic material with steel reinforcement, and this can take the shape. This can take the shape without. So during this process, the forces are transmitted, they are absorbed by this elastomer, and thereby less forces are transmitted to the superstructure, so thereby avoiding the damage. So I thought I will share this in between, and meanwhile we have our expert who is already here ready for the proposed session. This session is going to be on first aid, as I discussed earlier, and the speaker with us is Mr. S.S. Saini, who is Director Health and Safety Care India. He has formerly been working as Secretary Indian Red Cross Society District Branch Haryana, and during his long service period he has served many organizations, and he has been awarded on national awards, and state awards have been given to him for promoting the education on first aid training in the states. He has also been authorized lecturer on first aid as well as on the nursing, and is a life member of many important organizations including St. John's and IRCS. And I will not spend more time and invite Mr. Saini to come here and give us some good tips about the first aid which may be required during the case of disaster. Good morning. Myself S.S. Saini. First aid is a new
नॉट ए न्यू सब्जेक्ट। सभी जानते हैं कि फर्स्ट एड क्या है और क्यों सीखते हैं आज के टाइम में, इसकी क्या जरूरत है, क्यों कहाँ कैसे जरूरत पड़ सकती है। ओके, फर्स्ट एड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसे बाकी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, बाकी नॉलेज गेन करते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में डिफरेंट टाइम में, लेकिन फर्स्ट एड को जनरली हम बहुत लाइट लेते हैं, बहुत लाइट लेके चलते हैं कि फर्स्ट एड क्या है, कुछ नहीं है, जस्ट वो क्या है, जस्ट बैंडेज करने वाली बात होती है। लेकिन ये नहीं मालूम कि फर्स्ट एड ही एक ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति को, किसी भी जान को जो है बचा सकते हैं विद इन मिनट्स। अगर ये ट्रेनिंग, ये टिप्स हमें मालूम है, थोड़ी सी टेक्निक मालूम है फर्स्ट एड के बारे में, तो हम बहुत अच्छे ढंग से किसी व्यक्ति को जो कि बिल्कुल मरने के कागार पे है, विद इन ए फ्यू मिनट्स जो है उसकी डेथ हो सकती है, हम उसे बचा लेंगे। अदरवाइज जनरली क्या होता है कि जब भी कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई मिसहैपनिंग्स होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली यही होता है कि उस कैजुअलिटी को, उस पेशेंट को उस साइड से उठाएंगे और जल्दी से हॉस्पिटलाइज कर देते हैं। कहते हैं कि जल्दी करिए, इसे हॉस्पिटल ले चलिए। ठीक है, एक सोच रहती है हमारे दिमाग में कि डॉक्टर इसे वहां पे बचा लेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि डॉक्टर बचाएंगे, नो डाउट, कि डॉक्टर एक्सपर्ट है, ट्रेनिंग है, नॉलेज है, और डॉक्टर किसी भी व्यक्ति को किसी भी बीमारी या एक्सीडेंट के टाइम पे वो उसे बचा लेते हैं। लेकिन डॉक्टर कब बचाएंगे? जब उस कैजुअलिटी को, उस पेशेंट को, उस मरीज को हम जिंदा हॉस्पिटल में पहुंचाएंगे, तभी बचा पाएंगे। अगर वो उससे पहले ही मर जाएगा, वो हमारे हाथों में ही दम तोड़ देगा या हमारे सामने ही दम तोड़ देगा, तो हॉस्पिटल में ले जाके डॉक्टर उसे कैसे बचा पाएंगे? तो वही चीज है जो यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं कि डॉक्टर के आने से पहले या कैजुअलिटी को, मरीज को डॉक्टर के पास पहुंचाने से पहले जो हेल्प उसको हम करते हैं, उसको फर्स्ट एड या प्राथमिक सहायता, और पंजाबी में जैसे मुढ़ली सहायता भी कहते हैं, दिस इज फर्स्ट एड। अब वो कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स है, टिप्स है, जिसे हम यहाँ बता रहे हैं कि फर्स्ट एड किस तरह से, कहाँ कहाँ, क्यों क्यों, क्या जरूरत है और कैसे हम उसे देते हैं। अब क्वेश्चन है कि व्हाई शुड वी लर्न फर्स्ट एड। पहला क्वेश्चन ये आता है, आज के समय में आप देखते हैं कितनी दुर्घटनाएं, कितने एक्सीडेंट्स, कितनी मिसहैपनिंग्स जगह जगह पे, चाहे हम कहीं भी देखते हैं, चाहे रोड साइड है, चाहे कहीं फील्ड है, जहां वर्क प्लेस है, चाहे घर है, तो दुनिया भर के एक्सीडेंट्स हम देखते हैं। थोड़ी सी एग्जांपल देते हैं, हम घर में कहते हैं हम बिल्कुल सेफ है, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन घर में भी बहुत छोटे छोटे हादसे होते हैं जिसमें तकलीफ भी हो सकती है और जान भी जा सकती है। छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, फर्श पे इधर उधर कोई चीज गिरी होती है, जस्ट लाइक कोई कॉइन है, बटन है, कोई और ऐसा चीजें होती है, बच्चे मुंह में डाल लेते हैं, और जैसे मुंह में डालते हैं उनके मुंह में यहाँ पे गले के अंदर विंड पाइप पे चली जाती है, फंस जाती है, और जिससे उसका चोकिंग हो जाती है और बच्चे का, व्यक्ति का सांस भी बंद हो सकता है। ऐसा हमारे साथ भी कभी कभी हो सकता है, जब हम भोजन करते हैं, अचानक कोई बात ऐसी हंसी की आ जाती है, छींक आ जाती है, तो खाना आप देखते हैं अक्सर हमारे कभी कभी फूड पाइप की वजह वो विंड पाइप में चला जाता है, और उससे हमें बहुत बेचैनी लगती है, बहुत तकलीफ होती है। जब तक वो क्लियर नहीं होता हम बहुत बेचैन रहते हैं। तो इस तरह से और भी घर में हादसे होते हैं, जैसे बिजली कभी पकड़ लेती है, आप किचन में कहीं काम करते हैं तो वहां पे गरम गरम कोई ऑयल है, दूध है, चाय, पानी, कुछ भी गिर सकता है, जल जाते हैं। कभी आप फ्रूट या सब्जी काटते वक्त कोई भी चाकू या कोई ऐसा चीज आपके हाथ पे लग जाती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। तो बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं हमारे घर में अक्सर देखते हैं, हमारे साथ ऐसी होती है। घर से बाहर निकलते हैं, रोड साइड पे डिफरेंट टाइप के एक्सीडेंट्स आप देखते हैं, बाइक है, स्कूटर है, कुछ भी है, कितने एक्सीडेंट्स हम डेली पढ़ते भी है और टीवी में देखते भी है। फैक्ट्री में जहां भी है वहां भी एक्सीडेंट्स होंगे, और अगर कोई कहे कि फील्ड में ऐसा नहीं हो सकता, वहां भी होते हैं, जस्ट कोई पानी में डूब जाता है, या स्नेक बाइट हो गया, या डॉग बाइट हो गया, वहां भी ऐसी घटनाएं होती हैं। ये सभी घटनाएं जब भी होती हैं तो उस समय हमें उस व्यक्ति के बचाने की जरूरत होती है, और वो छोटी छोटी टेक्निक है, ये परिभाषा, डेफिनेशन आप देख रहे हैं कि डॉक्टर के आने से पहले और पेशेंट को डॉक्टर तक पहुंचाने से पहले, यदि इनको एक लाइन में कहे कि बिफोर एन मेडिकल असिस्टेंस, जो हेल्प आप किसी पेशेंट को देते हैं, जो उसके बचाव के लिए काम करते हैं, ऑल ऑफ ए सडन कोई बीमारी होगी है, ऑल ऑफ ए सडन कोई एक्सीडेंट होता है, तो उस समय जो भी आप उसकी हेल्प के लिए काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। और इसमें एक पॉइंट यहाँ ऐड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल मटेरियल, उपलब्ध साधनों से। अवेलेबल मटेरियल का मतलब है जो वस्तुएं, जो चीजें आपको तुरंत वहां पे अवेलेबल है। फर्स्ट एड के अंदर तो डिफरेंट टाइप की बैंडेज भी बताएंगे, डिफरेंट टाइप की और भी कई चीजें आती हैं, लेकिन ये कि कंपलसरी या जरूरी नहीं हो
हो जाता है कि फर्स्ट एड की ट्रेनिंग के बाद आपके पास कोई किट होगा, हमेशा जब भी आप कभी मार्केट में निकलते हैं, कहीं भी बाहर जाते हैं, तो वो किट आपके साथ होगा, ऐसा पॉसिबल लाइफ के अंदर नहीं है। लेकिन जैसे आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, अपने बाइक पे जा रहे हैं, आप देखते हैं किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट कहीं हो गया है, तो हम उससे कैसे हेल्प करें, ब्लीडिंग शुरू हो गया, तो कुछ नहीं है, हमारे जेब में तो अक्सर एक ये छोटा सा कपड़ा होता है जिसे हम हैंकी का नाम या रुमाल कह देते हैं, ये तो होता है, इसी को यूज कर सकते हैं। जब तक जेब में है हैंकी है, इसी को कहीं पे ब्लीडिंग के टाइम पे हमने यूज कर लिया, यही हमारे लिए उस समय बैंडेज का काम करेगा। इसी तरह से कोई भी कपड़ा, कोई भी वस्त्र पेशेंट का हो सकता है, मरीज का किसी आसपास खड़े हुए व्यक्तियों में से हो सकता है, हमारे पास हो सकता है, तो उससे जो हेल्प करते हैं उसे ही हम अवेलेबल मटेरियल ऑफ फर्स्ट एड कहेंगे। फर्स्ट एड का मतलब नहीं कि मार्केट में जाके पहले बैंडेज परचेज करेंगे और उसको बैंडेज करेंगे, वो फर्स्ट एड नहीं होती। यहाँ पे एम्स आते हैं, फर्स्ट एड के एम क्या है मुख्य, ये कुछ थोड़ी सी 5 मिनट लूंगा इसमें। एम में क्या है कि सबसे पहले हमें प्रिजर्व, ये दिमाग में रखनी है, 3-4 पॉइंट है यहाँ पे, जिसे हम 3P फार्मूला कहते हैं। 3P फार्मूला है ये कि प्रिजर्व लाइफ। सबसे पहले हमें ये देखना कि व्यक्ति को किस टाइप का खतरा है, कहीं इसकी जान जाने वाली तो नहीं है, और हमें हर कोशिश करके उसकी जान को बचाना है। जो भी एफर्ट्स हम कर सकते हैं, पूरी एफर्ट्स करके, मेहनत करके उसकी जान को बचाना। सेकंड है कि उसकी हालत और ज्यादा ना बिगड़े, उसको कंडीशन को रोकना है। जैसे किसी का ब्लड बहुत ज्यादा बह रहा है, लेकिन जैसे एक फर्स्ट एड वहां पहुंचता है तो उसकी ड्यूटी बन जाती कि और ज्यादा उसकी ब्लीडिंग ना हो, तुरंत उसको हम बंद करें, जो भी एफर्ट्स होते हैं। थर्ड है कि उसकी प्रमोट रिकवरी की, उसकी हालत को और ज्यादा ना बिगड़े, और उसे तुरंत कोशिश करें किसी नजदीक जो भी हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, वहां से ले जाना, ताकि उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट वहां हो सके। एंड फोर्थ एक ऐड जो हमने किया है कि प्रोटेक्ट योरसेल्फ, कि अपने आप की सुरक्षा, अपने आप का बचाव हमेशा ध्यान। ये ना हो किसी की फर्स्ट एड करते वक्त, किसी की कोई हेल्प करते समय हम अपनी जान को ध्यान में ना रखें और अपनी जान गंवा बैठे, या खतरा हमारे साथ हो जाए, जस्ट लाइक बिजली पकड़ ले या कुछ भी हो सकता है। तो अपनी लाइफ को, अपने शरीर को, अपने आप को पूरी तरह से लीगली, फिजिकली, हर तरह से हमें उसको बचा के रखना। कई तरह की है, पहले तो फिजिकली ही आता है कि हम अब बचाए। जस्ट लाइक एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि अगर हम लोग जब भी कभी ऐसे टाइम पे काम करते हैं, जब भी कोई व्यक्ति को एक्सीडेंट होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम जनरली घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाता है, अपने आप के लिए, पब्लिक के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। तो हम घबरा जाते हैं, और घबराहट के अंदर जब भी कोई काम करेंगे जनरली गलत होता है, ठीक काम नहीं कर पाएंगे। घबराहट में या जल्दबाजी के अंदर हम गलत एक्शन ले लेते हैं। जैसे कि अगर किसी बच्चे को, व्यक्ति को बिजली ने अगर पकड़ रखा है, तो हमारे दिमाग में एक जहन में एक ही बात होती है कि इसे जल्दी से बिजली से छुड़ा ले। अगर नहीं छुड़ाएंगे तो बिजली से हो सकता है इसकी डेथ हो जाए, और छुड़ाने के लिए हम भाग के उसको, व्यक्ति को पकड़ के अपनी तरफ खींचते हैं। और रिजल्ट क्या होगा, जैसे हम उसको टच करेंगे, हाथ लगाएंगे, तो वो करंट हमारी बॉडी से पास होना, अर्थ होना शुरू हो जाएगा, और जैसे वो लगा हुआ बिजली के साथ, तो हम भी उस पेशेंट के साथ, उस व्यक्ति के साथ पूरी तरह से उसके साथ ही रहेंगे। ऐसे ही व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करेंगे तो लाइन भी लग सकती है। तो ये क्या, हमने जल्दबाजी के अंदर काम किया, बिना सोचे समझे काम किया कि ऐसा करने से क्या हो सकता है। एक छोटा सा और एग्जांपल कि कोई बच्चा पानी में डूब रहा है, आपने देख लिया कि पानी में डूब रहे से जल्दी से बचाए, और आप जैसे ही बचाने के लिए उसके पानी के अंदर जाते हैं, छलांग लगाते हैं, और पानी के अंदर जाके आपको याद आता है मुझे तो तैरना नहीं आता, वहां पे आप भी हाथ पांव मारना शुरू कर देंगे। रिजल्ट क्या हुआ, एक डूब रहा था, आप भी साथ में डूबना शुरू कर दिया। ये क्यों हुआ कि हम बहुत जल्दी ले लेते हैं, डिसीजन जो लेते हैं वो सोच समझ के नहीं लेते। जल्दी तो करना है, क्विकली करना है, लेकिन शांति से और सोच समझ के हमें करना है, नहीं तो हमारी जान का भी खतरा हो सकता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, आप समझ गए। तो ये है प्रोटेक्ट योरसेल्फ में, कि हमें हर तरह से अपने आप को सेफ रखना, बचा के रखना है, चाहे फिजिकली फॉर्म में है और चाहे लीगली फॉर्म में। लीगली में मैं एक छोटा सा बात यहाँ पे ऐड करूंगा, जो अक्सर हम कई बार गलती कर बैठते हैं। वैसे तो आजकल टीवी पे, सीरियल में या पिक्चर्स में सब चीजें क्लियर होती हैं कि अचानक किसी ने दुश्मनी में या जैसे भी किसी ने कोई छाती में, पेट में, शरीर के अंदर कुछ मार दिया, जस्ट लाइक चाकू, छुरा, कुछ भी हो सकता है, और वो व्यक्ति भाग गया है। आपने अचानक जब उसकी आवाज सुनते, चिल्लाता व्यक्ति, और उसके जैसे दौड़ के जाते, क्या हुआ, मे भी घर में हो सकता है, बाहर हो सकता है, और देखते कि शरीर के अंदर कुछ लगा हुआ है, कोई वेपन, कोई हथियार लगा हुआ है, और उसको देख के आप तुरंत फिर वही बात आएगी, घबरा जाएंगे और उसको निकालेंगे। जल्दी से क्या करेंगे कि जैसे ये चीज लगी हुई, उसको जल्दी से पकड़ेंगे और निकाल देंगे। अब यहाँ पे दो गलती आप तुरंत करते हैं।
नंबर 1 गलती तो ये करते हैं कि ऐसी शरीर के अंदर, चेस्ट में, पेट के अंदर, स्टोमक में कहीं भी कोई चीज लगी स्पेशली इस पोर्शन में, उसे कभी नहीं निकालना। क्यों नहीं निकालना? जैसे इस वेपन को, इस हथियार को हम यहाँ से निकाल लेंगे तो निकालते ही ब्लड एकदम से बहुत तेजी से निकलना शुरू हो जाएगा और उस ब्लड को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कितनी पैडिंग करें, ड्रेसिंग करें, नहीं बंद होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत प्रेशर के साथ जो है हार्ट पंप कर रहा है और ब्लड को वहां से पुश करके निकालेगा। सेकेंड क्या प्रॉब्लम होगी, ये आप सभी जानते हैं, किसी भी हथियार पे या किसी चीज पे अगर हम हाथ लगाएंगे तो हमारे फिंगरप्रिंट आएंगे, कल को कोई केस बनेगा तो हमारा ही नाम आएगा कि आपने ही मारा था, कोई मारने वाला तो भाग गया। तो ये लीगली तौर पे भी हम ऐसा कभी कभी गलती कर बैठते हैं, जिसकी वजह से बैठे बैठाए हमारे एक प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट हो जाएगी। इसलिए हमें अपने आप को बचा के हर तरह से रखना है। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आता है जिसे हम शॉर्ट में याद रखने के लिए कहते हैं डॉक्टर ABC। एक्चुअली डॉक्टर ABC नहीं है, DRABC है। अब ये इसका मतलब है D स्टैंड फॉर डेंजर। हमें तुरंत जो है इस चीज को देखना है कि व्यक्ति है कहाँ है, किस खतरे में है, किस टाइप का खतरा है, बहुत क्विकली जो है जल्दी से उसका डिसीजन ले लेना। खतरे कई तरह के हो सकते हैं, आग का भी हो सकता है, कोई व्यक्ति आग में के बीच में घिर गया है, बच्चा घर में कोई आग अचानक लग गई है, जहरीली गैसेज फैल गई हैं, कोई पानी में डूब रहा है, बिजली ने पकड़ लिया है, या कुछ और भी हादसे हो सकते हैं, गाड़ी के नीचे दबा हुआ है, बिल्डिंग के नीचे दब गया है। तो ये सबसे पहले हमें ये देखना है, एसेस करना है कि खतरा किस टाइप का है जिसकी वजह से उस व्यक्ति को प्रॉब्लम में आई है या जान जाने का खतरा हो सकता है, उसे देखना है। और देखने के साथ साथ अब हमें अपने आप को सेफ रखना है और कैजुअलिटी को वहां से बचाना है, सेव करना, नहीं तो थोड़ी देर के अंदर हो सकता है उसकी डेथ हो जाए, जैसे कि बिजली का करंट है, पानी में डूबा या कोई और भी ऐसा हो सकता है। सेकंड है R मींस यहाँ पे रिस्पॉन्स। अब जो कैजुअलिटी आपके सामने है, कहीं पे भी रोड साइड है चाहे किसी जगह पे है, उसको देखना आइदर वो कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस स्टेज में। कॉन्शियस है, उसको चोट है, कई तकलीफ है, तो जनरली जो है व्यक्ति बोलता है, आवाज करता है, चीखता है, चिल्लाता है, जो भी मूवमेंट करता है, हाथ पांव लगाएगा, हिलाएगा, इस मीन्स कि वो कॉन्शियस है। अगर ऐसी मूवमेंट हम देखते कुछ नहीं है, व्यक्ति पड़ा हुआ है बिल्कुल, इससे ये लगता है कि व्यक्ति जो है पेशेंट वो अनकॉन्शियस स्टेज के अंदर चला गया। अब यहाँ अनकॉन्शियस में भी दो बातें आती हैं कि वो सेमी में है या फुली अनकॉन्शियस है। अगर हल्का फुल्की बेहोशी आती है, जैसे कई बार बहुत ज्यादा गर्मी में हम काम करते हैं, मौसम गर्म है, जैसे आजकल गर्मी है, जैसे पहले भी गर्मी रही, तो जनरली क्या है, गर्मी लगना, लू लग जाती है, सनस्ट्रोक हो जाता है और उससे फेंटिंग आती है, व्यक्ति बेहोशी में गिर जाता है। या कई बार जो लोग खेत में स्प्रे करते हैं, मेडिसिन वगैरह स्प्रे करते हैं, उसकी वजह से और गर्मी की वजह से स्प्रे जो है अंदर रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग के थ्रू अंदर चला जाता है, बेहोश हो जाता है। बहुत सारे कारण होते हैं। तो इसमें तुरंत हमें देखना कि वो बेहोशी कम है या ज्यादा है। अगर हल्की फुल्की बेहोशी है, जनरली कोई व्यक्ति अगर लेटा होगा तो आप उसे आवाज लगाएंगे, हेलो मिस्टर क्या है। अगर नाम जानते तो नाम से बोलेंगे, नहीं जानते अनजान है तो वैसे कहेंगे हेलो मिस्टर कैसे हो, कैसे आप यहाँ लेटे हुए, कैसे पड़े हो, क्या बात है। तो अगर आपकी आवाज से और मोर ओवर थोड़ा सा उसको टच करने से आप हाथ लगाते हैं, तो अगर वो बोलता है, मूवमेंट आनी शुरू हो जाती है, इसमें उसको हल्की सी बेहोशी आएगी, हल्की स्प्रिंटिंग थी, चक्कर आ गए थे, जैसे कई बार परेशानी से होता है, बीपी हाई से या गर्मी से या किसी भी वजह से फेंटिंग आ जाती है। अगर ऐसा नहीं है, आप उसको आवाज भी लगा रहे हैं, उसको शेक कर रहे हैं, बार बार उसको मूवमेंट कर रहे हैं, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, इसका मतलब फुल्ली जो है पूर्ण रूप से अनकॉन्शियस स्टेज के अंदर चला गया। और वो स्टेज जो है वो उसको हम सीरियस काउंट करते हैं। मे भी कोई पॉइजन का केस है, मे भी कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, हेमरेज हो सकता है या कुछ और हो सकता है, तो उसको हम सीरियस काउंट करते हैं। उस स्टेज में फिर हमें नेक्स्ट फर्दर स्टेप लेना है कि तुरंत उसको चेक करेंगे, कहीं किसी वजह से इसका रेस्पिरेशन जो ट्रैक है, ये एयरवे है, ये तो नहीं बंद हो गया। सांस लेना हमारे सब के लिए, जीवित रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। रेस्पिरेशन जो ब्रीदिंग हम ले रहे हैं, ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस दुनिया के अंदर जो कहे जी मैं बिना सांस लिए 10 मिनट या 20 मिनट तक रह सकता हूँ। सांस, रेस्पिरेशन, जिसे हम शॉर्ट में ऑक्सीजन भी कह देते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए एक एनर्जी है, पावर है, और इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। क्योंकि ये मिलती रहेगी तो बॉडी के अंदर एनर्जी आएगी और जो हमारे बॉडी के सेल है, टिश्यूज है, उनको ऑक्सीजन मिलती रहती है, एक्टिव रहेंगे, और वो एक्टिव रहेंगे तो हमारा शरीर ये जो है वो ठीक रहता है। एंड स्पेशली जो है ये हमारा ब्रेन जो है, इसके जो सेल है, 3 मिनट से ज्यादा अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मैक्सिमम 3 मिनट्स का टाइम होता है, तकरीबन 3 से 4 मिनट के बीच में अगर ब्रेन सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उनका सिस्टम जो है वर्किंग इरिवर्सिबल हो जाएगा, धीरे धीरे डेड होने शुरू हो जाएंगे, और एक स्टेज ऐसे आते हैं उनकी रिपेयरिंग नहीं हो सकती और व्यक्ति
अनकॉन्शियस, कोमा और उसके बाद डेथ हो जाएगी। हो सकता है कभी कभी हमारा सिस्टम चल जाए लेकिन उसके सेल डेड हो जाते हैं और व्यक्ति जो है कभी कभी आप देखते हैं कोई व्यक्ति कोमे के अंदर रहते हैं, सालों साल तक कोमे के अंदर पड़े रहते हैं। कारण ये होता है कि ये हमारा ब्रेन के जो सेल है वो डेड हो चुके हैं, वो काम नहीं करे, लेकिन रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग सिस्टम उसका दूसरा चलता रहता है, उसका कोई फायदा नहीं होता। तो तुरंत हमें उसके एयरवे को चेक करना है। एयरवे को चेक करने के लिए जैसे कि हमारे पास एक, मैं यहाँ पे कि ये पेशेंट है और यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये पेशेंट गिरा हुआ अनकॉन्शियस स्टेज के अंदर है, तो इसका एयरवे चेक करें। ये पेशेंट है। अब सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि कॉन्शियस पूरी तरह से है या फुल्ली है या नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, आवाज लगाएंगे, हेलो मिस्टर, हेलो हाउ आर यू, क्या बात। तो एक जनरल जो हम गलती कर रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे किया है, ये क्या करते हैं, हम उसकी गर्दन को या फेस पे ऐसे जनरली करते हैं। हमेशा जब भी किसी को, और थोड़ी सी देखिए, अगर घर में बच्चे को भी उठाना है, छोटा बच्चा स्कूल टाइम होगा, आप आवाज लगा रहे, बेटे उठिए स्कूल टाइम होगा, लेट हो जाएगा, उठिए उठिए, नहीं उठता, तो आप क्या करते हैं, उसके बाद देखा टाइम ज्यादा बच्चा नहीं उठा, तो आप उसको कहेंगे उठा बेटा उठो, तो यहाँ पे ही हाथ लगाते हैं, कहीं और जगह नहीं लगाते। क्यों, ऐसा ही है ना। तो पेशेंट को भी हम क्या करते हैं, पेशेंट को भी यही से करें, ये गलत है। कभी भी पेशेंट के यहाँ पे हाथ नहीं लगाए, आप कुछ क्यों नहीं लगा, कई कारण से। जो पेशेंट है आपको नहीं पता वो गिर गया था, कैसी पोजीशन में है, अनकॉन्शियस में कैसे हुआ है, बहुत सारे कारण। बेहोशी में ये जब व्यक्ति बेहोश है, हम बार बार जब ये इस तरह से मदद करेंगे, हमारी जो जीभ है, ये जीभ हमारे लिए उस समय ये जो है एक प्रकार के दुश्मन का काम करती है। दुश्मन कैसे है कि हमारे जीभ भी पीछे को चली जाती है, बार बार ऐसे करेंगे, अभी नॉर्मल है, और जब जैसे करते तो ये जीभ जो है धीरे धीरे पीछे की तरफ चली जाती है, और पीछे जो हमारे विंड पाइप है उसके जाके ऊपर ऐसे बंद कर देंगे, विंड पाइप को बंद कर देंगे। हमने तो बिल्कुल उसको उठा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, उसको फर्स्ट एड दे रहे, बचाने के लिए काम किया, लेकिन हमें क्या पता हमारे ऐसे करने से जीभ पीछे चली जाएगी, तो व्यक्ति का रेस्पिरेशन चल रहा है, ठीक है, जिंदा है, वो मर जाएगा, थोड़ी देर के मर जाएगा। दूसरी बात क्या होती है कि कभी कभी उसकी हो सकता है कि चोट लगने से उसकी ये फ्रैक्चर होगी, जॉ फ्रैक्चर हो गया, उसकी ये जो है सर्वाइकल बोन जो है, गर्दन की हड्डी जिसे हम सर्वाइकल बोन्स कहते हैं, ये 7 होती है। यहाँ पे जनरली आपने सुना होगा कुछ लोगों को कहते हुए कि मुझे सर्वाइकल हो गया, बड़े उससे कहते हैं शौक से कि मुझे सर्वाइकल हो गया। सर्वाइकल एक्चुअल कोई बीमारी नहीं है, सर्वाइकल इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं है। एक्चुअल में अगर हम इसे कहें तो सर्वाइकल पेन है। सर्वाइकल ये हमारे यहाँ पे अभी टाइम होगा तो दिखाएंगे आपको। सर्वाइकल गर्दन के अंदर जो हमारी बैक बोन है, स्पाइनल कोड है, इसके बीच में एक स्पाइनल कोड निकलती है। गर्दन के अंदर 7 हड्डी होती है, जो टोटल 33 पीसीज होते हैं ये, तो 7 जो पीसीज है इनको कहते हैं सर्वाइकल कोड। और जनरली हमारे पोस्चर गलत होने से, एक्शन से, झटके से ये हमारे यहाँ पे कुछ डिस्टेंस बढ़ जाती है, नर्व जो है उठ जाती है और पेन होना शुरू हो जाता है। उसे हम जनरली कहते हैं सर्वाइकल पेन हो गया, आम भाषा में आम लोग कहते हैं सर्वाइकल हो गया, जैसे पता नहीं क्या कहते उसको हो। चलिए, तो ये सर्वाइकल जो है गिरने से या किसी एक्सीडेंट में हो सकता है उसकी सर्वाइकल के अंदर कहीं इंजरी आ गई हो, और हम उसको जब ये ऐसे मूवमेंट करेंगे तो उसकी सर्वाइकल अभी तो ठीक है, सर्वाइकल के अंदर प्रॉब्लम आई है, लेकिन जो स्पाइनल कोड उसके रीढ़ की हड्डी के बीच में से बहुत बारीक धागा कहिएगा, नर्व कहिएगा, जो निकलती है, वो कभी कभी ऐसे मूवमेंट करने से वो टूट सकता है। और अगर स्पाइनल कोड टूट जाए, बिल्कुल ब्रेक हो जाए, वो दोबारा से उसका ठीक रिपेयर हो, अगर फ्रेश हो जाती है, दब जाती है, तो कभी कभी ठीक हो सकती है। अदरवाइज ब्रेक होने से वही होता है जैसे कि सप्लाई करंट की इधर से जा रहा है और बीच में से कट कर दे तो सप्लाई बंद हो जाती है। इसी तरह ये हमारे जो बैकबोन है, इसके बीच में जो सर्वाइकल स्पाइनल कोड है, वो कहीं से इंजरी के या किसी वजह से टूट जाती है, तो वो दोबारा से रिपेयर नहीं होगी, और नीचे का जो पोर्शन है वो फॉरएवर डेड हो जाता है, क्योंकि नीचे से और ब्रेन का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो कभी रिपेयर नहीं हो पाएगी। अगर कुछ है तो बहुत टाइम लगता है, उसको ट्रीटमेंट होती है और बहुत ज्यादा फिजियोथेरेपी और मेडिसिन से ठीक होती है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे एयरवे की, तो एयरवे में मैं बता कि ये जो एक्शन हम करते हैं ऐसे नहीं करना। अभी अगर उसे देखना है, रिस्पॉन्स चेक करना है, तो यहाँ से आप लगाते हैं, हेलो मिस्टर, हेलो, इस तरह से उसको करेंगे। अगर आपका जानकार है तो नाम से बोलेंगे, अनजान है तो वैसे आवाज लगाइएगा। तो ये नहीं घिसेंगे पे शोल्डर पे,
इस जगह पे आपने हाथ लगाना है और किसी जगह पे नहीं, ऐसे से स्पेशली इस जगह पे नहीं, जो अक्सर हम जो गलती करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ ऐसी ही बातें बता रहा हूँ आपको जो जनरली हम करते हैं और जो गलत होती है, जिसकी वजह से व्यक्ति अक्सर मर जाते हैं। अब आपने जो भी आपके पास एक कोई भी हैंकी या कपड़ा है, अपनी उंगली पे ऐसे डाल दिया और इसके बाद यहां से थोड़ा सा इसको टिल्ट किया, थोड़ा सा इसको ऐसे किया। इससे करने से हमारा पूरी तरह से ये हमें दिख जाता है, माउथ खुल जाता है, विंड पाइप वगैरह सारा हमें ट्रैक नजर आता है। यहां से हम चेक करते हैं कि उसके मुंह के अंदर कोई चीज लगी हुई है, दिखाई दे रही है, तो हम इससे इसको साफ करते हैं। ये खास तौर से स्पेशली होता है जब पानी के अंदर कोई व्यक्ति डूब जाता है, उस वक्त ज्यादा होता है, क्योंकि पानी में जब व्यक्ति डूबता है तो पानी के अंदर की छोटी छोटी गंदगी है, जैसे कोई पत्ते हैं पेड़ के, काई है या कुछ जो सीवीड्स कहते हैं, ये इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो पानी के साथ साथ नाक से और मुंह से जब पानी अंदर जाता है तो नाक में या मुंह के अंदर वहां रुकावट पैदा करते हैं और इससे जो है अंदर एयर जानी बंद हो जाती है। तो इसी तरह से हमने नाक के अंदर अगर कोई चीज दिखाई दे रही है तो उसे भी ऐसे साफ कर देंगे, और इन केस अगर बाई द मुंह के अंदर है तो मुंह में से भी ऐसे क्लियर कर देंगे। सेकंड जो चीज ऑब्स्टेकल होती है, मैंने बताया हमारी जीभ भी कभी कभी पीछे चली जाती है, तो उसको भी उंगली से ऐसे करके और नॉर्मल ले आइएगा मुंह के अंदर, जो कि यहाँ गले में चली जाती है। एक ऑब्स्टेकल जो जनरली और होती है कभी कभी किसी व्यक्ति के जब अपने हमारे दांत गिर जाते हैं, और खासतौर से जो व्यक्ति बुजुर्ग हो जाते हैं, तो वो दूसरे बनावटी दांतों को पूरा लगा देते हैं डेंचर, और उस समय बेहोशी में मूवमेंट होने से तो वो ढील लूज हो जाते हैं और वो भी गले में जाके यहाँ फंस जाते हैं, जिससे रेस्पिरेशन बंद हो जाता है, जो जनरली हमें मालूम नहीं होता, हम तो उसे बचाने की कोशिश करते हैं। एक जो गलती अक्सर हम करते हैं, हर व्यक्ति करता है, कि जब व्यक्ति बेहोश होता है, रोड पे गिरा है, कहीं ग्राउंड में है, जैसे बच्चे खेलते वक्त ग्राउंड में गिर गए या अपने घर में गिर जाता है, तो हम उसे उठा के चाहे बेड पे लेटाते हैं, चाहे कहीं और हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस या गाड़ी में लोड करते हैं। तो उठाने का एक तरीका होता है, अगर सिंगल व्यक्ति उठाता है तो यहाँ से ऐसे हाथ लगाएगा, क्योंकि वेट जो है बॉडी का इस जगह पे ज्यादा, इसके जब हम उसको ऐसे उठाते सिंगल व्यक्ति, तो हमारी गर्दन जो है उस पेशेंट की जो ये नेक है ये ऐसे पीछे चली जाएगी, तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। इसी तरह से टांगे नीचे को हो जाएगी, ये दो हाथ तो दो ही है ना, तो दो हाथ यही आ सकते, इसी वेट को उठाएंगे। और जब अनकॉन्शियस स्टेज में इस समय इस तरह से हम किसी व्यक्ति को उठाते हैं, अभी जो मैंने बताया, जैसे ही ऐसे गर्दन जाएगी तो हमारी अपनी जीभ पीछे को चली जाएगी, और पीछे जाने से ये हमारी विंड पाइप को ब्लॉक कर देगी और सांस जाना बंद हो जाएगा। हम उसे बचाने के लिए कोशिश करें, लेकिन ये हमने ध्यान नहीं दिया कि बेहोश व्यक्ति के गर्दन कभी पीछे की तरफ नहीं जानी चाहिए। ऐसा करेंगे तो उसकी जीभ जो है उसके सांस लेने के अंदर रुकावट पैदा करेगी। एक जो गलती करते हैं बेहोशी में, वो गलती करते हैं जब भी कभी कोई व्यक्ति बेहोश होता है तो जनरली हम उसे फटाफट जल्दी से पानी पिलाते हैं। बेहोश है, अब फिर भी हम उसका मुंह खोलते हैं जबरदस्ती, एक व्यक्ति उसका मुंह खोलेगा, दूसरा व्यक्ति उसको पानी पिलाने शुरू कर, पता नहीं क्या कंपटीशन लगा हुआ कि पानी कितना पिलाया, कि एक बोतल पिलाएंगे, दो पिलाएंगे, कंपटीशन लग जाते हैं पानी जरूर पिलाना। अक्सर करते हैं ना ऐसी गलती कि पानी पिलाते हैं अनकॉन्शियस व्यक्ति को, ये भी बहुत बड़ी गलती करते हैं। पानी अगर पिलाएंगे तो क्या होगा, होश में हम पिएंगे तो बिल्कुल ठीक तरह से हमारी फूड पाइप से पानी चला जाएगा, और अगर अनकॉन्शियस को पिलाएंगे तो वो पानी फूड पाइप में, जब विंड पाइप में चला जाएगा और वो जाके फेफड़ों में विंड पाइप को ब्लॉक कर देगा, सांस बंद हो जाएगा, व्यक्ति ठीक ठाक है वो भी मर जाएगा। ये भी हम अक्सर गलती करते हैं, जनरली गलती करते हैं, तो ये नहीं करनी। कभी भी अनकॉन्शियस व्यक्ति को पानी नहीं पिलाएंगे, कोई भी चीज, पानी ही जनरली पिलाते हैं, और तो कोई इसको दूध तो देते नहीं समय, तो पानी नहीं पिलाना, और ना ही कभी वॉमिटिंग करानी। सोचे कि पॉइजन का केस है, इसने पॉइजन लिया है तो वॉमिटिंग करा दे, उल्टी नहीं करानी। वही बात होगी, अगर हम वॉमिटिंग कराएंगे वो भी विंड पाइप में चली जाएगी, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग बंद हो जाएगा, व्यक्ति मर जाएगा। तो ये छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं, बचाने की कोशिश की वजह से मार देते वहीं पे। ठीक है, तो ये एयरवे को हमने क्लियर किया, देख लिया इसके अंदर, अब हमें कोई रुकावट नहीं रहा। अब हमें तुरंत इस समय क्या एक्शन लेना कि इसको देखिए, क्विकली एक्शन कर रहा है, इसको देखना ब्रीदिंग है, इसका सांस चल रहा है, तो यहाँ से बैक साइड पे उंगलियों को ऐसे रखेंगे, तो अंदर से हवा जब निकलती है थोड़ी फील होती है, गरम गरम लगती है, फीलिंग होगी कि हाँ है। सेकंड जो है, एक व्यक्ति को आप दूर से बता देंगे, चाहे वो बैठा हुआ है, चाहे वो लेटा हुआ है, किसी भी पोस्चर में है, और आप बता देंगे ये व्यक्ति जिंदा है या मरा हुआ है। कैसे बता सकते हैं? दूर से कैसे बता सकते हैं? बिना हाथ लगाए, बिना टच किए बॉडी मूवमेंट करेगी। हम जब सांस ले रहे हैं तो क्या है, हमारी बॉडी मूवमेंट क्या है,
हवा अंदर जाती है तो ऊपर की तरफ नीचे ऊपर ये मूवमेंट हो रही है। तो इसी से पता लगता है हमें जनरली कि व्यक्ति जी रहा है या सांस ले रहा है, रेस्पिरेशन चल रहा है, इसका मतलब जिंदा है। तो यहाँ भी इस व्यक्ति की हवा जब अंदर जाएगी तो ये मूवमेंट आ रही है, इससे भी हमें पता लगता है कि इसका रेस्पिरेशन ब्रीदिंग है या नहीं है। और दूसरा यहाँ से चेक करना, ये है उसको ब्रीदिंग चेक करना और फिर उसको ब्रीदिंग भी देना, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना। थर्ड पॉइंट आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सर्कुलेशन। मीन्स यहाँ पे हार्ट बीट, दिल का धड़कना, क्या ये हमारा हार्ट पंप कर रहा है? अब आप सभी जानते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो इस तरह से पंप करता है, ऐसे चलता है, एक रिदम के साथ चलता है। ये 1 मिनट के अंदर जब हमारी रेस्ट पोजीशन होती है 72 टाइम ये ऐसे बीट करता है। रेस्ट पोजीशन जैसे कि आप सभी बैठे हुए हैं तो इस समय लगभग वो 72 है, यानी 70 to 75 के बीच में वो बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं। और जो हम ब्रीदिंग रेस्पिरेशन लेते हैं ये ऑलमोस्ट इसका 1/4 होता है, यानी कि अबाउट 18 टाइम, यानी 15 to 18 टाइम जो है हम 1 मिनट के अंदर सांस को लेना छोड़ना। और ये हमारे हार्ट बीट, जिसको हम पल्स भी कह देते हैं, कि हम पल्स से जो जनरली यहाँ से चेक करते हैं डॉक्टर लोग की पल्स चल रही है, पल्स इसे यहाँ चेक करने का मतलब वो हार्ट की बीट देखते हैं, हार्ट जो की फंक्शन देखते हैं कि क्या ये स्लो है या वीक है। एक स्लो होना आता है कि ये 72 की बजाय 60 या 50 चल रहा है, या वीक हो रहा है बहुत कमजोरी से, यानी हार्ट इस तरह से चलने की बजाय वो हार्ट ऐसे चल रहा है, ये वीक हो गया। प्रॉपर जो है सप्लाई ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई बॉडी के अंदर नहीं जा रही। हार्ट का मेन फंक्शन है कि ब्लड की सप्लाई, इम्प्योर ब्लड को रिसीव करना, रिसीव करने के बाद उसी एक पंप के साथ उसे लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए भेज देना। लंग्स में जो हम एयर ले रहे हैं, जो सांस से छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज को बाहर निकाल देते हैं, और जो एयर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो उसके अंदर फिर से मिक्स होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज यहाँ पे लंग्स के अंदर हो जाता है, फिर से प्यूरिफाई हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है, फिर से वो हार्ट के अंदर चला जाता है, और हार्ट फिर उसे पंप करके बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। क्योंकि बॉडी के हर सेल को, हर टिश्यू को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है। अगर ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी तो धीरे धीरे हमारे सेल डेड होना शुरू हो जाएंगे। हाथ और पाँव के लिए 10 मिनट तक, 15 मिनट तक ना भी अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिले तो वो अंग जो है ठीक रह सकता है। लेकिन अभी जैसे बताया, अगर ब्रेन में ना मिले, मैक्सिमम 3 to 4 मिनट का टाइम होता है, तो ये ब्रेन के सेल डेड होने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद व्यक्ति की मृत्यु या वो अनकॉन्शियस और कोमे के अंदर चला जाएगा। और ज्यादा अगर थोड़ा सा टाइम और हो जाएगा तो मृत्यु हो सकती है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का पहुंचना बहुत बहुत जरूरी है विद इन 3 मिनट। तो अब हमने इसको ये चेक करना है, क्या इसका पल्पिटेशन है, यानी कि हार्ट बीट है, सर्कुलेशन है, यानी कि इसका दिल धड़क रहा है या नहीं। और ये चेक करने के लिए जनरली जो है यहाँ से पल्स को चेक किया जाता है, ये जगह पे कि ये पल्स चेक करने का भी एक खास होता है। अभी हम कई जगह पूछते हैं तो कुछ व्यक्ति ऐसे अपना हाथ लगा के ऐसे देखते हैं, हम कहते हैं दिखाइए आपने पल्स चेक करके, तो वो बहुत गलत तरीके, यानी इतने बड़े होने के बाद हमें पल्स चेक करनी नहीं आती। पल्स चेक करने का एक खास तरीका होता है, आपने ये 3 उंगली और यहाँ अंगूठे की साइड पे यहाँ जोर से जब दबाते हैं तो यहाँ से हमारी एक साउंड जैसे घड़ी चलती इस तरह से टक की आवाज है, इट्स मींस ये हमारी हार्ट बीट है, हमारा दिल इस गति से स्पीड के साथ चल रहा है, ये हम नोट करते हैं। अंगूठे के साथ नहीं करते, जनरली हम अंगूठा रखते हैं, क्योंकि अंगूठे के अंदर ऑलरेडी जो है वो बीट होती है और 2 बीट जब आपस में टकरा जाती है तो काउंटिंग ठीक तरह से नहीं हो पाएगी। इसके अंदर ऐसी कोई मूवमेंट नहीं होती है उंगलियों के अंदर, इसलिए यहाँ से करते हैं, एक रेस्ट होती है, एक वो एक्शन होती है। तो यहाँ से हम, लेकिन ऐसे केस के अंदर यहाँ से फील करने के बाद हम देखते हैं यहाँ से कोई फीलिंग हमें नहीं हो रही है, तो बेस्ट प्रेसिडेंट के केस में, एंड स्पेशली जब कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, कई बार टांग पे चोट आई है, हाथ में चोट आई है और ब्लीडिंग वहां से शुरू हो गई है, तो यहाँ पे वो प्रेशर हम फील नहीं कर पाते, वो बीट नहीं कर पाते, क्योंकि सिस्टम कुदरत ने हमारे शरीर का ऐसा बनाया है, बहुत ज्यादा सुरक्षित बनाया हुआ है कि कभी भी कोई इंजरी आती है तो ज्यादा से ज्यादा हम अपना ऑटोमेटिकली बचाव हो सकता है, शरीर ही ऐसा बना परमात्मा ने। तो इसके लिए ब्रेन, क्योंकि ब्रेन डेड हो जाता तो व्यक्ति खत्म हो जाता है, इसलिए ब्रेन की सप्लाई लास्ट मूवमेंट तक चलती रहती है। हाथ में या पाँव में सप्लाई बशर्ते कि बंद हो जाए, हाथ पाँव का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक भी हो सकता है, लेकिन ब्रेन नहीं, तो इसलिए कुदरत ने ब्रेन की सप्लाई ज्यादा दी हुई है। मैक्सिमम ब्लड की सप्लाई ब्रेन के अंदर आती है, क्योंकि ये सिस्टम हमेशा ही सोते जागते बैठे हमेशा ही वर्किंग में रहता ही रहता है, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है ब्रेन के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे सप्लाई ज्यादा रहती है। और हमारे दोनों पे ये साउंड बॉक्स जो है ये यहाँ से सप्लाई ऊपर की तरफ जा रही है, हार्ट से यहाँ ऊपर जाती है और यहाँ से हम
चेक करेंगे इस समय कोई एक्सीडेंट केस के अंदर, क्योंकि कई बार सप्लाई टांग कटने से, ब्लीडिंग होने से वहां से प्रेशर उधर निकल जाता है, तो ये यहाँ पे आप महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे जरूर फील करेंगे। एक्सीडेंट केस में हमेशा जब भी आप पल्स चेक करेंगे तो यहाँ से चेक करें, हम यहाँ से अब उसे चेक करते हैं क्या उसकी पल्स चल रही है, हार्ट बीट है यहाँ पे, अगर है या कम है, बहुत स्लो है, इस चीज को यहाँ से चेक करें। अब यानी इस पेशेंट के सामने देखा कि इसके कोई रुकावट थी, इसको क्लियर किया, एयरवे को पहले क्लियर किया, उसके बाद हमने इसको ब्रीदिंग देखा, उसका बहुत स्लो है, डेडली स्लो है, उसका हार्ट जो है वो भी ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पे, हल्की फुल्की मीट है। अब अगर इस समय हम इसे बचाने के लिए एफर्ट्स नहीं करेंगे तो भी दिन मिनट और 200 वो व्यक्ति क्या होगा, उसका सांस भी बंद हो जाएगा और वो बिल्कुल हार्ट बीट भी बंद हो जाएगा, व्यक्ति मर जाएगा। ये जो स्टेज होती है बहुत बहुत ही नाजुक स्टेज होती है और इस समय हमें तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है, तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत होती है। हमें डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं है, इसे हम पहले से बचाने की कोशिश करेंगे ताकि इसका रेस्पिरेशन चलना शुरू हो जाए, इसकी ब्रीदिंग वगैरह शुरू हो जाए। हम यहाँ से उठा के हम उसे हॉस्पिटल में भी, कोई पीजीआई या कोई भी हॉस्पिटल है नियर बाई कहीं पे भी, उसे वहां ले जाएंगे या किसी भी डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मे भी उसमें आधा घंटा लग जाए, 1 घंटा लग जाए, 10 मिनट लग जाए, और 10 मिनट तक ये व्यक्ति वेट नहीं करेगा, मुझे ले चलो जी, मेरा दिल जो है 10 मिनट तक मैं रोक के रखा हूं, कोई बात नहीं, उसके बाद में ठीक हो जाएगा, ये वेट नहीं करेगा। हार्ट या लंग्स जो है वेट नहीं करेंगे 10 मिनट तक, वो सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली ब्रेक बंद हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पे जरूरी क्या है कि इस व्यक्ति के रेस्पिरेशन ब्रीदिंग को चला दे और इसकी हार्ट बीट जो ये बंद हो गई है इसको चला दे। ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है, इसको बचाना, पहला काम जो हम बताया था। तो ये अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ एक टेक्निक है, छोटी सी टेक्निक है, इसलिए ये करने के लिए सेफ्टी, यहाँ फिर सेफ्टी आती है। प्रोटेक्ट योरसेल्फ में जो होता है सेफ्टी हर लिहाज से आपको सुरक्षित रहे, या इन्फेक्शन का डर हो सकता है। ये पेशेंट अननोन है, पता नहीं इसको कोई बीमारी है या मुझे कोई तकलीफ है इसको हो जाए, इसलिए एक सिंपल सा कपड़ा जैसे हैंकी या कोई भी कपड़ा हमारे पास अवेलेबल है उसको यूज करेंगे और उसके मुंह पे यहाँ पे रखेंगे। अब इस टेक्निक में देखिए कैसे कर रहे हैं, प्लीज ध्यान से देखना है, क्योंकि यहां मैं एक सांस लेता हूं, एक लंबा ब्रेथ, इसी को रोक दिया मैंने अपने बॉडी, अपने शरीर के अंदर इसको रोक दिया, और इसी एयर को, इसी हवा को इसके मुंह के अंदर डाल देना, उसका मुंह खोल के और उसके मुंह के अंदर डाल देना। डालते वक्त 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये वाला। डालते वक्त क्या करेंगे, उस पेशेंट का नाक को बंद करेंगे, नहीं तो मुंह में हवा डाल लेंगे, नाक से बाहर आ जाएगी। ये एयर जो है यहाँ लंग्स में जानी चाहिए, लंग्स में जाएंगी, लंग्स जो इस तरह से काम करना बंद किया, ऐसे हो गए, जस्ट एक बैलून की तरह एयर जाने से ऐसे हो गए। लंग्स का अपना फिनोमिना है, उसके बाद जितने ऊपर की तरफ फैलते हैं उतना नीचे कॉन्टैक्ट होगी, उसको कर जाएगा, एयर बाहर निकल जाएगा। मीन टाइम दोबारा हवा डाल देंगे, फिर से ऐसे होगी। तो ये इस मशीनरी को बार बार एक्शन में ले आएगा, ये काम करना शुरू करेगा, ठीक है। अब एक चीज तो डालते वक्त नाक बंद और मुंह को ऐसे टिल्ट, ये एक खास ध्यान देखिएगा कि यहाँ पे अगर इस तरह से हवा डालेंगे, हवा इसके अंदर नहीं जाएगी, ऐसे करेंगे नहीं जाएगी। हवा कब जाएगी, जब इसके गर्दन से थोड़ा सा इस तरह टिल्ट कर देंगे, और यहाँ पे हाथ रखा है ये वाला, और यहाँ पे चिन अपवर्ड एंड ये करके आप यहाँ से इसको बंद करें और यहाँ से इसको ऐसे हवा इसके अंदर इस तरह से डालें। 2 बार एयर आपने उसके मुंह में डालनी है। एक बात और है, कभी कभी एक्सीडेंट में व्यक्ति को बहुत ज्यादा चोट आ जाती है, उसके यहाँ मुंह पे चोट आ गई, उसके लिप्स होठ वगैरह कट गए हैं, या टीथ दांतों से टूट गए, या मुंह से ब्लीडिंग हो रही है, उस केस में ऐसा नहीं करेंगे, साफ कर देंगे, मुंह को बंद करेंगे और नाक के थ्रू जो है एयर उसके अंदर भेजेंगे, नाक में हवा डालेंगे, मुंह में नहीं डालेंगे, क्योंकि मुंह में डालेंगे वो जो ब्लीडिंग हो रही है वो भी फिर अंदर की तरफ जाएगी और विंड पाइप को ब्लॉक कर देंगे। यहाँ नहीं डालेंगे बल्कि नाक में डालेंगे, अगर बाई डे यहाँ पे ज्यादा चोट ब्लीडिंग हो रही है, अदरवाइज यहाँ से ही डालेंगे, ठीक। इसके बाद सेकंड आता है कि अब हमारे फंक्शन है हार्ट का। अब इसकी जो फंक्शनिंग, ये वर्किंग है, ये भी बहुत स्लो होगी, डेडली स्लो। अगर इसको नहीं चलाएंगे तो फिर सर्कुलेशन नहीं होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रेन में या बॉडी के अंदर सर्कुलेट नहीं होगा, फिर बढ़ जाएगा। इसको चलाने के लिए क्या करेंगे, हार्ट के ऊपर, हमारा हार्ट कहाँ है, जनरली जो है हम पूछते हैं, कहते हैं लेफ्ट साइड में,
यही आंसर मिलता है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट पे नहीं है। हमारा हार्ट जो है, दिल जो है, वो ये सेंटर बोन है, चेस्ट बोन जो है, इसके बिल्कुल नीचे, और लास्ट में ये हमारा एक पॉइंट है, यहाँ एंड है, ये एंड पॉइंट आता है, इससे लगभग 2 उंगली के ऊपर, लगभग यहाँ पे ये जो जगह है, ये हमारा सही दिल की लोकेशन। चेस्ट कैविटी में दोनों लंग्स के फेफड़ों के बीच में, यहाँ पे सेंटर के अंदर बिल्कुल यहाँ है। ये हमारा दिल जो है इतना साइज का होता है जितनी आपकी ये मुट्ठी। आप सोचते होंगे शायद ये अंदर जो है दिखाई नहीं देता, इतना बड़ा है या इतना है या कितना, इतने साइज ये है इसका साइज। लेंथ इसकी करीब लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर लंबाई, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई एंड 6 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। इसका वेट लगभग 300 ग्राम मेल्स के अंदर और 250 ग्राम फीमेल के अंदर इसका वेट होता है। ये हमारा हार्ट, ये यहाँ पे अभी इसको आपको दिखाएंगे इसमें किस तरह से फंक्शन कर रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, अब ये दिल के चलाने के लिए यहाँ पे एंड पॉइंट था ये चेस्ट बोन का, यहाँ पे आए सेंटर में, देखिए ये वाली जगह, ध्यान रखिएगा, ये अब लेफ्ट और राइट नहीं, यहाँ पे आपने इसको नजदीक पेशेंट के बिल्कुल पास में बैठेंगे, दोनों घुटने रख के बैठेंगे और आपको यहाँ से ये वाली जगह से यहाँ पे रखिएगा हार्ट के बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल दिल के ऊपर, लेफ्ट राइट नीचे ऊपर नहीं रखना, बिल्कुल सेंटर में यहाँ रखिएगा और दूसरे हाथ से ये इंटरलॉक कर दे, बिल्कुल पेशेंट के नजदीक होंगे। जब आप प्रेस करेंगे तो एल्बो आपकी सीधी रहनी चाहिए, बैंड नहीं, बैंड हो जाएंगे तो प्रेशर खत्म हो जाएगा। अभी यहाँ टेबल पे थोड़ा सा ऊंचाई है, अदरवाइज तो हम जब भी ऐसा केस होगा तो नीचे ही करते हैं और नीचे पूरी तरह से ये प्रेशर जाएगा। ये जो कंधे हैं, ये वेट जो है, ये प्रेशर कंधों से नीचे ऐसे जाना चाहिए। ओके, अब देखिए यहां से आपने क्या किया, पेशेंट के बिल्कुल पास में है और यहाँ पे आपने इसको प्रेस करना। प्रेस करने का थोड़ा सा तरीका है, इसको इतना प्रेस करेंगे लगभग 2 इंच नीचे की तरफ, नीचे 2 इंच नीचे चला जाएगी, ये हमारी जगह जो छाती नीचे 2 इंच नीचे चली जाएगी। और दबाने के लिए बहुत ज्यादा झटके नहीं देने, ऐसे नहीं करना, जेंटली वे में इसको प्रेस करना है और एक रिदम के साथ, एक स्पीड के साथ करना है, लगातार करना है, लगातार एक ही स्पीड। और स्पीड कितनी है, 1 सेकंड के अंदर आप लगभग 2 बार या 1 मिनट में 100 to 110 टाइम, 100 से 110 के बीच में 1 मिनट में हो, या रफली हम इसको यह कहेंगे 1 सेकंड में 2 बार हम इसको करेंगे। तो लगातार कंटिन्यू ही इसको करना होता है, इस तरह से लगातार 30 टाइम इसको प्रेस करेंगे, 30 बार इसको आपने कंटिन्यू प्रेस करना है और एक प्रेशर के साथ इसको जोर से दबाना है। 2 बार सांस देंगे, 2 into 30 इन 2 बार रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, 30 टाइम प्रेशर, ये आपने लगातार उसको करना है। अब ये अब दिमाग में आता है कि कितनी बार करें या कितनी देर तक करेंगे, इसमें टाइम या इसका काउंटिंग नहीं होती। आप इसको कभी कभी पेशेंट को हल्की फुल्की प्रॉब्लम होती है, आप 2-3 बार उसे प्रेस करेंगे और व्यक्ति रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है, ठीक हो गया। अगर नहीं है, 4-5 बार करने के बाद फिर आप उसको चेक करिए, ब्रीदिंग शुरू हुआ, पल्स शुरू हुई, अभी देखते हैं नहीं कुछ फर्क पड़ा, आगे वही रिपीट फिर करें, 2 बार रेस्पिरेशन, 30 टाइम प्रेशर, 2 बार, फिर अगेन 4 या 5 बार जब आप कर लेते हैं तो फिर उसको उसी तरह से फिर चेक करते हैं। यानी बीच बीच में हर बार चेक करते रहिए कि क्या उसका ये सिस्टम शुरू हुआ या अभी नहीं हुआ। मीन टाइम क्या है कि आप अकेले इस व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति है उसके लिए ज्यादा हेल्पफुल नहीं होंगे। ज्यादा हेल्पफुल का मतलब कि हमें दूसरे लोगों की, दूसरे व्यक्तियों की सहायता की जरूरत पड़ेगी, चाहे रोड साइड है या कहीं पे भी, जो भी व्यक्ति आसपास है उनकी हेल्प जरूर लीजिएगा। प्लीज आइए इसकी मदद करें, आइए इसको उठाते हैं, हॉस्पिटल लेके चलते हैं, गाड़ी में लोड करते हैं, या आप प्लीज, मैं ये कर रहा हूँ, आप प्लीज इसको एम्बुलेंस के लिए कॉल कर दीजिएगा। नियरेस्ट कोई एम्बुलेंस है या पुलिस स्टेशन है, कोई भी वहां पे फोन करिएगा। जैसे अपने यहाँ CPR होती है या एम्बुलेंस या 108 पे फोन करेंगे तो एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। तो आप उसके लिए जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज करने के लिए मीन टाइम दूसरा व्यक्ति कोई ना कोई, चाहे वो एम्बुलेंस है, चाहे तो दूसरी गाड़ी है, कोई अपनी है, उसे कॉल करेंगे ताकि वहां पे इसे आए और इसे जल्दी से हॉस्पिटलाइज कर सके।
गाड़ी के अंदर भी अगर अभी सिस्टम ठीक नहीं चला तो गाड़ी में पेशेंट लेटा हो उस वक्त भी यही सिस्टम हम करते रहे। क्लियर? अब मैं इसको कंटिन्यू करके आपको दिखा रहा हूं कि लगातार इस सिस्टम को हम कैसे करते हैं। वही है, अब बिना बोले देखिए, सबसे पहले हमने इसको चेक किया। अब हमने ये इसको चेक कर लिया था कि इसका रेस्पिरेशन और इसकी ब्रीथिंग नहीं है, और इसको हमने एयरवे को पहले इसको क्लियर किया, नाक के अंदर या उसके अंदर कोई भी इनकेस फोन बॉडी या कोई भी ऐसा चीज है तो साफ कर। साफ करने के बाद अब इसको ब्रीदिंग देना है, और ब्रीदिंग के लिए कोई सिंपल सा कपड़ा अगर है तो, नहीं है कोई बात नहीं, ज्यादा फोल्डेड नहीं होना चाहिए जिसमें एयर पास हो, इस तरह। ठीक है, अगेन ये कंटिन्यू करते रहे। यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसको देखें, जब आप उसके अंदर हवा डाल रहे हैं तो आपकी ध्यान यहाँ चेस्ट पे होना चाहिए, क्योंकि हवा अंदर जाएगी तो हवा के बाद जो है चेस्ट एकदम से राइज कर देगी, फूल जाएगी। अगर फूल रही इसका मतलब हवा अंदर गई, अगर नहीं फूल रही है इसका मतलब हवा अंदर नहीं गई। अब देखिए मैं उस तरीके से किया, अब मैं इस तरह से कर रहा हूं, आप खुद देखिएगा हवा जाती है नहीं। राइज ऊपर कर नहीं, क्यों नहीं हुई? अभी इसकी गर्दन ऐसे सीधी, और यहां से ये विंड पाइप बंद है, हवा अंदर नहीं जाती। एक लॉक लगा होता है इस टाइप पे ऑटोमेटिक अनकॉन्शियस स्टेज में। ऐसे जब हम करेंगे तो ये खुली है, और इस समय अगर हवा डालते हैं तो देखें किस तरह से जाती है। इसलिए इस तरह गर्दन को इस शेप में करके हवा डालनी, तभी इसको फायदा होगा। अगर आप कुछ कहेंगे कि हवा हम उसको कितनी देर से डाले जा रहा है, 1 घंटा हो गया अभी तक ठीक नहीं, कोई फायदा नहीं। ये है डालने का तरीका। उस पेशेंट को इस तरह से ये गर्दन के नीचे थोड़ा हाथ लगाए, यहाँ से ऐसे करें, और ये यहाँ हाथ रख के और इसको हवा दें। अगेन 30 टाइम्स को प्रेस करते रहेंगे, एक जेंटल तरीके से उसको प्रेस करेंगे, एक ही रिदम से। अगर हम उसको झटके दे देंगे इससे हड्डी टूट सकती है, फायदा नहीं होगा। हड्डी हमारी रिब्स या कोई भी बोन टूट जाएगी तो नीचे हार्ट में या लंग्स में चली जाएगी, इंजरी हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, और एक इस सिस्टम के साथ, एक रिदम के साथ उसको करते रहेंगे जब तक इसका रेस्पिरेशन, इसका रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलता है, यानी ठीक नहीं हो जाता है, या मीन टाइम इसको हॉस्पिटलाइज नहीं कर देते, डॉक्टर को हैंड ओवर नहीं करते, तब तक इस तरह से हम इसे करते ही रहेंगे, चाहे 10 मिनट लगे या 15 मिनट लगे। अब यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई, अकेला व्यक्ति कितनी देर करेगा? एक अकेला नहीं, बल्कि हम दूसरे व्यक्तियों को, मैंने अभी बताया कि हमेशा दूसरे लोगों की हेल्प लेते हैं। हेल्प के लिए यहाँ पे करेंगे कि एक व्यक्ति ने उसको रेस्पिरेशन दिया और दूसरा व्यक्ति जो साथ में है उसने उसको प्रेस किया 30 टाइम। फिर ये पीछे हटता है, ये फिर सांस लेगा, पीछे हटेगा, ये फिर करेगा। तो 2 व्यक्ति ऐसे मिलकर करेंगे। फिर अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं कि प्रेस करने वाला उसको ब्रीदिंग करेगा और ये उधर आ जाएगा। इसी तरह से अगर ज्यादा टाइम लगता है तो 2 व्यक्ति अगर भीड़ में से देख रहे हैं तो उनको मालूम पड़ जाएगा इस तरह से हवा डालनी है और इस तरह से प्रेस करना है, तो 2, 4, 5 मिनट के बाद वो उसी पोजीशन को चेंज कर लेंगे। तो इससे हम ज्यादा देर तक इस तरह से इस व्यक्ति को, इन केस अगर सांस चलना शुरू नहीं होता या इसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो हम ज्यादा देर तक 2 मिलके या 2 करके हम ज्यादा देर तक से सांस या इसके इस सिस्टम को कर सकते हैं। और ये जो सारा सिस्टम है जो मैंने अभी किया, इस सिस्टम को कहते हैं CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इस सिस्टम को कहते हैं CPR। यानी आप क्या करें, CPR दें। तो उसका CPR कार्डियो पल्मोनरी, कार्डियो मीन्स हार्ट, पल्मोनरी लंग्स है, रिससिटेशन किसी रुकी हुई वस्तु को उसको दोबारा से मोशन में, गति में ले आना या चला देना, दैट इज कॉल्ड CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। दिस इज ये था CPR का मेथड कि किस तरह से हमें किसी व्यक्ति के वो स्टेज होती है
जहां सिर्फ एक एक सेकंड, मिनट नहीं बल्कि एक एक सेकंड काउंट करती है। ये जितना मैंने अभी इसमें बताया, उसको ब्रीदिंग चेक करना है, उसकी सर्कुलेशन चेक करना है, या एयरवे को क्लियर करना, ये जितना सिस्टम है इसके लिए मिनट्स नहीं होती, इसके लिए मैक्सिमम 10 सेकंड्स का टाइम होता है। 10 सेकंड के अंदर ही आपने उसे चेक कर लेना है, जीभ को देख लेना है कोई अंदर तो नहीं है, या कोई भी इस तरह की ऑब्स्टेकल है उसे क्लियर करना है। तो ये 10 सेकंड मैक्सिमम 10 सेकंड्स में चेक करके और ये सिस्टम को, सीपीआर सिस्टम को शुरू कर देना। अगर आप उसे 2 मिनट 4 मिनट ये चेक करने में ही लगाएंगे, देखने में लगा देंगे, तब तक तो व्यक्ति मर जाएगा, क्योंकि उसका हल्का फुल्का अगर रेस्पिरेशन चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। तो बिल्कुल एकदम से बंद हो जाएगा तो उसे दोबारा से चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब हार्ट के ऊपर प्रेशर करेंगे तो ये हार्ट की पंपिंग जो इस तरह से चलनी चाहिए वो ये स्लो है, तो जब बार बार उसको प्रेस करते हैं, बार बार हवा डालते हैं सिस्टम में, तो वो हमारे फंक्शन जो है दोनों के दोनों, ब्रीदिंग का और उसका पल्पेशन का, दोबारा से शुरू हो जाता है और व्यक्ति जीवित हो जाता है, बच जाता है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप बिल्कुल ये सिस्टम बंद हो चुके थे और उस समय देना शुरू करते हैं और उसके बाद हो सकता है अनलकी कि वो ना भी बचे, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। लेकिन एज ए फर्स्ट एडर हमें ये कोशिश करनी है, कभी ये नहीं, निराश नहीं होना, ये तो मर चुका या पहले ही मरा नहीं है, लेकिन पहले ही कहते तो मरा हुआ, इसको क्या सांस देना, इसको क्या सीपीआर देना। किसी व्यक्ति को मरा हुआ डिक्लेयर करना सिर्फ एक क्वालिफाइड डॉक्टर का ही काम है, कोई भी एक लेमैन या मेडिकल प्रोफेशन का व्यक्ति नहीं है, तो वो किसी को मरा हुआ डेड डिक्लेयर नहीं कर सकता। दिस इज लीगली ऑफेंस, क्लियर। तो हम तो ये मान के चलते हैं कि ये व्यक्ति जीवित है और इसे बचाने के लिए हमें क्या एफर्ट्स करने हैं, और यही 2 सिस्टम है जिनके बंद होने से, रुकने से व्यक्ति की डेथ जो है वो तुरंत हो जाती है या विद इन मिनट्स हो जाती है। इसलिए इस सिस्टम को चलाना या कंटिन्यू करना ये बहुत बहुत जरूरी है। अभी नेक्स्ट पॉइंट था कि हमें इमरजेंसी सिचुएशन कौन सी है। इमरजेंसी सिचुएशन आप देख रहे हैं, 3 इमरजेंसी सिचुएशंस को हम लेते हैं। सबसे पहला है, यानी अभी बताया कि सांस बंद हो जाता है या हार्ट बीट या बंद हो जाती है, तो वो इमरजेंसी है। बहुत ज्यादा खून बहना शुरू हो जाता है या अनकॉन्शियस स्टेज होती है, तो उसको हम इस सिस्टम में काउंट करते हैं। प्रायोरिटीज है, हम एक फर्स्ट एडर की क्या प्रायोरिटी रहनी चाहिए, ये बड़ा क्लियर है कि हमें उसको पेशेंट को देखना है, क्विकली चेक करना है, शांति से करना है, शोर नहीं करना, मतलब इस तरह से घबराहट नहीं होनी चाहिए, खतरे को देखना जैसे अभी बताया, और अपने आप को बचाना है, अपने आप को कभी खतरे में नहीं डालना और अपने आप को बचा के रखना है, और अपनी लिमिटेशंस का ध्यान रखना है। यह एक पॉइंट है लिमिटेशन। आपने हमारी लिमिटेशंस क्या है, कौन सी लक्ष्मण रेखा है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस क्या है कि हमें एज ए फर्स्ट एडर ही काम करना है, एज ए डॉक्टर काम नहीं करना। वी आर ओनली फर्स्ट एडर। डॉक्टर तो हॉस्पिटल में है, अपने जहाँ भी अपने हॉस्पिटल जो है वहां अवेलेबल है और वहां पर उन्होंने किसी व्यक्ति को, पेशेंट को बचाना है। तो फर्स्ट एडर का काम कुछ लिमिटेशंस होती है कि हमें व्यक्ति की जान को बचाने का काम करना है, वो काम नहीं करना कि जिससे व्यक्ति की हालत और ज्यादा सीरियस हो जाए, या जो नॉलेज हमें है नहीं, जो काम उस समय कोई जरूरी नहीं है, उस काम को हम करने लग जाए, वो काम बिल्कुल नहीं करना। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, हल्का सा कहीं से कोई कट लग गया है, उस ब्लीडिंग को बंद करना ये एक फर्स्ट एडर का काम है। डायरेक्ट प्रेशर से, इनडायरेक्ट प्रेशर जैसे भी उसको बंद कर सकते हैं, उसे करें। लेकिन जनरली जैसे आप देखते या सुनते हैं कि बहुत बड़ा कट लगा था हॉस्पिटल में, उसको इतनी स्टिचिंग लगे। अभी स्टिचिंग करना एक फर्स्ट एडर का काम नहीं है, घर से सुई धागा लेके उसको स्टिच करना ये एक फर्स्ट एडर का काम नहीं है। ये है हमारी लिमिटेशंस कि हमें उतना ही काम करना जितना हमें नॉलेज है, जितना एक फर्स्ट एड के अंदर बताया जाता है और जितना उस समय उस व्यक्ति के लिए जरूरी है। सेकंड है, फर्स्ट एड के अंदर किसी मेडिसिन का यूज नहीं करते। कुछ कहते हैं फर्स्ट एड में ये मेडिसिन, ये टेबलेट, ये कैप्सूल, वो चीजें। फर्स्ट एड के अंदर कोई मेडिसिन का यूज कभी आपने नहीं करना, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है। किसी को कोई एलर्जी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, आपको मेडिसिन के बारे में नॉलेज नहीं है। इन केस आपको बाय प्रोफेशन किसी व्यक्ति को नॉलेज है तो दे अलग बात है, लेकिन जब तक किसी को बाय प्रोफेशन या नॉलेज नहीं है तो वो व्यक्ति कभी किसी को मेडिसिन ना दे, खुद भी ना ले तो अच्छी बात है। ओनली पैरासीटामोल एक ऐसा साल्ट होता है जो कि सेफ काउंट करते हैं, उसे आप किसी भी
तकलीफ में, मे बी कि थोड़ा फीवर है, मे बी कि बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, थकावट फील करता है या इस तरह की है, तो पैरासीटामोल टेबलेट दे सकते हैं। और कोई टेबलेट का इस्तेमाल आप ना करें, ना ही कि रिकमेंड करें, ना ही किसी को दे कभी। एम्बुलेंस का कॉल करें, जैसे 108 हमारा नेशनल नंबर है एम्बुलेंस के लिए, आप उसे बुलाइएगा, तुरंत पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक तरह से उसको बताइएगा। नोज ब्लीडिंग बड़ी कॉमन है। नोज ब्लीडिंग दो तरह से होती है, एक तो है कि हेड इंजरी हो जाती है, सिर में कभी कभी बहुत चोट आ जाती है और वो इंटरनल ब्लीडिंग होती है। इंटरनल क्या कि इस पोर्शन के अंदर कुदरत ने सेफ्टी के लिए बहुत बड़ी एक यहाँ पे स्कल बोन्स दी है, बहुत बड़ी एक मजबूत हड्डी लगाई है, ताकि ये नीचे का जो पोर्शन है, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, वो उस पर चोट ना ले। लेकिन फिर भी इसके टूटने से, ब्रेक होने के बाद अंदर की तरफ जो है इंजरी आ जाती है और वहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। जब भी ये इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो वो किसी ना किसी नेचुरल ओपनिंग से बाहर आता ब्लड। जैसे कि अगर ये हेड इंजरी है तो ये नाक से आएगा या कान से बाहर निकलता है। ऐसे ब्लड को अक्सर जो है, कई बार कुछ लोग वही है जिन्हें नॉलेज नहीं है, वो क्या करते हैं कि ब्लड बह रहा है, खून निकल रहा है, उसको देख के घबराएंगे और उस ब्लड को बंद करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही कई बार देखा कि नाक से अगर ब्लड आया तो उसको यहाँ कॉटन डाल लगा देते हैं, कान से है तो कॉटन लगा देते हैं और बंद करते हैं। बहुत सीरियस, खतरनाक है। कभी भी ऐसे केस में जब हेड इंजरी है और ब्लीडिंग नाक से या कान से है तो उसको बहने दे, इस कान से इसको निकलने, नीचे कर दे, इसको ऊपर की बजाय नीचे कर दे, निकलने दो। नाक से तो आशे बैठा दीजिए, निकलने दो, क्योंकि इसको अगर हम बंद कर देंगे ब्लड अंदर से क्लोटिंग हो जाएगा, क्लोटिंग बन जाएंगे। और ब्रेन में हेड इंजरी के केस में अगर ब्रेन में क्लोटिंग बननी शुरू हो जाती है, ब्लड बन जाते हैं, तो व्यक्ति का बचना बहुत मुश्किल होता है। सर्कुलेशन बंद हो जाता है, ब्लड वेसल्स बंद हो जाते हैं, ब्लड जो है वो सर्कुलेट नहीं करता और वो सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, व्यक्ति मर जाता है। बहुत बड़े ऑपरेशन होते हैं, बचता है नहीं बचता, वो बात की बात है, लेकिन कभी बंद नहीं करना, उसको बहने देना। उसके बचाव के लिए इतना कर सकते हैं कि कोल्ड कंप्रेशन, कोई भी कपड़ा, टॉवल, नैपकिन भिगो के ठंडे पानी में उसके ऊपर रख दे, पानी डालिएगा। जब बॉडी के उस पार्ट में ठंडक लगेगी तो अंदर से जहां से ब्लीडिंग हो रही है ऑटोमेटिकली बंद होनी शुरू हो जाएगी अंदर से। ये इंटरनल ब्लीडिंग है जो बहुत सीरियस होती है। ये नोज ब्लीडिंग में एक होता है गर्मी की वजह से, जो से नोज ब्लीडिंग होती है कि गर्मी में काम करते हैं, खासतौर से छोटे बच्चों के अंदर हो जाते हैं कि वो स्कूल में या कहीं पे भी खून बहने लग जाता है। उस केस में उसको इस तरह से बिठाए, आगे की तरफ ब्लड को बहने दे और उस पेशेंट को कहना कि मुंह से सांस ले, नाक से रेस्पिरेशन सांस को ना ले। जैसे ऐसे लेंगे तो ये ब्लड अंदर की तरफ फिर विंड पाइप पे चले जाएगा। तो मुंह से सांस लेना चाहिए उस समय, और पानी सिर पे डालते रहिएगा, ठंडा पानी डालिएगा, कोल्ड कंप्रेशन दीजिएगा। उससे बंद नहीं होता तो जो नाक का आगे का हिस्सा सॉफ्ट वाला है नॉस्ट्रल, इसको जोर से ऐसे 8-10 मिनट दबा के रखिएगा, ब्लड बंद हो जाए। ध्यान रखिएगा सिर्फ नोज ब्लीडिंग की है, इंजरी की बात में नहीं है। इंजरी अगर है, बाय द इंजरी है, इंजरी का से कैसे पता लगा, उसको पेन है, दर्द है, 10 मिनट 15 मिनट के बाद उसको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, इसका मतलब है हेड इंजरी है। अगर वैसे गर्मी के मौसम में जैसे अक्सर बच्चों को चोट आ जाती है, कभी कभी कुछ बच्चों में या किसी के अंदर हैबिट होती है नाक में उंगली डालते, नेल है लग जाता है, ये जो पोर्शन है अंदर इनसाइड बहुत जो प्रेशर रहता है यहाँ पे, और वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जब नाखून लग जाता है, यहाँ से ये गर्मी की वजह से ये फट जाती है, तो ब्लड आना यहाँ से शुरू होता है, वो कहीं इस साइड से नहीं आता, ये पोर्शन। तो आप उसको डायरेक्ट प्रेशर से इस तरह से बंद कर सकते, सीधा यहाँ से दबा दीजिएगा, बंद हो जाएगा नोज ब्लीडिंग। ये चीजें नहीं करनी जो अक्सर हम स्कूल में बच्चों को टीचर्स करते हैं कि बच्चे को बैठा देते हैं, ऐसे झुका देते हैं, नहीं करनी। वापिस विंड पाइप में ब्लड जाएगा, पीछे की तरफ बिल्कुल भी नहीं करना, ऐसे नहीं झुकाना। आंख में कोई भी चीज गिरती है, कोई भी चीज हो सकती है, मे भी एसिड गिर जाता है, मे भी कोई मच्छर आ जाता है, मे भी कोई धूल मिट्टी चली जाती है, कभी उसको जोर से नहीं करना। छींटे लगाइए पानी के, से निकल जाएगा। पानी का खुला बर्तन, बकेट टब वगैरह में पानी, आंख को डुबो दे, आंख को पानी के अंदर खोलना बंद करना शुरू करे, ऐसी कोई भी चीज होती है पानी के अंदर निकल जाएगी। और फिर भी नहीं निकलती है तो पैडिंग रखे, सिंपल से कपड़ा फोल्ड करके रखे आंख में और उस पर ड्रेसिंग कर। बिल्कुल छोटा बच्चा है, फायदे छोटा बच्चा है, तो उस केस में बच्चा नहीं मानेगा, हम तो समझ जाएंगे, लेकिन बच्चा नहीं मानता है तो वो बार बार मचलेगा, उसके हाथों को पीछे बांधो, पीछे हाथ बांध दीजिए, हॉस्पिटल ले जाएगी जल्दी से। तो बच्चा नहीं मानता ना, उसके हाथों को पीछे बांध दीजिए,
तो क्योंकि जितना आंख के अंदर बार बार हम उसको रगड़ते हैं उतनी ज्यादा उसके इरिटेशन हो जाएगी। कई मच्छर ऐसे जहरीले होते हैं कि मच्छर आंख के अंदर पॉइजन फैल जाता है, आंख बिल्कुल खराब हो सकती है, या कोई नुकीली चीज है वो आंख के अंदर जा सकती है, जख्म मर जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सीडेंट के केस में जनरली ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। जब भी एक्सीडेंट होता है दो तरह की इंजरी होती है, एक होता है ब्लीडिंग जब खून बहता है, और दूसरा होता है फ्रैक्चर केस में। दोनों को बड़ा शॉर्ट में ले रहा हूं। ब्लीडिंग जब भी होती है, जो हमारे ब्लड वेसल्स है दैट इज कॉल्ड आर्टरीज और वेन्स एंड कैपिलरीज, तीन तरह की ब्लड वेसल्स होते हैं। आर्टरीज होती है जो ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो हार्ट टू बॉडी के डिफरेंट पार्ट के अंदर ब्लड को कैरी करती है, दैट इज कॉल्ड आर्टरीज। इसका कलर ब्राइट रेडिश चमकीला लाल होता है, प्रेशर के साथ ऐसे झटके से निकलता है, जब भी कभी कट जाएगी तो वो कंटिन्यू नहीं बल्कि ऐसे तेजी से ऐसे निकलता रहता है। उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उसके बाद ये ब्लड वेसल्स यानी आर्टरी जो है डिवाइड हो जाती है, छोटी छोटी बहुत बारीक कैपिलरीज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड कैपिलरीज। यहाँ पे शरीर के हर हिस्से के अंदर जो टिश्यूज है, सेल है, वो अपने ऑक्सीजन लेते रहते हैं, उस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं और वो ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है और फिर से इकट्ठा होता है दाएं बाएं से, इधर से छोटी छोटी कैपिलरी से, और वो वेन्स बन जाती है। और वेन जो टुवर्ड्स हार्ट की तरफ आती है, वो उसका कलर जो है ऑक्सीजन खत्म होने से, कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्स होने से उसका कलर डार्क हो जाता है, जस्ट लाइक डार्क रेडिश हो जाएगा, मैरून कलर हो जाता है। और उसमें वो जब भी कटती है तो कंटिन्यू ब्लड बहता रहता है, लगातार बहता है, कैपिलरी से ऊजिंग से निकलता रहता है। तो ये हमारी ब्लड वेसल्स होती है। जब ये ब्लड वेसल्स कट जाती है किसी चोट से, वेपन से लगने से, ब्लड बाहर आना शुरू हो जाता है, इनकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ब्लीडिंग, वुंड्स, घाव, जख्म, इस तरह से होते हैं। हेमरेज, हेमरेज में दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल हेमरेज, एक एक्सटर्नल हेमरेज। इंटरनल हेमरेज है कि जैसे अभी मैंने हेड इंजरी में बताया कि जो ब्लड अंदर ही निकल इकट्ठा हो रहा है और लेकिन किसी ओपनिंग से वो कुछ टाइम के बाद बाहर निकलता है। ऐसी कभी कभी चेस्ट में लग जाती कोई चीज इनसाइड, तो वो ब्लड जो है कफ के साथ बाहर आता है, ब्राइट रेडिश कलर का होगा, कफ आएगी, एयर होगी, बबलिंग होंगे उसमें। पेट में लगने से कभी कभी वो वोमिटिंग के साथ बाहर निकलता है, कलर चेंज होता है, कॉफी कलर में आ जाएगा। ब्लैडर पे लगने से यूरिन से पास होता है। तो ऐसे केस में भी वही ठंडक पहुंचाइएगा उस जगह पे, पोर्शन पे ठंडा कपड़ा वगैरह रख के, तो उससे उसमें क्या होगा कि इन साइड में ठंडक लगेगी तो ब्लड वहां से निकलना बंद हो जाएगा। और वो जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है बहुत सीरियस होती है, उसको जल्दी से जल्दी ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है, क्योंकि अंदर ज्यादा ब्लड निकलने से या किसी ऑर्गन के इंजर्ड होने से व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। हमें नहीं मालूम कि वो लंग्स पे है या हार्ट पे या किस जगह पे ब्लीडिंग हो रही है, हमें तो दिखाई बाहर दे रहा कि ब्लड बाहर निकल रहा है, तो सीरियस कंडीशन होती है। तो ब्लड को अदरवाइज जो बाहर निकलता है, मतलब जो कि किसी कट लगने से होता है, उसको हम बंद करने के दो तरीके होते हैं। इमीडिएट पेशेंट को लेटा दें और उस पोर्शन को कुछ अपलिफ्ट कर दें, हार्ट से ऊपर की तरफ कर दें। इसे ऊपर करने से ब्लीडिंग यहाँ से अगर हो रही है तो कम हो जाएगी, नीचे जाएगा तो ब्लड ज्यादा निकलेगा, ग्रेविटी का सिस्टम। ऐसे करें जैसे अभी इसमें दिखाया डायग्राम में, और उसके बाद तुरंत उसमें ड्रेसिंग, जो भी जैसा जख्म है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो मटेरियल है उसको प्रॉपर ड्रेसिंग कर दे, गोज पीस वगैरह वगैरह जो भी है उस पर लगा सकते हैं, और बांध उसको ड्रेसिंग करके इमीडिएट कहीं जैसा भी केस है उसके अकॉर्डिंग हॉस्पिटल में ले जाएंगे। अगर ब्लड जम गया, भाई आपने देखा कि ब्लड तो जमा हुआ वहां पे कुछ टाइम है, ब्लड की एक अपनी क्वालिटी है, जब भी एयर के कांटेक्ट में आता है प्लेटलेट की वजह से ब्लड जो है वो जमना शुरू हो जाता है, फ्लोटिंग हो जाते हैं। अगर कुदरत ने सिस्टम ना बना होता तो एक बार कट लग जाता, ब्लड बंद ही ना होता। तो सिस्टम मैंने बताया बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बड़ा बचाव के लिए परमात्मा ने हमारा सिस्टम ऐसा बनाया कि हमारी सुरक्षा बचाव ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेटिकली होती रहे बिना कुछ किए। तो ब्लड जब जम जाता है, क्लोट बन के, उस जमे हुए ब्लड को, क्लोट को कभी आपने रिमूव नहीं करना, हटाना नहीं है, क्योंकि दैट इज नेचुरल बैंडेज। वो ब्लड को बाहर नहीं आने दे रहे और अंदर इन्फेक्शन नहीं होने दे रही, जर्म को अंदर नहीं जाने देता। तो उसी को कवर करके ही आप अपने हॉस्पिटल डॉक्टर तक पहुंचा सकते हैं। सेकंड मेथड होता है जिसे बहुत समझ के लेते हैं, इसको जनरली यूज अगर आप करें तो बहुत सोच समझ के करेंगे। अच्छा, एक और चीज है कि जब भी हम इसको ब्लड को बंद करते हैं तो इस तरह से किसी भी जो भी हमारे पास अवेलेबल बैंडेज है, कपड़ा है, जस्ट लाइक मैं हैंकी का ही यूज कर रहा हूँ, फर्स्ट एड में एक रिसोर्सफुल होना, टैक्टफुल होना बहुत जरूरी है। कहीं से ब्लीडिंग है तो इस तरह से एक पैडिंग बना ले, इन केस कोशिश करें कि जो भी कपड़ा बैंडेज यूज करते हैं वो साफ हो, नीट एंड क्लीन हो। अगर इस हैंकी का ही मैं यूज कर रहा हूँ तो इसको भी सोच समझ के, इनसे सोच का मतलब ये बार बार मैं जब टच करता हूँ तो गंदा हो जाता है, यूज करूंगा तो इसको इन साइड का जो पोर्शन है जो शायद अभी तक
टच मैंने नहीं किया वो इनसाइड का पोर्शन देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इकट्ठा करेंगे और करने के बाद उस जगह पे जहां से ब्लीडिंग है उसको टाइट से हम उसको बांध देंगे, ऊपर से किसी और बैंडेज से टाइट से बांध देंगे तो ये ब्लीडिंग बंद होगी। ये पैडिंग जो है ये जख्म से बड़ी होनी चाहिए, लार्ज, थोड़ा सा बड़ी रखिए ताकि वो पूरी तरह उसको कवर कर सके। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लीडिंग जो है बहुत ज्यादा हो रही, आप एक पैडिंग रखते हैं, बांध दिया, ब्लड बंद नहीं हो रहा, उसके बाद देखते हैं भीग गया, ब्लड के अंदर भीग गया और ब्लड फिर से निकलना शुरू हो गया। ये नहीं करना। जनरली जो अक्सर करते हैं कि इस पैडिंग को गंदी हो गई, इसको फेंक दिया और दूसरी एक और पैडिंग वहां पे रख दी और उसको ड्रेसिंग कर दिया। नहीं, अगर आप देखते हैं कि यहाँ से अभी बंद नहीं हुआ तो अगर सेकंड पैड उसके ऊपर यूज करते हैं तो इसी के ऊपर यूज करें, इसको हटा के नहीं करना, इसी के ऊपर दूसरा लगा रहे। थर्ड भी इसके ऊपर यूज कर सकते हैं। जितनी ज्यादा ये मोटी तय बन जाएगी उतना प्रेशर बनेगा और ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। अगर मैं इसको फर्स्ट पैडिंग को अगर यहाँ से रिमूव करता हूँ तो जो थोड़ी सी क्लोटिंग बनी है वो एकदम से फिर से अनकवर्ड हो जाएगी और ब्लड फिर तेजी से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से पहले लगाया हुआ कपड़ा या गॉज पीस या जो भी पैडिंग है उसको अपने हटाना नहीं है। अगर ब्लड नहीं बंद होता तो उसी के ऊपर दूसरा और तीसरा रख के टाइट से उसको बांधेंगे तो ब्लड बंद हो जाएगा। सेकेंड जो तरीका है एक और है कि अगर ऐसे बंद नहीं हो, वो होता है आमतौर पर जब कभी हमारा पोर्शन आगे से कट जाता है, जैसे कि हाथ मशीन में आने से या पाँव आने से कट गया, बिल्कुल कट गया, एम्पुटेशन, उस केस में यहाँ से ब्लड बहुत तेजी से निकलेगा। अगर इसको यहाँ से इस तरह से बांधने की कोशिश करेंगे तो वो बंद नहीं होता, जनरली नहीं बंद होता, ये भीग जाएगा और फिर से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि प्रेशर जो है हार्ट की तरफ से बहुत कम तेजी से प्रेशर बनता है और ब्लड निकलेगा। इसका एक तरीका है जिसे हम इनडायरेक्ट प्रेशर कहते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखना है जो बातें दो मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज जो है फर्स्ट एड की बजाय प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कि इसमें है कि उससे टुवर्ड हार्ट, दिल की तरफ, एक ऊपर की तरफ, वहां पे जोर से टूर्निकेट अप्लाई करें। टूर्निकेट बांधने का कपड़ा कोई भी इस तरह से हम जो अवेलेबल होगा उसको हम जोर से यहाँ से टाइट से बांधें। जब इसको थोड़ा टाइट बांधते हैं तो इसका प्रेशर बनने से नीचे की तरफ ब्लड आना बंद हो जाएगा, आर्टरी जो है प्रेस हो जाएगी और ब्लड नीचे नहीं रहेगा। ऑटोमेटिकली प्रेशर नहीं होगा तो आप इस जगह को कवर करके प्रॉपर ड्रेसिंग कर देंगे तो ब्लड निकलना वहां से बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे याद रखने के लिए बहुत सावधानी क्या है, ये जो टूर्निकेट अप्लाई करते हैं बड़े वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके लिए दो चीजें हैं। नंबर वन कि बॉडी के किस पार्ट पे ये टूर्निकेट अप्लाई करना है। नंबर वन है कि ये टूर्निकेट हम इसे दोनों हाथों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं या नीचे की तरफ लेग्स पे अप्लाई कर सकते हैं। बॉडी के किसी और पार्ट पे इस टूर्निकेट को अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे किसी की हेड इंजरी है, बहुत तेज खून बह रहा है, आप सोचे हार्ट इधर है, ये यहाँ है, कहाँ लगाए, बंद यहाँ लग सकता है ये टूर्निकेट। और ये टूर्निकेट अप्लाई अगर कर दिया तो उसे फर्स्ट एड नहीं लास्ट एड जरूर मिल जाएगी। ओके, और हमने एज ए फर्स्ट एड ही देनी, लास्ट एड नहीं देनी। एक तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये हम यहाँ लगा सकते हैं, बॉडी के कहीं छाती पे, पेट पे या कहीं और अप्लीकेबल नहीं है। सेकंड चीज, अभी देखिए मैं थोड़ा बताया था, मैं बहुत स्पीड में चल रहा हूँ, टाइम मुझे कम है, अदरवाइज ये तो बहुत लेंथी कोर्स है। बॉडी के हर हिस्से को एक्टिव रहने के लिए, सेल को एक्टिव रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और ऑक्सीजन जो है ना डायरेक्ट बाहर से नहीं बल्कि ब्लड के थ्रू मिलती है। यहाँ ब्लड की सप्लाई हमने बंद कर दी है, टूर्निकेट लगा दिया, आगे सप्लाई नहीं जा रही है, तो ये इस पोर्शन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जा रहा। तो 8-10 मिनट तक तो ये पोर्शन तो है ठीक रह जाएगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर कुछ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कुछ निकल चुका है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये यहाँ दर्द होना शुरू हो जाएगा, यहाँ नेल नीले पड़ जाएंगे, पीला पड़ जाएगा और सुन जैसे हो जाता है ऐसा हो जाएगा। और बहुत देर तक अगर हमने कर दिया, गांव से पीजीआई में लेके आ रहे 1 घंटे तक किसी ने इसको लूज नहीं किया तो वहां तक पहुंचते पहुंचते ये पोर्शन बिल्कुल डेड हो जाता है, जिसको गैंग्रीन कहते हैं, गैंग्रीन हो गया और उसका कोई इलाज नहीं बल्कि उसे काटना पड़ता है। तो ऐसी भी नौबत ना आए किसी को फर्स्ट एड देते वक्त उसका हाथ या पाँव काटना पड़े, इसलिए इसमें सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। इसको मैक्सिमम 10 मिनट रखेंगे, इससे ज्यादा इसको नहीं रखना। बायदे जरूरत पड़ती है विद इन 10 मिनट के अंदर अंदर आप इसे लूज कर दें। लूज करते हैं, अगर यहाँ से ब्लड फिर से निकलना शुरू हो जाता है, ये प्रेशर है, इन टाइम आपने ड्रेसिंग तो करी है लेकिन फिर से निकलता है तो उसको फिर टाइट कर दें और हर 10 मिनट के अंदर अंदर उसे कुछ आधा मिनट लूज करेंगे फिर टाइट कर देंगे ताकि ब्लड की सप्लाई नेक्स्ट अगले पोर्शन में आती रहे, वो पोर्शन डेड या गैंग्रीन ना हो। ये 2 बातें आपको याद रखनी है। कभी कभी अक्सर इसको हम थोड़ा सा
डिस्करेज करते हैं इस पॉइंट को, वो इसलिए करते हैं कि हम बता देते हैं कि जी हमें ये बताया गया था, लेकिन वो सेकंड वाली बात भूल जाएंगे कि इसको लूज भी करना, वो भूल जाते हैं कि इसे लूज करना भूल जाते हैं। कई बार घबराहट में जल्दबाजी के अंदर ये भूल जाएंगे, तो वो पोर्शन क्या होता है कि डेड हो जाता है। इस चीज का भी आपने याद रखना। फ्रैक्चर नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट चीज जो इंजरी के अंदर, एक्सीडेंट के अंदर होते हैं। फ्रैक्चर मीन्स हमारे टोटल जो शरीर के अंदर टोटल बोन्स है 206 हड्डियां हैं, अलग अलग पोर्शन है, जैसे कि स्कल का हिस्सा है, इसके अंदर 8 है या 14 है, कोलर बोन है तो क्लेविकल बोन, रिब्स है 12 प्लस 1 चेस्ट के अंदर है, जैसे 33 पीसेज जो है वो वर्टेब्रास हमारे इसमें बैकबोन के अंदर है, एक हाथ में 31 है, 31 इधर, 31 लेग्स के अंदर, ये टोटल करते हैं तो 206 हमारी टोटल बोन्स होती है। डिफरेंट शेप है, कोई फ्लैट है, कोई राउंड है, कोई कैसी है। एंड सबसे लंबी हड्डी हमारे शरीर के अंदर है, दैट इज कॉल्ड थाई बोन फीबर। हमारे टोटल हाइट का अबाउट 1/4 हिस्सा होता है, तो ये थाई बोन होती है। तो ये जब कोई बॉडी पे बहुत भारी चोट लग जाती है, बहुत कोई चोट लगती है प्रेशर के साथ, तो अंदर की जो बोन्स है जितनी भी है वो कहीं ना कहीं से ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। 2 पीसेज हो सकता है, क्रैक भी हो सकती है, डिफरेंट शेप हो सकती है। तो इसमें जैसे डायग्राम में दिखा, जो नीचे का आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सिंपल फ्रैक्चर। हड्डी टूटने के बाद जो बिल्कुल एज इट इज बॉडी के अंदर पड़ी रहती है उसको सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं, क्लोज फ्रैक्चर भी कहते हैं। सेकेंड है कंपाउंड फ्रैक्चर, जो ऊपर की पिक्चर में आप देख रहे हैं कि इसमें हड्डी टूटने के बाद एंड जो है वो बड़े शार्प हो जाते हैं, वो बाहर की तरफ आ सकते हैं, मूवमेंट करते हैं। जनरली जब किसी को चोट आती है कभी कभी हम उसको कहते हैं मूवमेंट करके देगा, हाथ हिला के दिखाएगा, पाँव मूवमेंट करेगा, खड़े होकर दिखाएगा, ऐसे गलतियां करते हैं। और हड्डी अगर टूटी है और किसी को खड़ा करेंगे, टांग की हड्डी टूटी है तो जैसे खड़ा होता है उसकी हड्डी बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो कभी भी ऐसा नहीं करना, जो बाहर आती है विजिबल रहती है उसको कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर। ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, पहले से ज्यादा प्रॉब्लम होगी, यानी कि ब्लीडिंग भी है, फ्रैक्चर भी है। थर्ड इज कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। कॉम्प्लिकेटेड नाम से ही कॉम्प्लिकेटेड है। टूटी हड्डी इंटरनल किसी ऑर्गन का, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ब्रेन है, हमारा हार्ट है, लंग्स है, इस तरह से किसी ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसको इंजरी कर देता है। टूटने के बाद वो हड्डी उसको अंदर ही इंजर्ड कर देती है, या कॉम्प्लिकेटेड इकट्ठी हो जाती है। रिब्स टूटने के बाद एक सिरा बाहर की तरफ आ जाए, एक एंड उसका अंदर हार्ट में चला जाए या लंग्स में चला जाए, कॉम्प्लिकेटेड बहुत सीरियस हो गया, तो ये भी एक फ्रैक्चर होता है। और एक और भी होता है जो आमतौर पर छोटे बच्चों में होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। बच्चों की हड्डी फ्लेक्सिबल है, टूटने की बजाय वो ऐसे थोड़ी सी बेंड हो जाती है, हल्की सी करेक्ट भी हो जाती है। तो ये टाइप्स है फ्रैक्चर की। अब एज ए फर्स्ट एडर टाइप्स में जाना थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि क्या क्या है, हड्डी बाहर आई या अंदर है, इसलिए थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। बाकी एज ए फर्स्ट एड हमें क्या करना है, उसके वक्त हमें सबसे पहली बात है कि पेशेंट को हिलाना बिल्कुल भी नहीं, उसकी मूवमेंट नहीं करनी। जो जनरली कभी कभी हम उसको जब चोट के बाद क्या करते हैं, कहते हैं हाथ को ऊपर करते हैं या टांगों को करते हैं, हिलाते हैं या खड़ा करते हैं, या अक्सर कोई बच्चा गिर जाता है तो कहते हैं ओहो शाबाश तू तो बहादुर बच्चे, जरा दौड़ के दिखाइए, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, उसको स्प्रेन आ गई है, फ्रैक्चर हो गया, हम उसे बहादुरी का तगमा देकर उसे दौड़ा देते हैं, और वो क्या होगा, हड्डी टूटी गई, उस वक्त पता नहीं लगा हड्डी बाहर भी आ सकती, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो ऐसे नहीं करना। जैसे इसको पेन फील हो रहा है, आप उसको आराम से कंफर्टेबल लेटा के उसको चेक करिएगा क्या उसको फ्रैक्चर तो नहीं है, डिसलोकेशन तो नहीं है। अब फ्रैक्चर के केस के अंदर ये होता है, जनरली आप देखते हैं कि वहां पे पेन शुरू हो जाएगा, बहुत ज्यादा दर्द होता है, स्वेलिंग आएगी, डिफॉर्मिटी हो जाएगी, लॉस ऑफ पावर हो जाता है, अननेचुरल मूवमेंट होती है, हमारा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है पोर्शन। ये सभी चीजें हम नोट करते हैं अगर कहीं ऐसा है तो। उसके बाद डायग्नोज हमने किया कि ये फ्रैक्चर केस है, एज ए फर्स्ट एडर क्या करेंगे, आराम से लेटाना है, उस पोर्शन को कोई अवेलेबल मटेरियल से हम उसको इस तरह से बांधेंगे कि उसकी मूवमेंट बंद हो जाए, उसकी जो हरकत है, हाथ जैसे ये हिल रहा है, हिलेगा तो उसकी टूटी हड्डी सिंपल फ्रैक्चर कंपाउंड और कॉम्प्लिकेटेड बनेगी, दर्द ज्यादा हो जाएगा। उसको कंट्रोल करने के लिए उसकी मूवमेंट को तुरंत बंद करेंगे, इमोबिलाइज कर देते उस पार्ट को। वैसे फर्स्ट एड के अंदर मटेरियल है, फर्स्ट एड बॉक्स है या सामान है, तो हमारा सप्लिमेंट्स होती हैं, और सप्लिमेंट्स का भी आप यूज कर सकते हैं। सप्लिमेंट इसका आप यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा जनरली बाजू फ्रैक्चर के अंदर इस तरह से लगा देते हैं, ठीक है, इसको यूज करते हैं और इसको सॉफ्ट कर लेते हैं, कोर्नर पे कोई कॉटन या कोई भी बैंडेज कपड़े से
इसको बड़े आराम से इसको इस तरह से लगाएंगे ताकि ये चुभे ना, दर्द ना करे, ठीक है, यूज करेंगे। अगर नहीं है, यहाँ फर्स्ट एड में मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ, ये सब चीजें अवेलेबल नहीं होती, हर जगह पे नहीं हो। मे भी आपका इंस्टीट्यूशन है, कोई कॉलेज है, स्कूल है, फैक्ट्री है, घर है, हम ये सामान रख सकते हैं, होता भी है, लेकिन हर जगह पे नहीं होगा। उस समय क्या करेंगे, उस समय व्यक्ति के लिए इतना सिंपल सा है कि टूटा हुआ पोर्शन जो है उसके साथ को देख के किसी हेल्दी पार्ट के साथ ही उसको सपोर्ट लगा देते हैं, जस्ट छोटा सा गैप। ये उंगली अगर टूटने के बाद नीचे लटकी हुई है, अब इसके लिए सपोर्ट क्या करेंगे, ये उंगल ठीक है, मैंने इसके साथ लगाया और एक किसी कपड़े से, रुमाल से इसको यहाँ पे बांध, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ एक छोटा सा कपड़े से ही बांध, कुछ भी नहीं है, जो भी मिले, मैं शूज डाले हैं उसका लेसिस निकाल के लेसिस से ही बांधना ही है ना। तो ये क्या हुआ, इस टूटी हुई हड्डी के साथ, इस फिंगर के साथ इसको लगा दिया, तो ये इसने इसको एज ए सप्लिंट काम कर रही है वाली, और सप्लिंट के तौर लिया, थोड़ा सा सहारा देंगे, स्लिंग देंगे और पेशेंट को हॉस्पिटल में देंगे। भाई जी यहाँ से कहीं फ्रैक्चर हो गया, हाथ और पांव में होता है ये सप्लिंट का यूज, बाकी कहीं नहीं होता। यहाँ कहीं फ्रैक्चर है, इधर 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 कहीं होगा, वेरी सिंपल, उसको एक यहाँ से किसी बैंडेज से उसको इस तरह से गले में बांध दे और ये सपोर्ट मिल जाएगी, ये बाजू जो है बिल्कुल चेस्ट के साथ हो जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रिंसिपल है फ्रैक्चर, दो बैंडेज करने, जहां हड्डी टूटी है इससे नीचे की तरफ दोनों एंड पे बांध देंगे तो ये सीधे रहेगी, सपोर्ट सीधी रहेगी। इसी तरह से जब मैंने इसको चेस्ट के साथ लगा दिया, मरीज की चेस्ट के साथ उसके बाजू को टूटी हड्डी को लगा दिया, और यहाँ से फ्रैक्चर इधर कहीं हो सकता है, एक बैंडेज को ऊपर की साइड पे, एक बैंडेज को नीचे की साइड पे टाइट करके जब हम बांध देंगे तो ये बाजू उस चेस्ट की सपोर्ट मिल जाएगी और ये बाजू को ज्यादा अलग से मूवमेंट नहीं होगी। अगर इसको सपोर्ट नहीं देंगे तो ये बाजू हिलता रहेगा और वो पेन ज्यादा हो जाएगी, तकलीफ ज्यादा होगी। एक लेग के अंदर फ्रैक्चर है, दूसरी लेग के साथ उसको सीधा करके बांध दीजिए, और बीच में जो जगह है उसके अंदर कोई भी कपड़ा है, सॉफ्ट कोई भी चीज इस तरह से चादर, बेडशीट वगैरह को रोल करके डाल देंगे और उसको टाइट करके बिलो फ्रैक्चर है वो फ्रैक्चर बांध देंगे, ऊपर नीचे के जॉइंट्स को बांध देंगे और जो टांगे हैं वो बिल्कुल सीधी रहेगी। वेरी सिंपल, कि इस तरह से हम बॉडी के ही हेल्दी पार्ट को सहारा लगा के उसको बांध देंगे, हमें इन चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, इन केस अगर ये चीजें अवेलेबल है फिर इसका यूज जरूर करेगा ताकि इससे और ज्यादा अच्छी तरह से सपोर्ट मिल सके। एक उसमें घाव में एक पॉइंट और ऐड करूंगा, कभी कभी आप देखते हैं कि जख्म जो होता है उसके अंदर कुछ चीज लग जाती है, जैसे कहीं पे भी कोई चीज है, कोई नेल है, कांच के टुकड़ा है, एक्सीडेंट पे कुछ और चीजें लगी है। पहली बात है कि यहाँ पे इस पोर्शन में, हाथ या पाँव, चेस्ट के अंदर नहीं, इधर कोई चीज लगी हुई है, उस फॉर्म बॉडी को आप बाहर निकाल दें। जब तक शरीर के अंदर कोई भी चीज लगी रहेगी तो हमारा ध्यान भी रहता है और पेन ज्यादा होती, तकलीफ ज्यादा रहती है। अगर उसको हम निकाल देते तो पेन खत्म हो जाती है, बहुत आराम मिलता है। अगर नहीं निकलती, भाई कोई चीज बहुत गहरी चली गई, कोई पिन है या फिर नेल है या कोई भी है या कांच शीशा है अंदर चला गया, बहुत ऊपर है, बाहर इतना है, आप उसे पकड़ नहीं पा रहे, निकल नहीं पा रहा, तो उस केस में क्या करेंगे, इस तरह से एक रिंग बनाएंगे। एक रिंग मैंने इसी तरह की किसी बैंडेज से बनाया है, जस्ट इसको इस तरह से रोल किया है और एंड में इसको बीच में से निकाल के एक रिंग पैड इसको बना दिया। ये रिंग पैड बनाने के बाद कहाँ है, उस जगह, इसको तो ध्यान रखिएगा, अंदर से जो खाली गोल हिस्सा आप देख रहे हैं इसको थोड़ा बड़ा रखिए जख्म से, इसकी ये जो मोटाई है इसको थोड़ा ज्यादा रखिए, जो चीज इतनी बाहर है बॉडी से, जहां पे जख्म है उसके ऊपर आपने इसको रख दिया। रखने के बाद वो जो भी फॉर्म बॉडी है बीच में आ जाएगी और इसके ऊपर दूसरी बैंडेज यहाँ से इसको टाइट से बांधेंगे तो इससे ब्लीडिंग भी बंद हो जाएगी और उसके अंदर इंफेक्शन होना, जर्म जाने भी बंद हो जाएगी। क्योंकि ऊपर जब ये बैंडेज का यूज करते हैं तो इसका प्रेशर इस रिंग पे जाएगा, इस तरह से इस रिंग के ऊपर जाएगा, ना कि बीच में जाएगा, और जब प्रेशर यहाँ रिंग पे जाएगा तो वेन्स आर्टरीज प्रेस हो जाती है और ब्लड बीच में आना बंद हो जाएगा। कवर हो गया, इन्फेक्शन से बचाव रहेगा, जर्म मिट्टी वगैरह अंदर नहीं जाएगी, और इसका प्रेशर बीच में नहीं जाएगा, जो चीज जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में उतनी रहेगी, बॉडी के अंदर और ज्यादा अंदर नहीं जाएगी, जिससे पेन या तकलीफ नहीं पड़ेगी। ऐसा ही जब शरीर के अंदर इस पोर्शन में, चेस्ट में, स्टमक में, इधर कहीं कोई चीज लग जाती है, एक्सीडेंट के केस में हो सकता है, या जैसे अभी मैंने बताया नोइंगली कोई किसी को मार देता है और वो बॉडी के अंदर इस शेप में ऐसे लगी हुई है,
उसको निकालना बिल्कुल भी नहीं है, जैसे बता निकालने से ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए भी ऐसा ही करेंगे, एक रिंग पैड बनाया, ये अगर यहाँ लगी है तो रिंग पैड थोड़ा टाइट रखिएगा इसको, और इसको बना के इसके ऊपर डाल दो। अगर हम इसको नहीं रखेंगे और ऐसे ही अगर उसको पेशेंट को ले जाएंगे हॉस्पिटल में, तो ये मूवमेंट करता रहेगा, और मूवमेंट जब हिलेगा तो ये साइड से कट और कर देगा, ब्लीडिंग भी शुरू हो जाएगी और ये बाहर भी गिर सकता है। जब आप इसको इस तरह से ऊपर से रिंग बना देंगे, इसे क्या हुआ, एक बैंडेज यहां और एक नीचे पूरी तरह से इसे चेस्ट के साथ लगा दो। ये इस रिंग से इसको सपोर्ट मिलेगी, इसकी मूवमेंट नहीं होगी। साइडों से इस रिंग आ जाएगा तो जो साइड से थोड़ा ब्लीडिंग आ रहा है वो भी बंद हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और जब यहां से और यहां से दो बैंडेज को हम इस चेस्ट के साथ ऐसे बांध लगाएंगे तो इसको पूरी सपोर्ट मिलेगी, फुल सपोर्ट आ जाएगी, और ये इसकी मूवमेंट बंद हो जाएगी, और ये बिल्कुल ऐसे सीधा रहेगा जब आप इसे हॉस्पिटलाइज करें। ये इस रिंग का यूज हम इस तरह से कर सकते हैं। लू लगने में बड़ा है कि उसे 6 मिली कहेंगे, ठंडे जितने टाइट कपड़े हैं लूज कर देंगे, टाई बेल्ट वगैरह, सिर पे ठंडा पानी डालेंगे, हवा करेंगे, थोड़ा उसको ठंडक पहुंचाएंगे तो ये ठीक हो जाता है। दूसरे कोई क्वेश्चन यहां तक इसमें नेक्स्ट शुरू करते हैं। एनी क्वेश्चन प्लीज, कोई ऐसा पॉइंट जो अभी तक बताया इसमें से आपको थोड़ा क्लियर नहीं है? थोड़ा सा हार्ट अटैक देखिए, हार्ट अटैक के केस में आप देखिए कि अभी हार्ट का फंक्शन क्या है, पंपिंग करता है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। और ये कभी कभी आप सुनते हैं हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक का होता है कि इसके अंदर ये देखिए, ये कोई ना कोई इसके अंदर इम्प्योरिटीज कोलेस्ट्रॉल का या कोई चीज का क्लोट्स वगैरह हमारे जो कोरोनरी आर्टरीज है उसके अंदर ये बीच में आ जाती है, और ये जमना शुरू हो गया, और जमने से ब्लड की सप्लाई हार्ट के अंदर जो है वो सप्लाई बंद हो जाती है। और उसके बाद जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके हार्ट में नहीं पहुंचेगा तो वो देखिए ब्लैक हो गया। ब्लैक मींस वहां से उसके मसल्स डेड हो गए, और इस तरह से उसको व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है। ये हार्ट अटैक की पोजीशन होती है। इसमें तुरंत पेशेंट को लिटाने के बाद उसे चलना ना दे, बोलने ना दे, बिल्कुल कोई हरकत ना करने दे। लिटाने के बाद पसीना बहुत आता है, दर्द होता है चेस्ट में और ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, बाजू में आ जाएगा, बैक पे जाता है, तो उसको तुरंत लेटाने के बाद कंफर्टेबल पोजीशन में रखिएगा। अगर आपके पास एस्प्रिन टेबलेट होती है, एस्प्रिन साल्ट है, तो उसको डिजोल्व करके पानी में तुरंत दे दें, और उसके बाद जल्दी से जल्दी जितना हो सके हॉस्पिटलाइज कर दें, और कुछ नहीं करना उसको। हाँ, इन केस अगर उसके आप देखते हैं कि हार्ट बीट बंद हो रही है तो सीपीआर जो मेथड अभी बताया वो आप उसे सीपीआर दे सकते हैं। ये था हार्ट अटैक के केस पे, जो कि जनरली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें व्यक्ति को प्रॉब्लम ज्यादा पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। Okay. So thank you, Mr. Sani, for a wonderful explanation. I believe that everybody had got at least I know many revelations. Many of the things we have been taking it, so casually, and we have been doing many errors, considering that we are doing good. तो ये बहुत सारे मिसनॉमर्स हैं फर्स्ट एड को लेके, जो आज मुझे लगता है बहुत लोगों के क्लियर हुए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सैनी साहब आपका। और इसका पर्पस यही है कि आप इसको आपने सीखा है इसको। वैसे तो ये फर्स्ट एड का एक दिन का प्रोग्राम होता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है और उसमें ये लोग कुछ प्रैक्टिस और डेमोन्स्ट्रेशन भी करवाते हैं, तो लेकिन जितनी भी जानकारी है, अगर आपको
मैं नहीं चाहता कि आपको मौका मिले, लेकिन जब मौका मिले तो आप इससे पीछे मत हटिए और ये इसको आप किसी की ज़िंदगी को बचाने में इसको प्रयोग कीजिए। Thank you very much, and for the centers we will reassemble at around 2:30. Thank you.
Throughout this. Facing what this for the screen. Yes. मुंह का यहाँ आता रहेगा. वो यहाँ से आप देख सकते हैं, उधर नहीं देखना. Okay. Because आपका पिक्चर जो जा रहा है वो भी कैमरे के थ्रू जा रहा है. ये तो यहाँ थोड़ी ऑडियंस ठीक है. मतलब से देखने पे कनेक्टेड है. दूर नहीं है ज़्यादा. कितने 2 बाकी आ जाएंगे. आ जाएंगे. शुरू करा दें. एक बार जो आपका स्क्रिप्ट दिखाओगे इस पे कैसे दिखेगा. प्रेजेंटेशन ये तो कर सकते हैं. कैम क्लोजर. कर देते हैं. ठीक है. आए तो ठीक है. अगला वाला दिखाना कोई छोटा तो नहीं है इससे. नहीं छोटा नहीं है. Then instead of looking here, I'll be looking at this. उसमें कुछ ठीक है. क्योंकि आपका 1 सेकंड. नेक्स्ट बोलने होगा तो नहीं मुझे बताना पड़ेगा. नहीं मुझे मैं आपको कैसे बताऊं. अब नेक्स्ट स्लाइड बोल देना ना. नेक्स्ट बोल दो. बोल दो. अगर जो बोल दो ना. बोल दो. हाँ तो ठीक है. then it's okay. अदरवाइज आप इशारा भी कर देंगे. आपको थोड़ा सा आना पड़ेगा कि कैन सी जब मैं मैंने इसी की नेक्स्ट मतलब लाइक दिस. ठीक है. तो ये आपकी सिम्टम आखिर में टाइम आप निकल तो आंसर बोलूंगा. मैं आपको इंडिकेशन निकल लंबा. सर वो नहीं आ रहा. आएगा सर. कैन यू सी स्क्रीन हाफ आ. इतना उस दिन था आप आ रहे थे स्क्रीन तो कैमरे में नहीं करने की जरूरत है. स्क्रीन शेयर करेंगे प्रेजेंटेशन स्क्रीन शेयर करने की जरूरत है. ओके. वेल दिस वाज वो जैसे एडिटिंग में देखते हैं तो ये लाइव चल रहा है. सो नॉट एन इशू. सो आई फॉर्मली आई कैन नाउ स्टार्ट. सो गुड आफ्टरनून viewers present in this small hall as well as at our different centers, and welcome back in the afternoon session. In this session we have with us Colonel H.S. Chauhan, who is a very eminent personality. He is president of Indian Mountaineering Foundation since last 3 years, which is a national apex body which was established in the year 1958 to promote the mountaineering activities in our country. North part and northeast part of our country is greatly having the mountains, and it is also close to the Himalayas. So not only simple mountains but snow-clad mountains as well. So that's a very, very tough terrain activity. Colonel Chauhan
has been awarded with, or I must say decorated with Sena Medal, Vishish Sena Medal, and is a member of Fellowship of Royal Geographic Society of London, which was an honorary given to him by the British government. He has been, you have known Limca Book of Records and other book of records. He has created one of his own record, which is not parallel till today in this world. He walked across Himalayan range, whole of the Himalayan range, starting from Arunachal Pradesh, which was his own brainchild, and going up to Karakoram Pass, which is near Ladakh, and then also entering the area of Pakistan and China border. The total distance of this is 8,000 kilometers, which you can say he has been walking, he has been trekking or mountaineering, or whatever was required to pass that distance was being done. And it took him 475 days to do that. So this means for a little more than 1 year and a quarter year, he was on the walking or expedition. This was done in 1981 and 82, and along with 4 other team members who were from Army. It is difficult to imagine doing this kind of activity, but I know it requires a man of great courage and great grit and determination, with all the abilities to cross these kind of hurdles which come throughout such a tough expedition. He is head of 3 national mountaineering institutions in our country. He did this job of heading these institutions for about 20 years, which is more than anyone else in so far in our country. And during his tenure, he has led more than 12 mountaineering expeditions in India and also internationally in Argentina. In Argentina, we have Alps range of mountains, which is again one of the tough terrain activity. He has participated in more than 30 expeditions in adventure activities like mountaineering, as I was mentioning, then skiing, water sports, paragliding, etc. And he has been instrumental in training more than 80,000 youth in different such disciplines of adventure under his own supervision. Not to talk of that the people trainer he has produced, I'm not counting that. So he has been pioneer in introducing mountaineering and adventure as vocational education subject, and this has been one of the part of the capacity building and skill development. Now the question is that you could say that what mountaineering activity and disaster management. You see that we have been talking of disaster occurrence type of disaster. Then today forenoon we had a session on that how you can attend to the people who have come across some kind of medical problem or hit by disaster or those kind of things. The essence is that whenever disaster is going to occur, it will take us by surprise. So it is not only your physical abilities, but it is your mental abilities which are going to come into instantaneous reaction at that time. And mental abilities means how stronger you are at that period of time. And you will be stronger only if you have passed through a difficult activity or a hurdle. If you are not gone through such, you will never feel confident. See, if you ask someone to run a marathon race, it's a 20 kilometer. No, for all of us, running 20 kilometer means, psychologically we will feel it's very afraid or scared, except barring few of us. But if we have done it, second time if you ask, then you are more confident that you will be able to run. First time you never knew your ability. So if you have passed through a kind of similar difficult situation, then you will always meet a difficult situation, more difficult situation when it is going to come across. Because at the back of mind, you are confident. Your mind says you can come over there. Don't be scared.
of course something bad has happened, but don't be scared. I can fight it out. So rather than not fighting it out, it's something like, you know, you go get into a jungle and some animal, not say lion, attacks you, but if you are totally taken back, then you are gone. But if you are going to show the courage and you do the counter, maybe that animal can also feel scared and go back. So with this intent, it is all the more important that that particularly youth in our country get such kind of training, so that whenever any kind of disaster take place, they are able to counter and help other kind of people. So since Mr. Chauhan is the expert, I should not be doing much talking. So I invite him to come to the dais and please share his views and long experience for the benefit. Thank you, Dr. Dugal. It's my proud privilege to be here with you all. And to be brief, we all know that India is the second most populous country in the world. But the youth, the population of India is much more bigger than any other country in the world. And we all keep talking, including right from our Prime Minister onwards, that it is the youth who will property, and for which probably we are not prepared. Why? Because we can't predict it, where it will happen, when it will happen. So in brief, that is what is a disaster. But lately, you will recollect, we had tsunami, we had few earthquakes, Gujarat, Sikkim, Uttarakhand, and last year we had Kedarnath, sometimes flash floods, so and fire accidents. So now the government has started creating awareness about it. Like it has been just mentioned, if you don't know anything about it, then we are caught off guard and we are not prepared for anything, and definitely we are not going to face it the way we could otherwise face it. So the basic thing is, and I'm sure by now you all have learned how it happens, how it can happen, how it can be prevented with all these things, the technical part. I'll only be specific today about that when it happens, before it happens, how can we be prepared for it so that we minimize the damage, the loss of life. And for that, it is important that people have to be prepared. Now, how can you be prepared? Because we can't predict all over India where it will happen, which are the areas under seismic zone. It can take place in Kangra, it can take place in Sikkim, it can take place in Arunachal, or it can, like it happened on the J&K border with Pakistan. Now, one of the things is, why not to prepare the people who are going to face it? Who's going to face it? The people who are the resident of that place, the local. You can't train people in Delhi and say something Kedarnath has happened, then you send the people. Like we saw last year, we send the army, we send the ITBP, what they can do. Just collect the dead bodies and that is all. So now if the local people, I'll put it maybe not as per this sequence, but I'll put it in a very simple language. If the local person of that area is prepared for the thing what may or may not happen, but may happen once in a while, how will he or she should react to that? Now if that basic essential awareness is created, basic little bit training is created, the loss of life and property will be minimized. And it can happen in Chandigarh, it can happen in Delhi, it can happen in the mountain, it can happen along the coastal line. Now probably it's such a huge subject, vast subject. So the major things are, when it is land-based, it is earthquake, it's landslides, it's flash floods, it's cloud burst, it's dam burst, it's a glacial lake burst, or it could be a forest fire, bush fire, or a fire in the built-up area.
And when it comes to the coastal areas, it could be like tsunami. Everywhere, someone is always associated in that area. They're associated for their livelihood, not for fun, not for adventure, because they live there and they have to earn their livelihood there. If it is along the coastal line, it is who will be the people who go into the sea? The fishermen. Then the fishermen go into the sea. So they are the people who will be ultimately facing the disaster also. Now to prepare people for this, what is required at a grassroots level? Not in the classrooms, not in a theoretical thing, but practically on the ground. Somebody got to go there on the ground, wherever you got to prepare the people, see the terrain of that place, and based on the terrain, you got to train the people. Now, you take, it's a very, as I said, vast subject. You take one example. You take the, like we had Kedarnath disaster last year. What it was, the mountain area, the river, somewhere up glacier, lake, and for communication it is the roads, it is electricity. For drinking water it is the piped water. So if something happens, if there is a flood, there is a flash flood, or it is a lake burst, or it is a cloud burst, the river will get inundated and it is difficult to cross from one end to the other end. Now, firstly, who get caught into that? Why should people get caught into that if there is awareness? If there is awareness and proper awareness, it is the local people, it is the common people who can predict it much more than a person gone from outside. From a Chandigarh, if somebody goes to Kinnaur or a Kashmir and start predicting there, it is the local people who will understand the circumstances much better than the person from outside. That is one part. Now, how to create that awareness among that person? Because he knows it, but he doesn't know that this is called some knowledge or specialization. When we are in the army, when we go to the mountain areas, snow-bound areas, the local will say first that when it is avalanche prone, when should one walk or no. Whereas army wala will start taking data and other things from somebody, because there is one particular person established for place there with a different establishment who will predict that. But we all, because we don't use our brains there. So the local person, a shepherd, will know much better than a person coming from outside where to go when, even seeing the clouds, he will know when it's going to be rain and where it's likely to the cloud burst. So he is prepared for that. But we are not spreading that knowledge amongst the other people. So that is where I feel that we got to do somewhere, that we got to be prepared for this. Now, how can you be prepared for something which is difficult and which is harmful? Willingly, none of us would like to go as a human being to do something which is difficult. Will anybody like to go? Unless there is a compulsion. If there is a compulsion, we don't really put in our efforts, because then it's a forced activity. When it's a forced activity, grassroots level. Who's going to be affected? How will he or she react? That is what they are called, the first responders. Who are the first responders? If something happens there in Chandigarh in this complex, so we are the first responders. How will you? Will we panic, jump through the window, or go somewhere where it's going to be damaged? Or we know the thing, where to stand, how to go out, and immediately, because that is in minutes, seconds and minutes. After that, how to save somebody who's already caught inside, who's not probably so much prepared for it, or who's unfortunately not ready for this. So that is equally more important. Save yourself and then immediately save others. Save the precious human lives. And that can only happen if you know that. Otherwise, what happens? It is on the, you're going on somewhere hills, roadside, there is a small landslide, few stones. All the vehicles stop there, everybody stops there, and everybody starts talking, criticizing. But the person says PW wala will come at 10 o'clock only, till then nothing happens, it is 2 hours. Nobody will go and touch the stone, even if there are 100 people there. If somebody takes small initiative, 1 will start, 2 will come, 5 will join, 10 will end, in 5 minutes it's over. I don't know whether you people have noticed it, I have noticed it a number of times. That is what is called that how
Are you mentally prepared for that? And do you take the initiative? Do you have that leadership quality in you? So that quality has to be every time, everywhere with everybody. We all possess this, but we don't use it. Now, how do we know that what we have? And when it is linked with disaster, so we'll only restrict to that. How will we know that we have the disaster-related capacity and capability, and how to react to that? So that preparedness has to, that awareness has to be created amongst the people. Who are the people? The local who are there. After that, who comes? The community, panchayat, blocks. Then after that, the tehsil, district, and the government people, the NGOs, the other people surrounding areas. So there are a large number of group of people who can then otherwise contribute. Otherwise, in the peacetime, the NGO may carry out a preparedness campaign and have big banners and big demonstrations and thing, and get big senior people and get a lot of money for that. That's got no value in my opinion. The value is, can you go right at that spot? If it is a particular community panchayat, can government reach that panchayat? Can reach that block or a tehsil? Select the people through them. Okay, these are the people who live there, who have the capacity and capability, whether it is a age group or it is a sex or it is their physical fitness, and then train them. Tell them it is training for what purpose. Get them involved. And to get them involved, that is where the adventure comes. Now, what is the preparedness if something happens? You got to react fast, you got to have the confidence, and you don't have to panic, and you have the capacity to lead people. So in adventure, I'm sure you would have heard, adventure is basically, it is for the students, it is outdoor education. Right from Ramayana, Mahabharata onwards, the students used to be sent with the nature. Because that is a much better way of learning. And all developed countries, you will see their students, weekend they are all out with the parents, and in a year they have 2, 3, 4 sessions, they go out in the wilderness, research, do whatever is their subject. So that is outdoor education. We don't have maybe everywhere at present, but now the awareness is there. So that is where you people are now involved with this, and over a period it should come. The second part, those who are already in the corporate world and those who are going to join, if they are working 14 hours, 16 hours a day, and after 3 months or 6 months the organization want to take them out for 2 days, what? Team building and leadership. Recharge their energy. 2 दिन में उनको rock climbing, rappelling कराएगा, थोड़ा बहुत fun कराएगा, शाम को fun हो जाएगा, so they come back and their output is much better. So that is again based on adventure, team building, leadership, and that's what they are taught. And lately now it is after this, everybody is talking about mountain has got what? Disaster may happen once in a while. How are you going to promote the mountain economy? How are you going to promote the remote areas economy? One of the means is adventure tourism. Adventure tourism means the people, those who have not seen that kind of area, they want to come and see it. Now, how will they go? Where they will go? They want to go, but they don't know. I live in Delhi. How the Delhi wants to go to the mountain in the summer, they don't know where to go, how to go, through whom to go. Now, we have such a huge Himalayan range. If, and tourism department, ministry is putting in efforts in that, if the people in that area, particular area, valley, are trained in that what natural beauty you have the river, or you have the forest, or you have the camping, or you have rock climbing, or you have the glacier, or you have the mountain, and they are taught. The activity is specially structured for that area, for the youth of that place, and they are made to go through that, and it is structured and certified. The person has a confidence that yes, recognition, I have a certificate by the such and such government department, and I am fit enough to be employed as an adventure guide. So that is a self-employment. His awareness has increased, and at the same time, he will get somebody conduct in that area that will help the local economy. So that will promote your tourism rather than concentrating at what is our tourism concept. Go to Shimla, Manali, Mussoorie, Darjeeling, and overcrowded and flood that area and dirty that area and come back. That's what is normally the majority of the people do. The beauty is somewhere outside, but that can only happen if we create that awareness amongst them. Now, when we are creating that awareness about adventure tourism, that is where it is inbuilt. What is preparedness for disaster? First, your reaction, as I said earlier, as a first responder. So they are taught that. Okay, when I mentioned earlier, as a something when it's being forced, nobody enjoys it. But if you tell them it is a part of adventure, it is adventure sports, it's fun, they will enjoy it. Everybody enjoys it. If you have also gone out somewhere in the nature, you will enjoy it. Majority of the people. Now for them, when they do that, they will enjoy it, and more they will become confident because they've been doing it right from childhood.
when I started my mountaineering first course when I did, then I realized, walking up and down in the mountain and with some loads I said I've been doing in my village and childhood in orchard every time. So half of it is called mountaineering. So that built my confidence. I was better than a person from plains. So automatically my involvement was bigger, my interest was better, and my commitment was better. And that is what ultimately becomes the hard work. And that is what ultimately reaches you somewhere. And once it is recognized, it gives you recognition and satisfaction. And then you get involved. And for few, it will become a passion. But let's talk about the village level. So when this training is given, at the same time, in adventure, the training is same. If it is climbing a rock, it is rock climbing. If it is going down from a stiff face, it is rappelling. And if it is crossing a river or nala, it is river crossing. Or if somebody is hurt or to take him out, it is a casualty evacuation. Now that is part of the training as a safety measure when you do the adventure. But the same thing is applicable when the disaster takes place. Now the Uttarakhand or any earthquake thing, any fire, because you got to first you got to react yourself. Second thing is, when you're out, how can you save a person who's inside? Means reach a difficult place and with the help of equipment what you have learned, if it is available, take the person out, save his life, and how to shift him to a safer place, that is casualty evacuation. It can be land based, it can be river based, it can be, except the helicopter wala land all based, so that is where, and that involvement is small little thing which will be done immediately, it will help save many lives. So that is what is preparedness for disaster. Now the adventure activities, now what we are trying to do, structure the adventure activities based on the first part I talked about, skill. So the adventure tourism is a skill which leads to giving you employment, helping the local economy, helping the tourists to come, and the precautions to be taken for safeguard is ultimately directly linked with the preparedness for the disaster. Now that is what, if we can reach somewhere, structure it in an organized way in a different areas, how much employment you will create, how many youth will get involved with that, and anyone, majority of them, I can say that with authority, that who participates in adventure activities willingly, happily, will not get involved with anything antisocial, drugs, rape, snatching, community harmony. They will be much better. Those who have spent few days together, maybe from a different community, they will never ever do anything harmful to each other. So that is what is required in my opinion, in the local area. And ultimately, they are the team of people, those who are always prepared for the disaster. If something happens, they are willing, they are volunteer, they are readily available. First part. Who else can be there? The people from the local community panchayat. So that awareness has to be created. They also are equally important people. People from the local governance who are at a local level. What is affected if something takes place? The roads, the water supply, the medical, electricity. These are 4-5 things. That may be revenue people and the health wala. First aid, you have already gone through the thing. First aid is part of the adventure. Environment awareness is part of the adventure. It's not only rock climbing, rappelling, river crossing. These are all inbuilt into that. Somebody has done a course, they are told on the first day, they're given a plastic small bag here. If you eat a chocolate, put your wrappers there, bring it back and put where's the disposal. We may not have a proper disposal system, but it is brought there. I've seen it with my own eyes with the small little kids doing it. So this is what is linked with the Clean India, which is now the new thing is started, that we must, otherwise it's a big, a dumping area, and that is what we only keep our places clean and we dump things on we think it is all sarkari. Usko kharab karo, ganda karo, jo marzi, apna theek hona chahiye. So adventure teaches us all this. Now along with the adventure, the inbuilt thing is we are always prepared for the disaster. And involve the local governance with that, involve the local NGOs with that, involve the local communities with that. That is what ultimately will be and it has to be structured, and it has to be made in a way, it has to be made interesting. Like Dr. Saab said earlier, it cannot be under compulsion. And it has to be willingly and voluntarily. And that has to start from school, colleges onwards, and to all the young people like you, wherever we are then, whenever we get a chance. And that is what probably will help our country somewhere as a young country to control the people, to put them together, to channelize their energy into the right direction, and be prepared for a disaster as and when suddenly it takes place, whether it is land-based, with the water-based, it's coastal-based, wherever it is. Because activities will be structured based on that, as I said earlier.
for that specific thing, that particular thing, and the first responders will be the local people there. And that is how probably the other part, the technical part, the structural part, that is the other side, not my subject, but we have seen. Tsunami took place in Japan also. There was hardly any death in that. There was a lot of damage to the property, and not so much because they are prepared. Their buildings are made that way. The people are so much prepared for that because it's a common thing there. So we got to reach somewhere, if not that level, we got to make a beginning, and the beginning has to be made. I was today talking to the director here of this institute. Maybe the skill development will be one of the subject here, which has a huge reach, vast reach. It's not only the educated students, the students, it's non-students also. It is applicable to everyone. And that is how this large population of youth can be kept together, their strength can be utilized for the development of the country, and the energy is channelized into the right direction. Now, next please, we can. Anyone wants to have any question on this? You or from somewhere, anything? Well, it's a vast subject, otherwise I'll keep talking. Anyone, anything. But have you understood the basic thing? What is the preparedness and how we should achieve it, get it? And adventure is the means, through adventure. Willingly, voluntarily going through the difficult things. Learn those things where the best comes out of you. It comes automatically and you take pride in that. You're not doing it as a compulsion. And when required, you will use the same thing in seconds, split seconds, and you'll be the leader. And you'll save yourself, and you'll save few more people, and you will help the society. That is what is preparedness through adventure. Otherwise, for your whole life, it's part of the outdoor education, it's part of your team building, it's part of your leadership, it is your risk-taking ability. You will always stand out. Most of you in the society, you will take timely action, reaction, initiative than the normal other people, and help the society somewhere. That is only a roadblock, it is a disaster, it is anything else, and not get into anything which is anti-social. Most of you, most of the people, most of the youth. That is, at least I can say, my opinion, since I spent some time, maybe 30 years or more than that, into it and dealing directly with the youth. Anyone wants to ask anything? If given a chance, you people will participate in something like this adventure. Difficult, dangerous. That is dangerous also. Yes. Danger has to be. If you are doing something difficult in life, it has to be linked with something where one has to be cautious and put in more efforts. And the danger is when it is with the nature. Danger is part of that. It could be a small fracture. It could be a cut. And it could be a bigger thing. But then we have to be. That is what is risk-taking ability. It's called the calculated risk. And we all take it based on our capacity and capability and the situation and based on your training. Anything else? Anyone? Now, as we are talking that now in brief for the who are involved, government people we have already discussed, and if it is to be done by the government, it has to be right from the center government. Like we are also pursuing one case with the Disaster Management Authority. We have already done with the Tourism Ministry as IMF. Now it is both are linked, the adventure and the disaster management. If that is approved by the government, somewhere it will become a scheme, and through their agencies on the ground it will be then followed. So ultimately you have to involve the local people at a local level, that is village, panchayat, and people around that, NGOs. Next. Disasters, you already gone through it. When it is land-based, it is a earthquake, landslide, flood, we have seen it, and it is cyclone, tsunami, or it is can be drought also. And again, I'll repeat this, how you are prepared for that, because you got to be prepared for that. Like I gave the example of exam. If you have read everything, you may not have read it properly, but you have an idea, you कम से कम कुछ तो लिखोगे उसमें. अगर पढ़ा ही नहीं हो, देखा ही नहीं है, तो बोलोगे disaster हो गया आज. So same is for this. You got to go through some preparedness. So when something happens, so you got to prepare for it, and you may have to go through it it is a difficult thing, but adventure is one of the means where it will make it interesting. So you got to go through it. And how can you save your life and others' life? That's the most important thing. And it happens. Nothing happens if you are not prepared for it properly. You got to have the knowledge, you got to know the resources, you got to know the people, you got to know how to organize it, and
how to involve the people, how to have the right people at the right place. So this is the organization thing, how that is structured. And then only the best will come out of the people, and then only the people will be able to help in that situation. Awareness, when we are organizing it, when we are doing, even when you are doing training in the local area, it's not only those who are training, it's the people, those who are involved to impart the training. Even if the person is doing as a cooking job, he will also see it. He will also. It is the local villagers who see it once in a while what is happening. They also will have the awareness about it. This, yes, what is going on and why it is being done. Because indirectly they also get prepared. Otherwise, because they are not even prepared. Abhi kya hota hai? You would have seen last year, Kedarnath. Anyone, there must be probably more than 1.5 lakh or more than 1 lakh people up in the mountain, Char Dham. They have gone all through some organization, some travel companies. Now, unfortunately, we don't have any inbuilt system for the rescue. They have taken the money, they have taken them. Wahan kuch ho gaya, you would have noticed on the TV, somebody is crying there, I am here in the Gangotri area, government is not doing anything. How the government will reach those 1.5 lakh people? Government cannot be everywhere. If something happens in a big city, every day happens something in a Delhi, the Delhi police wala cannot be everywhere practically. Yes, they have to be prepared, they have to know the system, they have to know the people, and they have to ensure that the wrong people or those who are anti-social people, they are always kept under surveillance. But yes, if those travel companies, if they had an inbuilt system, if they are taking 20 people in a bus, if there are 2 people with them with a minimum rescue thing, minimum rescue, that is my view on this. If we have that, like it is all in the developed country, it is there. If we had the inbuilt system, probably the damage wouldn't have been so much. If the locals were trained into that, they would have reacted first before the army came after 1 week. So that is what is the preparedness, that you got to create awareness, you got to educate people, and it has to be done timely. And after that, it is only monitoring. And monitoring can only come if you are prepared for that. If somebody knows that. The trucks went last year, if you remember, it used to be in the newspaper. ट्रक लोड चला गया लेकिन वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कुछ नहीं हो, खड़ा है 2 दिन से 4 दिन से खड़ा है, कुछ नहीं हो रहा है, बांटने का सिस्टम ही नहीं है. So that is what has to be taught to the local people. That is what the local governance has to do. They have to be prepared for that. What is the system? It's like this, something has happened automatically, people come and they fall in place. They have already created that. Who will be the head? Who will control this area? Who will control this activity? Who will go where? Who will coordinate with the people coming from outside? Whether it's army, ITBP, or it is a NGOs, or it is a rescue, or it is a some help coming. So that has to be created in it. That is what is system. So it is a very far off, but we got to make a beginning somewhere. We have already discussed this next. We may say that it is only who will be involved with it, like scouts or a NY, Nehru Yuva Kendra, or NSS or something. But I am of the opinion, why them only? Why not everybody? We all have to be those who have gone through it. If it is done in one panchayat, only 20 people may have taken part in that, the whole panchayat has to be involved with that. They also have to know that what is to be done that time, and not only those 20 people. They will lead, but others also have to participate. So it has to be a general involvement. But yes, the key position, the key people are those who are trained through this. And they are different organizations. Now you have the disaster management also, you have the community people, you have the panchayat, you have all kind of things. And you also, they have to be, somebody has to prepare that overall structure. In case something happens, what will be the whose responsibility? What level of training? Because the level of training will then differ. The first is, what I am talking is only the initial training. After that, there will be different levels of training, and the selected people who have awareness about it, who have the knowledge, who have the interest in that, and who are required by the government. So that is what the volunteers team will have to prepare at a different level, and then to become a system. All people, those who deal with the public, that is the police wala, he is a home guard, or he is a revenue person, or he is a forest, or he is a electricity wala, everybody has to be, the government has to select, identify who the right person, and they have to go through the training along with the volunteers at that time, so that there is a proper mix-up when it happens at the right time, and everybody knows his position and his role. And what is required? First, when you are prepared, first is your reaction, after that research, after that you got to rescue the people who are caught into it and evacuate them to a safer place, provide medical first aid, and after that, wherever it is, camping and a proper camping and hygiene and sanitation system. Nothing can be complete
if it is not public and people participation. It has to be ultimately through the public. That is why we insist always, whatever we are doing, it has to be done at a community level. And when it is done at a community level, as I said earlier, you may train only 10 or 20 people, but the awareness is in the whole panchayat, whole block, whole district ultimately. That is all the ultimate. Look at it after 10 years, what will be there? Nothing will happen 1 year. But if it continues, if this kind of thing is done, after 10 years, how many people will be aware about it? See that number. And then 20 years. India is now 60 or more than 60 years old, but we haven't had this system. If this system is start, see after 20, 30, 50 years, we'll be somewhere. And ultimately, it has to be, it may or may not happen there, but how to make it interesting and how to make it meaningful, how to make it useful. Give it a adventure push. Now it is adventure. It's a fun, firstly. Second, it is involved with the employment. Third is involved with the promotion of adventure tourism, community tourism, rural tourism. And that is how the migration will stop from the remote areas and coming to the cities, and young people living in some areas are doing some things which they are not supposed to do. So they are gainfully engaged in their own area. And adventure is the biggest employer in the world. In India, we can see the corporate world is so big; it's bigger than the Europe population in India. They are ready to spend money. But the point is where to go, how to go, where it will be safe. So if this kind of training is done, see again, I say next 5 years, 10 years, somewhere there will be homestay, there will be small little organization, clubs. Himalayas are too big. Same as it's possible everywhere. I'm of the opinion Northeast is equally important. Coastal area is equally important. Central India is equally important. Deserts are beautiful. People, those who have not seen for them, it is a great thing in adventure to go and visit that. So it is for everybody. And ultimately, you are prepared for the disaster also. It is 2 in 1. And in adventure, there are number of activities. Activities have to be finally selected based on the terrain of that place. If you're doing something on the desert based, it has to be desert based. If it's a mountain snowbound area, it is snowbound area. If it is a northeast, it is a cultural or other things, it has to be based on that. So the activity has to be ultimately based on the, if it is for the local people, of the terrain which is around in that area. Next. Next. Yeah, some of the photographs, of adventure, because why adventure is fun. Now you see the person going over the river, safe, anchored, and then somebody to pull him also, but it is to get over that fear. I can also do this. There are two things involved in this. For the trained person to fix this rope or a wire across, so that what happened in Uttarakhand, smaller places, probably somebody who was prepared, they could have also done that. What was ultimately? People were stuck on one side of the river. So this is one. The second part is who's doing it as a part of adventure, fun, tourist. It's a fun, it's a great lifetime experience that I have done this. We'll keep showing the photograph whole life that I have done this. So whether it's rock climbing or it's rappelling or it's mountain next. So anything in adventure, whether it's paragliding or it's rafting or everything has got fun. And that thing ultimately helps you when the disaster takes place. So you're trained for that. And especially when it is a local person, he is the first responder. He is the one who's going to react. And he is the one who's going to save his life and others' life, minimize the damage, and evacuate people to the safer place. Next. All terrain based, as I told you, there is available something in all kind of things. The easiest one onwards to the moderate and difficult and very difficult one. It depends on the level then where one reaches. Anyone wants to ask anything on this? Because the methodology and other things, I'll not get into it. But this is what is basically that, yes, youth has to be introduced to has to be prepared for the adventure, and the local youth, and the means is through adventure. And it has got multi-skill development onwards, environment and other issues also which is taken care of. Anyone else? Anything?
Anything related with the disaster or adventure or anything, whatever you want to ask. Well, anything you want to ask about adventure, if not disaster? Anyone? So do you give practical training also? Of course, everything what I am talking is based on the practical training. It is not theoretical. When In I colleges, no, does in that work? colleges, see, it is not a regular activity. We are trying that, like the HRD has accepted mountaineering and tourism sector as one of the vocational subject. Now, in that, we have prepared the syllabus for that. It is 7 levels, 9th onwards, 9, 10, 11, 12, and 3 years degree. So the students from rural areas who have the potential there for adventure can participate in that along with education. Their academic part is reduced and their practical part is increased. So they will also be able to get a BA degree equivalent to the other BA, and they are then they can do after that MBA or IAS or whatever they want. It is up to them. So that is government has already introduced. There are 13, 14 such subjects. One of the thing is, and we have made the syllabus for that is already it has taken 1 year completed. Like first year, the ninth, they have divided their 1,000 hours in a year. 700 hours for the academics and 300 hours for the practical. And when it reaches the 7th level, it is 700 hours for the practical and 300 hours only for the academics. So that the people, otherwise there is a large number of dropouts in the rural areas, but they can't cope up with education. So, but this is for other colleges, but in our college, what can we do? See, your colleges, those are professional colleges, something you got to probably the activities which can be introduced for you. There are two types. One is a general awareness. It can be 1 day, 2 day, 3 days, or it can be outdoor camp for 6 days, 7 days, or 10 days. That is related with that depends on your management. That depends on the government policy. I can only say that we are more than happy to. That's what we are suggesting. It should be there. Or if they introduce a full-fledged skill development course kind of thing, which is linked with the disaster, it could be what we have structured so far is 14 days course, where the person is taught everything, the basic things of adventure related and disaster linked, the complete, the way what I've been talking. So that probably maybe one date is introduced. We are trying our effort that it should be. We are chasing the government. I'm chasing your ministry, that is HRD. I have not yet got a chance to meet the new minister. I am of the opinion that adventure should be made as an extracurricular activity, recognized. Like the parents otherwise will not send their children into that. अगर उसको कहीं मेरिट ग्रेड में कुछ मेरिट मिलता है या एडमिशन के लिए कुछ मिलता है फायदा होता है देन ओनली द पेरेंट्स विल सेंड हाँ लाइक स्पोर्ट्स वाला है स्पोर्ट्स के कोटे में चला जाएगा सो सेम हैज टू बी फॉर द एडवेंचर बिकॉज इफ इट इज फॉर एडवेंचर larger number of people will participate. Why the developed countries people, everybody, every student, every school, college, they have a adventure as their or outdoor education as their. Sir, military training is compulsory for them in colleges in other countries. In some countries. I mean, see, the military training in some countries, smaller countries, because India has a huge population. We can't have that what Israel is doing. But we can pick up the good things from there, if not for the all, but at least for a small part of the population, we can do that. If it is well-meaning and it has got a good benefits out of it. So adventure, I am of the opinion that yes, it should be introduced in schools at least as an extracurricular activity. We are chasing it. Will government accept it or no? I can't say anything about it. So I have to share my experience. I have done BSc also. In my BSc I have NCC, and at that time we are born for paragliding. At that time we are expecting that from every college, about 10 colleges are there. From every college, 5 students are selected for paragliding. And at the same time when paragliding has to be done, only they show us the demo only. Only 2 students have done the paragliding. We are just watching them, and that is all. You have not got a chance to do the practice. Yes, sir. See, paragliding is when it comes to paragliding and rafting, you cannot independently handle that. You have to. It is called tandem. As a tandem, the instructor is there. He will take off, and you are also along with it, and you go into that they should have done minimum. Because for that, like in Manali, there are more than 150 or 200 pilots. Every tourist go through that and pay the money and go through that. Sir, that is not in a mountaineering area, but only a large ground is there. Only ground there. We are talking about parasailing. So they said that is pulled by the vehicle. Yes, sir.
It's Yes, pulled sir, by, by a jeep. it's pulled by the jeep. Yes, sir. And then you take off, and it's called parasailing. So you are always attached to the rope. Yes, So it doesn't go anywhere. But I don't know. I can't comment on that. It is strange that if you are part of that and they are not, you're not made to do that, because that experience is given. It's a 1 day, half a day's training. It's given to everybody because it's safe and it is done wherever it is conducted. I'm saying that even LCC also we are lectures are given to us, but when it comes to practical purpose, there is no practical done there also. I won't comment on others' organization or other things, but yes, we do have one thing in India, that we do more of academic talking and classroom things. And when it comes to the practical, it is a little difficult. It is not done because, firstly, we are not prepared for that kind of thing. Second, we don't have that kind of equipment available for that. And the most important thing is, the practical thing can only be done by the person who has experienced it and good at it, who has acquired it through the books and knowledge and cut and paste. He or she will not be able to do it. So that is where we lack. And maybe why I'm trying to push all these things, chase these things, because it's by coincidence I'm into it. I spent more than 30 years into it, and for me it is a passion. And I know that how, in my opinion, how useful it is for the youth, and why should not be a scheme in the government in different ministries where youth should be given a chance based on their requirement, whether it is a rural youth or it is a student youth, they participate in some kind of adventure activities which ultimately will be beneficial for them. And I'm trying to pursue that we will structure it on the ground, not only the academics part, structure it on the ground. I've done it for, I should not say I've done it, we've done it for the northeastern region through the Youth Affairs Ministry and the donor, there's a Ministry of Donor. So it was very successful. 1,600 youth were trained in that. The aim was, rather than sending the youth from northeastern region to the rest of the country, and where we don't really entertain them, look at them like this from where they have come and due to their features or other things. We have every day some kissa in Delhi. Send the youth from rest of India to northeast, so that they will see themselves that how good they are, what is their culture, and how beautiful is the area. And those who have gone there, they will throughout their life will not travel or look at anybody from that area, will have a lot of respect for the thing. That is what was the policy. It is maybe still it will continue. I'm going to again push it, but that is a one-time thing. It has to become a scheme, so that in India, I'm of the opinion, I don't know whether I should say on that, if we can have the scams of lakhs of crores, why can't it be 100 crores spent on these kind of things where in adventure, 1,000 youth, the training is only, the cost is what we are trying to sell the thing through somebody else, not we don't do any IMF, but we can only facilitate. 1,000 youth training for 14 days doesn't cost more than 1.5 crore, which is peanuts, nothing. Whereas, because there's no infrastructure required, it's all tents and rock and river and things, there's nothing required. You don't require a buildings like this, you don't require the furniture like this. It's all outdoor. And every money which is spent on that, 80% goes into the local economy. उनको खाना पीना खिलाना, उनके लिए ट्रांसपोर्ट लगेगा, उनके लिए इंस्ट्रक्टर लगेगा, उनके लिए कुक लगेगा, उनके लिए गाइड लगेगा, जो कुछ भी लगेगा वो लोकल एरिया की उस इकोनॉमी में जाता है. When I was in Himachal WHMI, summer में we had a Kendriya Vidyalaya students with us. Somebody liked the idea and he sent in thousands, the commissioner. I used to have in summer, for 2 months, more than 40 camps going on at one time. 2002, 3, 4 की बात, तब तो मोबाइल भी नहीं थे ना. 40 camps all over in a small state. We had 1,600 students used to be every day with us. Somebody is going, somebody is coming, somebody is doing training. And for 2 months this was going on. We had employed more than 500 people. So this is a small example, but it can be done pan-India. And you can imagine what effect it will be. They remember anybody. If you have done some adventure, you will remember it throughout your life. You will talk about it throughout your life. And you will act and react when it is required better than other person. Majority of the people. Let me do a little bit more elaboration. Please. The question she asked is, do specifically at different levels, because in presentation also you mentioned that you have school level, college level, community level, district. So do you have something in your mind that this kind of training should be done from the school level, this kind of training for college level, and this kind of training? Now the issue is again because by this time there has been no policy, and most of people have not done it. So those who are not in school, those who are not even in colleges, maybe they are in post-graduation college, like she is saying. So does it make a difference that it should be done specifically at some level, or any kind of
entry level could be Okay, admitted. I will put it this And way. if it is so, then what kind of training do you have in mind should be suggesting, keeping in view their age and I'll put it this way, that adventure has different levels. Like you said, first is when we talk about the category, it is the students, the school students and college students. When it comes to the school student, I'll put it this way, there are two ways. One is within the school campus, around school campus, which can be one-day training. That is just an awareness to the small child how to walk on a rope, or how to walk on a Burma bridge, or how to slither down from a small 10 feet thing. That gives them introduction and a bit of confidence, but safe. Or how to come down from a steep wall with the help of the rope and other thing. So that is 1 or 2 days thing, or maybe camping only in the school campus for the night. So they will learn about what is a camping, how to sleep in the tent, what is a sleeping bag kind of thing. So that is for the awareness level. Second one comes when it comes to senior students, 8, 9, 10th, 11, 12th. It could be a 7 days or 10 days adventure camp in the nearby, wherever they are located, where they are taken out. And they are given the practical training, little bit, how to do the rock climbing, how to do river crossing, how to do casualty evacuation at their level, small little things, but to create that awareness and interest in them, and link it with cleanliness, link it with climate change, link it with local culture, link it with the local customs there, link it with it's an overall as with the person, the boy or girl, when they come back, they are little more knowledgeable. So this has got more even of social and national aspect. Yes. Because people get mixed up with Yes, that is what is required, because you got to have the people from a different area region together at one place. So that is not the, but at the same time they know it where this training will be useful for them. They are made to do that. Next, third comes when it comes to the skill level. The skill is structured like it is 14 days to start with. It is open, it can be amended, it can be changed. Now 14 days, we have felt that in 14 days a person, a rural boy or a girl, it will give them a skill as an adventure guide, will be able to provide the employment. So that thing also can be done for the postgraduate person. If person wants to do that, because that will add to the knowledge of that person when he or she will face any interview. See, when they are going to talk about academics, everybody is prepared for that and everybody talks about it. But if the student is smart, will put in a hint there and divert the attention of that the group of people there to say, okay, when I was doing this, but I did this also. Okay, what is this? And then start from there. Because it is practically done, she has to be confident to say that, and they cannot catch on anything that, okay, whether it's wrong, because it's not a assessed thing, okay, वो बिल्कुल कितने % marks आए थे या कैसा किया था. So that is the one benefit, and that gives a lot of confidence to the person. After that, in day-to-day life, this training will be always useful to the person. So for someone, it is a value addition. For the local youth, rural youth, it is a skill development. For the students, it is outdoor education. And for corporate people, we know they call it team building and leadership and recharging the energy. So that is how the groups can be divided. And the activities have to be structured accordingly for them. And activities are two categories. One is for the local youth in their own area, which is linked with their direct disaster and things like that. The other one is overall awareness. They shift from their place where they're living or studying, go to the new area. But the essence of that will always stay with them wherever they are. If earthquake takes place in Chandigarh, the person who has learnt it something in Manali or Mussoorie will be able to react here better than the person who hasn't gone through it. That's my opinion. So next, what kind of training programs are organized, structured program, are presently being organized? See, and we would also like to know that what is the kind of enthusiasm or participation coming from the schools? They may be on the payment basis or whatever. It may be even for the fun. Okay, but, two things you have asked me. First thing is how it is structured. When it is adventure, is basically semi-military kind of a training. The first part is that, okay, you come from a different areas or from wherever, even from one school, you are put together, you are divided into groups. Overnight, you got to adjust with each other. That's the first thing, that you got to start working with each other, that you can call it team building, or you can call it adaptability, you can call it patience, you can call it tolerating each other. Whether you like somebody's face or not, but you got to be together. That's one. Second one is when you conduct the activities that morning, okay, 6 o'clock is a PT. It's not like school. It's not like आपका college को कोई आ रहा है कोई जा रहा है जब मर्जी है. If it is 6 o'clock, the person has to be there at 6 o'clock.
Because that is the semi-military type, because we have inherited it from somewhere. So the discipline part comes there. And after that, what is activity is the physical fitness. Where there they have to run or walk or do something. So it is an individual activity. Everybody wants to establish that I am good at it. Because ये जिसको एक बार आ गया ना कि whosoever is good at it, he would like to boast about it and do it better than others, put in the best. Second one, for the person who is not able to do it, who thinks that I can never do it, and he is also forced, coaxed, pushed, abused, and because it's a group activity also, and made to reach there. So the person has so much of confidence after that in life कि मैं भी ये कर सकता हूँ. So it is a दोनों का हो गया. That is one. Yeah. And then the way it depends के rock climbing, rappelling, river crossing, camping, trekking, all these things depend on the location. That is what is the training is. It is a standard training, structured equipment is there, instructors are there, safety norms are taken care. And not only that, in the afternoon, then it is a academics, discussion, any subject. Okay, there are different groups, like you have on the TV. It's not only the and now and something here they can conduct. It is done at the fireplace also in the evening. So people are into two groups. It's not only Antakshari, but it is some look the subject also of the present day. Talk about it. Somebody is for the against. So that is how it is. And if there is a local, the person will talk about his or her own culture, system, requirement. So that is what is the overall thing. They have to clean their area every day. They have to ensure that they don't throw anything. They have to stand in a line for their meals. They have to be followed at a right time. They have to carry the equipment, whosoever it is, whatever it is. Everybody is equal there. Nobody is rich or poor. Nobody is weak or strong. So that is how ultimately it becomes a homogeneous team. And depending on what is the task, according to the training is conducted. So you had asked two things. One was how the training is conducted. What was the second one? You had asked two things now. Duration of that training program. Duration. Now duration, as I said earlier, duration will depend. Anything which is falls into the government system. Like for the tourism, we have done now the foundation course of the assistant adventure guide. We call it now mountain scouts, adventure scouts. So that is 14 days. Because it has to be standardized all over India so that every institute is conducting on the same lines. Otherwise, Himachal will do something else, Uttarakhand will do something else. No. If government has to do it, it has to be like you have the syllabus. For engineering college, it has to be same everywhere. It has to be some same level. Same is when it is skill related thing, because there will be a next course after that. They have to do the basic course. Then they can be employed as a guide. There will be next course where he will be as an instructor. There will be a next course. We have, as on today, we have 65 people up in the mountain in Himachal Glacier, Bada Shikri. It is on the other side of Rohtang. 50 participants, young boys and girls like them, but they have done all basic, advanced, and method of instruction courses in mountaineering, and may have done few expeditions also. But they are all below 30 years, majority of them. And so it is not an expedition, but it is a course for them. There are 16 instructors. The instructors are from all the mountaineering institutes of India, including Army, ITBP, and civil ones. We have instructor from Nepal. We have an instructor from two from Iran. We have instructor from paramilitary forces also. So there are 16 of them. So there are 8 people in each group, 2 instructors with them. So we have structured activities for them. They are being prepared as a team leader. What is their role outside when they go and work with any organization or start their own as a team leader, along with mountaineering and mountain-related skills, mountain rescue, ice climbing, other things. So they are being little bit taught into communication skills, their personality development, their expedition organizing capability. So, and finally they will be given a certificate on 3rd. Because from here I'll be, in 2 days I'll be again moving to Manali. And we have one instructor from international body that is called UIA, International Mountaineering and Climbing Association. See, they are the one, those who certify the category of the instructor. Any instructor, if they have their accreditation of Acha, his value will increase if the person is otherwise getting 1,000 rupees per day. If it has got the value of the stamp of UIA, he'll get 2,000 per day. Because anybody coming from, especially from outside, you have a trained instructor who has an international level standard. So that is all. So we are trying to introduce this. That is how the person is there. But next year onwards, we standardize these courses of a different level, and then start here for train the trainers along the Himalayan range, so that they'll be much more useful tomorrow in the system. So
as I said, what you have asked me, it depends on the requirement. So what I was talking is that 14 days or 7 days or 10 days, this is initial thing. After that, it will have to be updated based on the requirement. The question was that what is actually the response of schools or educational institutions Yes, to that was another inculcate, part. their Now people? the response is like this. It depends on the individual. As you know, in India, the organization are based on individuals, not as an organization that there is a system. Now, as I told you, there was one commissioner in Kendriya Vidyalaya. Initially, he said, no, I will not send any students as a picnic. But when he realized, there was one officer with him, one Kansa who had come from the service selection board. He said that in the service, because his aim was related with employment, the commissioner, he was very well meaning. So when he told him that anybody who has done a basic or advanced course in the morning, they get credit points when they go for the army commission. He called us again and he said, I want to send students, and ultimately he sent more than 1 lakh students in 2 or 3 years. Now, schools. Every school would like to do it, but school doesn't want to take a risk. If something happens somewhere, the name of the school will go down. So they say risk is yours. So they want to do it, but they don't want to take the risk. Because for that 0.1% possibility, they are not, or there is a nexus. Just like the one incident which took place recently near Vyas. They have come for sightseeing. They come for sightseeing, but the college was in trouble. College was in trouble. Yes, and so were the even the authorities of the. Because that's a knee-jerk reaction. क्या अभी तक तुमने कुछ नहीं किया, अब बच्चे बह गए, उसके बाद आज सारी एक्टिविटी बंद कर दो. Because we more react. We have a system. We have a country where we react. We don't act. We only react when something has already happened. So we have instituted a inquiry. We are happy with that. They've been paid 1 lakh rupees per head. That is happy with that. अब उसका हो रहा, उसके बाद कुछ नहीं होता. So what we are talking is act. This preparedness is all part of the act. So we got to somewhere act. Now school में दूसरा होता है, which is I will not generalize, but there is an nexus also. The person who is responsible for that is some physical teacher or a physical training teacher or something. Either he has a tie-up with somebody who's doing this कि मुझे तो इतने पैसे देना, मैं इतने बच्चे भेजूंगा, or if the principal wants to send it to some other place, he says risk मेरा नहीं होगा, आपका होगा, and nobody wants to take the risk. That's happening. Because in our system, unfortunately, no one who's holding a position is normally willing and capable of taking a risk. That is everywhere, in every subject. That is a fact. I've also seen the whole. I've seen civil, I've seen army, I've seen all kind of things. There are very few who have the confidence in himself and then say, okay, ye karna hai, and then they do it. So that's unfortunate. Nowadays, undertaking was signed by parents of students only. It's taken if they are a minor by the parents, and if they are major by the person. No, sir, but if we are going for SSB also, our parents sign the undertaking that if anything happens to us, then they will not help anybody. That is a normal system that has to be, because everybody plays safe. Minors only. No, it is for the major also, but it is safe because tomorrow you can go to the court and say that क्योंकि मेरे बच्चे को ये हो गया. So, sir, undertakings का parents भी दे देते हैं. दे देते हैं, उससे कोई I mean undertaking दे देना नहीं देना is not a big deal. It is okay. That's a safeguard, that is okay. Because ultimately whether it is 0.1% risk is everywhere. You cross the road, it is there also. We had one late concern. We spent his whole life. He was much senior to me, the whole life in the mountain. Finally in Delhi, one day he got bumped off. He was crossing the road. A car वाले ने उसको hit कर दिया. Went into coma and never came out of that. So I mean, risk is everywhere. It depends where we get caught in that. And in the mountain, yes, we take risk and we take calculated risk. If your assessment is wrong, maybe we get into trouble. And very experienced people, you would have seen, those who do adventure activities, famous hai कि he is a kayaker or a rafting or a airwala paraglider or something or a mountain. They normally will get caught somewhere because they take extra risk. They take more than that. So it can happen. But the point is, for that you can't stop doing the activity. So that's now what we come to an understanding that taking part in these kind of activities definitely makes a person better prepared to meet the disaster. But it will give a good response whenever the disaster may strike. Now, with all this kind of knowledge and information, what do you think that the government policy should be or can be to induce this kind of activities, at least starting from the government level institutions?
When it is a government, like I had mentioned that they have already introduced it as a vocational education, that is one part. The second part I was mentioning that it should be introduced as a vocational subject in the school and colleges. There will be more participation. That's a kind of subject. I say that everyone, because it helps everyone. So should everyone be given a training? No, not you can't do everyone. Like it's sports. Sports, you have the facilities here. Only those who are willing, interested, and they will take part in the different sports. Same should be the adventure also. Now- Anybody who's interested Yeah. should take part in that, at least some, because you can't do for such a huge country that it is for everybody. So No. can we have that, say, for every school population, say 5% or 10% of people should be, I will put it this way, that it is, see, one is at a government level, and to have a policy and introduce that it is a compulsory. It's not compulsory, But but the the second government part provides is- facilities. Government, I will put it this way, that why not the institution at a level like it is your institution, or it is a school somewhere, it is a college somewhere, it is there. It's something like that you may or may not do it. The government is not stopping you to do that. The administration should take the decision and introduce it at whatever the level they think appropriate, at their own level, and there is their own small little risk, and they can have a system, create a system, how the student should go, where it should be going, what safety precaution to be taken. But it should start from a small organization onwards, and another one is at the government level, but to make it a policy or something, it is a very tedious thing, but we should try for that also. So both ends, I'll put it this way, नीचे से भी और ऊपर से भी, दोनों तरफ होना चाहिए. It's not only that कि अगर बोला गया तो तभी करो, अगर गवर्नमेंट ने बोला है तो तभी करो, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी है तो तभी करो. Why not to take the decision at your level, at the means the level who's directly in charge of the people? No, the question is because many people would like to do. For example, I know many of the audience here they would like to do. But getting this being done, getting the training or organization involves a kind of expenditure. So the question comes whether individual should bear that expenditure, or it should be at the cost of the government, or should be on the shared basis. Because in any case, it's not that it's the individual also getting benefited themselves, and the country whole is getting benefited. So we also have the responsibility. So we should not simply think that the government should fund only, then we can do No. that. So from that perspective, I just wanted to It know was your opinion. when this adventure was introduced as like the first HMI, Himalayan Mountain Institute came up in 1954, second one in 61 in Manali, and then 65. At that time, it was all on the basis of to promote adventure amongst the youth, encourage them to go to the mountain, and fee was very subsidized, very nominal. Now, over a period, what had happened? The institute has remained into only single digit, they're not even in double digit. But the number of people, those who want to go to the mountain, they are large. They have increased manifold. Now, they have also started increasing their fee, because in the government there is always now budget crunch is there. Now, to say that, it will not be correct for me to say that they all can be, where can you get subsidized things? It is only through the government institutes. Yes. And that is one, but their capacity is limited. The capacity is limited. Capacity They are is providing free bid scheme also they are running, so they can probably also think of financing partly to that. Maybe let's get connected to some center, and I think because it has generated a good debate, so if some of the center has a question, which is this one, yes, yeah, it's a question. कौन सा center है? Shivaji. Shivaji Institute. Someone got some question? आप चाय पीते पीते पूछ सकते हैं, not an issue. We have very eminent expert with us, so please कोई question आप पूछना चाहते हैं कि participation कुछ भी. क्वेश्चन लेने चलेंगे क्या? हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग सर. जस्ट अ मिनट. ऑडियो हाँ जी, आप थोड़ा लाउडली थोड़ा बोलेंगे. ऑडियो यस. सर गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. Sir, myself Sunil from Siva Engineering College, Himachal Pradesh, Bilaspur. हाँ जी.
Now, sir, my question is, in case of disaster preparedness, what is actually behind this, sir, concept? जो इसका जो concept है, sir, हम कहाँ use करेंगे practically, sir? You have asked a very basic question कि disaster preparedness का concept आप कहाँ use करेंगे? जी, sir. तो मुझे ये क्वेश्चन का आंसर तो चौहान साहब नहीं देंगे, इसका आंसर मैं ही देता हूँ कि जब हमने इतने दिन बात किया तो हम यही बात कर रहे थे कि जब डिजास्टर आएगी तो बता के नहीं आएगी, नंबर 1। जी सर। और अभी तक हमने ये भी सारा शो किया कि पर्टिकुलरली आप नॉर्थ इंडिया में है तो नॉर्थ इंडिया में वी आर प्रोन टू डिफरेंट टाइप ऑफ डिजास्टर्स विच इंक्लूड इवन अर्थक्वेक्स भी हैं, फ्लड्स में भी हैं, ड्राउट में भी है, लैंडस्लाइड में भी हैं। तो और साइकोलॉजिकली ये हमें हमेशा ही लगता है कि डिजास्टर जो है मुझे नहीं हिट करेगी, किसी और को ही करेगी। तो अगर आप परमात्मा करे कि आपको कभी ना करे, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कभी आ गई तो अगर हम प्रिपेयर्ड नहीं है तो हम जान और माल दोनों को नहीं बचा पाएंगे। जैसे फर्स्ट एड के सेशन में आपने सुबह अगर अटेंड किया हो तो आपको पता चला कि अगर ये ऐसे एक्सीडेंट विक्टिम्स है, ब्लीडिंग होता है, ये होता है, तो अब आपको पता है। सो यू विल बी एबल टू रिड्यूस द डैमेज टू द लाइफ, यू कैन सेव द लाइफ। सो सिमिलरली ये जो ट्रेनिंग है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की, ये खाली उसी के ऑफ कोर्स इट इज फॉर काउंटर एक्टिंग द डिजास्टर इफेक्ट्स, मिटिगेटिंग द डिजास्टर इफेक्ट्स, बट साइमल्टेनियसली जैसे अभी चौहान साहब ने बताया, इट हैज अदर एडवांटेजेस। आप सोशल मिक्सअप होते हैं विद अदर काइंड ऑफ पीपल, you will appreciate the culture of other people as well. So from that perspective, अब जैसे अब हम ये कहें 1971 के बाद से तो अभी लड़ाई नहीं हुई, तो इतनी फौज के ऊपर 25% पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं हमारी पूरी इकोनॉमी का? जी सर। 1971 के बाद कितने साल हो गए? 42 ईयर्स। तो 42 में अगर वार नहीं हुई तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को नहीं अपना रखेंगे। तो आपको तैयार तो रहना पड़ेगा, नहीं तो दुश्मन हमला करके आपको लूट लेगा। तो ये डिजास्टर भी आपका दुश्मन है, अगर ये आ गया तो आपको बिल्कुल लूट लेगा, खत्म कर देगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वन क्वेश्चन इज मोर सर। हेलो। हाँ जी बोलिए। थोड़ा जी मैं अशोक शर्मा बोल रहा हूँ सर, शिवा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बिलासपुर सर, हिमाचल। बोलिए। सर ऐसा था, आपने मॉर्निंग सेशन में हमें बताया था सर रिगार्डिंग जो है रेस्क्यू और दूसरा जो इंसिडेंट जो होते हैं, जैसे सर एक्सीडेंट वगैरह के बारे में बताया था सर। जी। तो इसमें एक ये था सर, सपोज जो है अगर बस में आग लग जाती है, एक पैसेंजर उसकी चपेट में आ जाता है सर, और उसको जो है इमीडिएट हमें फर्स्ट एड के रूप में क्या करना चाहिए सर? उसको या तो ब्लैंकेट कंबल उड़ाना चाहिए सर, या पानी डालना चाहिए उसके ऊपर सर? अब ये क्वेश्चन तो आपने इस सेशन में पूछा है जो पिछले सेशन में पूछना चाहिए था। जो सेशन में था सर क्वेश्चन जो है उसमें नहीं वो हुआ था सर लास्ट में, क्योंकि वो एक्सपर्ट अभी चले गए और एक एक्सपर्ट और थे जिनका कल सेशन था, ही वाज चीफ फायर ऑफिसर। तो जो मेरी नॉलेज है, उन्होंने जहां तक मैंने भी सीखा कल, तो उन्होंने तीन चीजें बताई थी कोई भी मिटिगेशन ऑफ फायर में। फर्स्ट था कि आप उसकी सप्लाई को बंद कर दें। तो जो इस केस में आप जब ब्लैंकेट उसको उड़ाते हैं, मींस तो यू आर क्लोजिंग डाउन द सप्लाई ऑफ द एयर। नाउ दैट इज द बेस्ट थिंग, ऑक्सीजन को आप बंद कर देंगे। राइट सर। ब्लैंकेट नहीं है, मोटा कपड़ा है, किसी भी तरीके से उसको एनक्लोज करना है। बट थ्रोइंग जो वाटर है, थ्रोइंग वाटर इज गुड फॉर ऑब्जेक्ट्स बट नॉट डायरेक्टली गुड फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि जो सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है बॉडी का, बिकॉज अगर आप बर्निंग पे है, फायर में है बॉडी, तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई है। अब प्रिंसिपली इट इज राइट कि आप वाटर डालेंगे, इवेपोरेशन होगा, बट वो जो इमीडिएट रिडक्शन इन टेम्परेचर होता है, दैट कैन कॉज डैमेज टू द स्किन which will be very difficult to be recovered and it remains as a scar permanently. So first option is better. सर इसमें ये अगर उसके ऊपर पानी डालते हैं सर, it will be the wrong answer. हेलो।
To my knowledge, yes, it will create actually the, ये आपको उसको कम तो कर देगा, लेकिन स्किन के ऊपर बाद में स्कार्स रह जाएंगे, उसको हीलिंग फफोले पड़ जाते हैं. अगर आप उसको एनक्लोज करके करेंगे तो that is a better option. But sir, as per doctor's recommendation, water is essential, sir. They always advise in place of blanket, we have to keep there as well as water in place of blanket. Oh, so if you knew the answer, But we want आपने कहा कि as per doctor advice के पानी डालना अच्छा है. So if you knew the answer, so what the purpose of asking question is to test my knowledge. to take your advice, sir. But we have to do. You know, I have told what I knew the best. So, but since I said that the experts are gone, maybe I can find out from him and give you the answer tomorrow morning. Okay? Right, sir. Thanks a lot, sir. Okay. हाँ जी, कोई और क्वेश्चन पूछिए, कोई और सेंटर से. हाँ, ये कौन सा है? VSGOI. उन्नाव? Yes, sir. पूछो. VSGOI. Any query from VSGOI? Hello? हाँ जी, बोलिए. Hello? Sir, please. Yes. Hello? Yes, we can hear. बोलिए. Sir, please tell me applications of GPS and GIS. हाँ जी. Sir, GPS and GIS का use कहाँ कर सकते हैं? We can use it in topographical map or not? Can you repeat? We can use. Sir, tell me about the application of GPS and GIS. We can use it in topographical map or not? GIS वाला सेशन भी मॉर्निंग में हो गया. तो उसकी application, I believe he told very clearly what are the applications in prediction of disasters. Particularly, I was present, so I could see that they are very helpful. Cyclonic activities में बहुत ज़्यादा उनका है usefulness. तो earthquake में भी उन्होंने quote one case जहाँ पे वो सेंटर जो नए डेवलप हो रहे हैं, तो from that GIS application we have been able to find out where the faults or faults are occurring, which are inducing, which are responsible to induction of the earthquake. So the areas are demarcated, so से वो danger area सब हमारे knowledge में आ गया है. Anything else? Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. और कोई है कॉलेज? Jaipur, yes. Please ask question which is relating to this session. हाँ जी, कोई क्वेश्चन है जयपुर से? So अपने सिस्टम शुरू की थी वैसे. Okay, so and we can close this. We can just concluding words. Once again, I thank everybody for giving me this opportunity to be here, and I hope a little this brief interaction will be useful somewhere. And I wish you people all the best, and I hope as and when you get some opportunity, some chance to participate with something which is related with the nature, related with the disaster preparedness, and related with the outdoor activities, you will take part in that. And when need arises, I'm sure you will be much more confident, and you will be as one of the local leader there and muster strength around you, save yourself and save few lives, and which will be useful for the system and society. Once again, thank you very much. Thanks a lot. Thank you. So thank you, Mr. Chauhan, so much
let me now tell you that Mr. Chauhan, he was in a remote area when I rang him up, and he has traveled all the way from the remote area of Roharu, and he stayed yesterday night in Shimla, and today morning that he came over here to deliver this very motivating session. And I am sure that now, as a follow-up, some of you are going to probably ask for that, how this kind of activity can be done. I know that, but that's what actually we are looking for. That if people get this motivation, that how they can be part of it. This kind of program, they are meant to generate this awareness. So let me share with you that was the session which has generated the maximum participation from our remote centers. And so thank you for being here. And now we close the session for today. And tomorrow we have an expert coming from National Institute of Disaster Management. So we'll have 2 sessions, morning sessions from him. Thank you, and see you tomorrow at 10 o'clock. Thank you.